And they did it fairly convincingly. Oh, Zlatan. 13-7 on Pearl to close things out with a 13-5 on Breeze. They got bullied around by FPX a bit on that fracture map in between, but XSET showed that they are the real deal. And that guy right there on your screen, well, the previous one, BCJ was absolutely crazy in that series. And as well, I mean, these are the reactions as well off of the क्या हाल है and now it is दोस्तों? night and day, and this team has never looked better. Partly because you've got players like BCJ having लेट हो गई बोलते आ गए guys. Sorry, first game बंद नहीं कर पाया. थोड़ा बाहर था. We've seen glimpses of in the past, but yeah, I mean, I'm so excited to see this XSET squad, and I'm wondering how they're going to be doing as well now that we finally got the crowd in the arena as well, because that's like going to be a first for these. Yeah, it's going to be another layer, another first for a lot of these inexperienced guys on that team. Totally. Hello, well, Vishnu. moving on to FNATIC, who also had a rough start to Champions. हाँ फर्स्ट में भी but सही था they मुझे have seen करना था पर significant मैं improvements. थोड़ा In बाहर fact, था मुझे yesterday लेट they हो गया looked, तो extremely, मैं or the other सेकंड day they मैप looked के हाफ extremely टाइम calm, के बाद poised, आया था तो मैं confident, बोला अभी ready to सेकंड गेम go. से ही करता हूँ. Yeah, I mean, I think as far as like the teams that made it in the top 8, FNATIC have had the roughest road of it. They dropped their first series to 100 Thieves, you know, a series that everyone kind of anticipated they'd be able to win. And then they played a really close series versus Furia. They were 2 rounds away from being eliminated and not being able to make it into playoffs, but they managed to persevere with that last map of Haven. Yeah. And then in the rematch, you can see the rebound. That कल रात को आए नहीं versus फिर 100 Thieves was just peak FNATIC. But yeah, this देखो एक is the सच्चाई barely बोलता हूँ scraping कभी by कभी a ऐसा win लगता है ना FNATIC we're seeing. थोड़ा This is the confident Fnatic. chill These are the करके खेल guys लूँ. who, you know, we've been और waiting for and waiting for and waiting Valorant for. का अभी भी शायद लैग हो रहा है स्ट्रीम पे तो वापस चेक करना पड़ेगा चेक करवाना पड़ेगा. I mean, it's again, Smack talk. night and day with the reactions towards the end as well. They're throwing out the smack talk about justice for Eccles and all the rest of it. These guys are confident and they are primed and ready to play in front of this audience. Yes. And we can't be talking about them without talking about 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐴. We're here. We're in front of a Turkish crowd, the first and only player that's going to be playing really in front of a home crowd here. So major home country buff that we're talking about. And he spoke with Nerd Street's Sage Datuin, and he said, "We have a lot of Turkish fans because I am the only Turkish player at Champions. They're going to be hyped because they're going to be screaming FNATIC because I am FNATIC. My family is here and they're going to boost me." What a strong quote. I am FNATIC. I'm thinking of like the emperor. I know, right? Yeah, FNATIC. I am FNATIC. But he's not wrong. He's been playing lights out, man. This guy, and he's such a young player as well. And I did have my concerns heading into Copenhagen that he wouldn't be able to play up to his online numbers. But honestly, all those fears have just been completely dashed to the side because he is playing on top form right now, and it's only going to get better. He said it himself in the quote. You know, if he's putting up 300 ACS, well, he's going to be putting up 400 in front of the crowd. And look at the rankings of where he is in the rest of the tournament for Champions 2022. This is against every other player in this event. Yes. I mean, it's just absurd. Yeah, it's crazy. I mean, a top 4 for his ACS overall. And mind you, they have played a lot more maps than some of the other teams here because they did have 2-2-1 victories, or a 2-1 loss rather, and then a 2-1 victory into a 2-0. So they played a hell of a lot of rounds, and he's still able to put up some significant numbers. Currently number 1 in average damage per round. 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐴 needs to be feared. And he's also not always playing dive. We see him play the Neon, we see him play the Raze, but he also shifts over to things like the Killjoy, which is a bit more passive of a role. But he's so flexible, but he is still finding value when he's not on those dive agents. I mean, it's an absolute standout player across the board. I mean, the crowd's cheering. And it's probably going to be for 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐴 across the board. All of this. I cannot stress enough how amazing it's going to be feeling, I think, to finally get to see this crowd fully biased. I know that's a weird thing to say. No, absolutely. But it's been kind of a bit back and forth. They were cheering on Liquid earlier, but I want to know how loud it's going to get with 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐴 finally playing down there. Deafening. All right, well, it's time to check out the maps. Let's head over to Map Select and see what we're going to be playing on. We're starting things off here, and I'm wondering which direction either of these teams will want to go with it, because there's a lot of good bans. I think if you're XSET going up against FNATIC, you need every advantage you're going to get with the kind of form that these guys are playing on, and taking away Bind is a very good beginning for them, because it's a map that FNATIC have looked extremely good at in the past. I think it's one of their confidence still to this day. Pretty smart moves by XSET as well. It puts the ball in the court of FNATIC as well to see if they want to remove Pearl, which they don't. All right, well, Haven is going to be taken away here by FNATIC. I mean, some maps where you can see, you know, the really explosive entries coming through from the likes of Zekin as well as from the likes of 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐴. Okay. Okay,
XSET are throwing down the gauntlet. This makes so much sense. FNATIC, you played this, you picked this versus 100 Thieves the first time out, and you got clocked in the mouth. We are looking to do the same thing to you that we did to FPX. They select Pearl. But do we get the Turkish buff? We got the 𝘼𝐽𝐿𝐻𝐿 is here with the Turkish crowd on the Turkish map. Is that a buff here in this scenario? I feel like even just watching the last games, you know, the crowd was huge in TL, almost coming back there. I mean, maybe that's going to be enough. I can expect that after that initial loss, FNATIC, they definitely had a lot of confidence on the map when they picked it. Map to fracture. It would be more foolish. But you can expect that they will have gone back and tried to rectify the mistakes and shore up the weaknesses that they showed during that first series. They also had now tape on XSET to watch and study how they like to approach Pearl. So maybe FNATIC can be the team to take down an NA squad on Pearl for the first time. And their follow-up pick, though, Fracture, makes perfect sense. This is just yet another home ground here for FNATIC. Yeah, I really like the Fracture pick as well. And I think it sets it up quite nicely. If FNATIC end up shoring up the weaknesses that they've already seen showcased, I think, when they played Pearl in the past. Heading into Fracture as well for map number 2. It's a map that they have got a lot of good looks at, I think, as well. They have great ideas with post-plant lineups and how they want to play those post-plant setups. It's a comfortable map for them overall. I mean, they've been playing it pretty much longer than everybody else. They were the team who was super willing to run it at Champs last year when everybody else was trying to avoid it. So they should feel rather comfortable over on that map. We'll have to just kind of wait and see how they look on it. How XSET's going to look as well, because you think about that series versus FPX. XSET, they looked weak. 4-13 was the scoreline when they lost that map to FPX. So they're going to have to as well have a hell of a lot of improvements if they want to win. And then Ascent's our decider as well. So FNATIC had the option there of bringing it to either Breeze or Ascent, I believe, because they had the final ban in this. So they had the final say, and they chose not to bring it to Breeze after showcasing their Neon comp the other day. I think maybe they just want to keep that as a little bit of a pocket pick. But Ascent, listen, I got no issues with this whatsoever. I think the clash, if it goes to map 3 between XSET and FNATIC on Ascent, will be an absolute highlight banger of the entire tournament. I fully agree. I mean, we just finished a great series on Ascent. Why not go ahead and finish another one? It'll just be the new staging ground for NA versus EU. It must finish on Ascent. Well, with the map picks locked in, we're going to be taking a quick break. But when we return, starting on Pearl, map number 1, XSET and FNATIC will be taking the stage. You're not going to want to miss it. We'll see you in just a second. अगर अभी सोच ही दिया है तो मंगा लेते हैं, क्या बोलते हैं? Red Bull gives you wings. Papa ji, मुझे join optic with this TL. I know. I am sorry guys. बूस्टर को ट्वीट किया, लास्ट टाइम किया ना, अभी हर बार थोड़ी ऐसा अजीब लगता है. आज तो 44K पूरे कर दो, चलो भाई की एक ही मुराद, 44K पूरे करो. प्यार देखता हूँ मैं आज कितना है. Hello 𝐻𝐿𝐻𝐿, hello bro. अभी मेरे को लग रहा है FNATIC जीत जाएगी. Obviously guys, FNATIC बोलते भाई FNATIC की जर्सी खरीद सकते हैं क्या? FNATIC merch. देखें भाई. भाई इंडिया तक कैसे आएगी? Welcome back to Valorant Champions Istanbul. We are ready for our second भाई match सोल्ड of the स्टोर कब से day. FNATIC It का is मर्ज बेचने XSET लगा? and FNATIC. Here we go.
BCJ. Enzo. अल्फायर के लिए देखना क्या चिल्लाने वाली पब्लिक. Second. Alpha Air. Dab. Brewster. पोस्टर भाई. Cryo. Mystic. Psycho. Mini. Let's go Fano. All right, nothing less than what we expected. This crowd is absolutely fired up for FNATIC, specifically, of course, for 𝘼𝐽𝐽𝐿. I mean, listen to that chant just for him. The first time playing in front of a crowd here in Istanbul, and they are going absolutely crazy over this guy. Just starting it off early with the chants as well. That is just a bone-rattling kind of stuff. And I mean, the XSET guys, they don't even have the luxury of having their noise-cancelling headphones on if they hear it. They just have to sit here, get the team talk over with, and they have to just take in the energy right now, which is firmly on the side of the FNATIC players. I can imagine it's easy for them to walk out on stage, you know, and hear the roars on one side and then pretty much utter silence when they're taking the ramp. But definitely the home team buff is going to 𝘼𝐽𝐽𝐿 FNATIC, so we'll see if they can make this Turkish crowd proud और today. वो भी क्यों ना. I mean, they're certainly going to be trying to do what Team Liquid could not. Granted, I think there's a hell of a lot more motivation behind the chance this time around. But, you know, for XSET, got Optic right there. They were able to shut down this energy. They were able to make the crowd a little bit quieter and also maybe even turn some people to their side. But this is going to be a huge test for this XSET squad, I think, because they've never come across like a kind of crowd against them in this kind of fashion before. Sure. It's definitely a first for them, and they do have inexperienced players on this roster. How are they going to be able to do in this matchup against, you know, probably one of the hardest matchups that they will ever face in their careers, at least definitely over the course of 2022, I think, on the other side of things, because this FNATIC squad as well, they are firing on all cylinders. If they are able to carry forwards the form that they had the other day, you're looking at a very, very scary squad. Absolutely. All right, let's get into our prime game agent select. What are we picking here? Honestly, I'd be a little bit shocked if we just change things up too much. FNATIC, I think they're going to basically say that probably think the way that they approached the map of Pearl the first time out, they just didn't execute on their style. Yeah. So, yeah, looks like that is going to be the case here as we take a look, and 𝘼𝐽𝐽𝐿 is going to be bringing out the Neon once again. He has been pounding on this pick. He has been frying on the Neon. He has been the absolute spearhead for this team, and FNATIC were not scared to really take space off of it as well and make sure that they could trade him out whenever they could catch up to it. But there's no changes in the composition. packet loss का जुगाड़ बताओ. And so far, North Internet America change कर लो has या तो had, VPN ले लो. statistically speaking, the better read on this map when they've been playing it. I think they've won every single time that it's come up in the matches in the series so far. And so FNATIC, that does give them a bit of an edge that they've got the tape to work off. They can learn what they did incorrectly last time around. But it's still going to be a bit of an uphill battle, I think. जल्दी चालू करो रे. Just the only difference really between the two compositions is going to be depth running this KO compared to Mystic on the Sky. So you still have the flashes coming through. A little bit less info gathering since you don't have that audio confirmation from the guiding light to let you know that you've actually blinded Like somebody. नहीं हो रहा क्या? You've got some more देखो tools 525 देख रहे बोल रहा 300 के ऊपर लाइक नहीं होंगे. सही बोला मैंने. अपना लाइक का रेशो आधा ही चलता है क्योंकि पब्लिक प्यार नहीं करती है ना. So honestly, I like both compositions. I think they both can be piloted well. It just comes down to who executes it.
It's a similar approach from both teams as well with the Neon Comms, but I'm expecting an absolute brawl. Absolutely. Well, we're all set for the second playoff match of the day. Starting it off here on map 1 on Pearl. आज करेंगे ना 44 के हेल भाई, बस ये सब झूठे वादे किसमें मत दो मुझे, बहुत दिल दुखता है. Thank you so much, Chrissy. History being made before our very eyes. The first time we have a player in their hometown playing in front of a crowd. I mean, you guys heard it. Ball, it was electric. It was so sick. I mean, 𝘼𝐽𝐿𝐴 chants right out the gate. And yeah, I know it feels like we're talking a lot about FNATIC right now. It feels like we're talking a lot about 𝘼𝐽𝐿𝐴 right now, but that really is it. I know they're going up against XSET. It's our second of 2 EMEA versus NA matches right here, and we are just getting started. Please. Man, that is a beautiful sound. We're going to be kicking this bad boy off on Pearl. Again, heavy favorites are FNATIC against North American representatives that honestly a lot of people still continue to doubt. Given the fact that they've gotten this far, there's still so much lack of confidence shrouding this team. आज 4 बजे तक स्ट्रीम करूँ क्या? XSET 4-5 showed that they definitely can play with the top dogs in EMEA. They beat FPX to get here. They did. It was all really heavily off the backs of Cryo and Zekin. You already got Cryo in an aggressive spot, but the Prowler's going to give them away. Great patience from FNATIC so far. Yeah. Just to clear him out. But the follow-up here, they've got 3 players to receive this hit. It's going to be the same type of thing that FNATIC was trying to do in their opening game on Pearl. Yeah, the same wall goes up. He's going to try to get backside, and Zekin decapitates him to start off the round. How much more can he find? Boaster on the trade. Zekin on the swing, trying to find. No, 𝘼𝐽𝐿𝐴 manages to clean him up. The spike gets planted. As Cryo dances around, waiting for reinforcements, waiting for help. It's numbers advantage in favor of FNATIC. Mystic, who is an absolute demon, on the flash, finds way too many targets to deal with. 𝘼𝐽𝐿𝐴 not able to land the shot either. Time ticking. Has to back up. Goes through a 1v1. Cryo. And Cryo's going to win it out. What a shot from Cryo to close that out. But that round went topsy-turvy. Yes, I mean, right into the back of sight, you had both of the dive players, Zekin and 𝘼𝐽𝐿𝐴, not getting too much. Obviously, 𝘼𝐽𝐿𝐴 falling to Zekin. He got clothesline. He didn't just fall, he hit the deck. And it's important to see XSET start off and being able to shut that down, because that is the play that they're going to be using to get into this B site over and over. Again, we mentioned the dynamic duo of Cryo and Zekin, both young guns on the side of XSET. And it's mainly been Cryo, yes, but for this XSET ship to go well, to navigate safe waters, they have to be at the top of the leaderboard. And he is going to be alone over here against the eco of FNATIC. Same cross smoke, it's recalled this time. Cryo swings out and he's rewarded with a shot onto 𝘼𝐿𝐴, still holding on to that Marshall well in safe range of his rendezvous, and he gets a no-scope on Boaster and then gets away. High ground too, almost able to peek over top at 𝘼𝐽𝐿𝐴. Oh, but the Buns betrayed him. 𝘼𝐿𝐴 creeping his way forward. I don't think Cryo knows he's lost that much space. He's gone that far up. And really good of Aaron here to be refreshing these stars for Cryo to play with and escape if he needs to. Also look, Zekin's all the way up. Very close to flanking inside of bar. And you see Mystic waiting for it on the bottom of your minimap. Spike hasn't really made its way out very far at all. I mean, they've took full control of the A side. And I mean, Def is far up. You mentioned Zekin was far up. That crossfire is going to be brutal, but it may not matter. Yeah, Def cleans it up just in the nick of time. चलेगा. Not without Zekin falling. XSET up 2-0. FNATIC is weak. निकालो इसको. Super control. कौन है ये? On the anti-eco. कौन है ये? The openings. 5 for him so far. FNATIC with the same approach twice in a row as well. You saw them vary quite a lot actually in their game against 100 Thieves. But a lot of time it was focused on these full site executes. I would definitely like to see them go for a lot more splits and control based off of the default that they do run almost exclusively. Well, it seems like they're going to try things out mid. Again, a Prowler and give 𝘼𝐿𝐴 some space. भैया FNATIC के फैन हो हाँ bro. जी कब खेलेगी? जैसे मुझे मालूम पड़ेगा मैं आपको बता दूँ. Looks like they want to swing. Oh, and XSET just getting everything they want against FNATIC right now. Remember, this is a bonus too. Yeah.
3 Spectres on the board and a Ghost for BCJ even. Already taking down 2 rifles. 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐒! Another sick angle for him. And they've got full advantage now. I mean, that Marshal's been so fruitful for him already. Definitely not the start FNATIC we're looking for on this map in this series. And you already see XSET coming out with the same sort of fire that they came up against with FPX on this map. Not scared to play these EMEA teams on the map. And the EMEA has struggled on Pearl so far. FNATIC included. They have a win on it. I don't know if they do. No, I don't think so. It's been tough trading over on Pearl, as you were just mentioning, and this round doesn't seem to be an exception. Mystic and Boaster are the only 2 that remain with not a lot of time to work with. I think best case scenario here, what, you keep rifles, maybe get the spike down if you're FNATIC. Yeah, Mystic's not even going for it now. Yeah, they're just keeping rifles. Yeah. Interesting development. I mean, that early switch up where they're just trading utility in mid went so favorably for XSET. It looked like Alpha was very sheepish and they didn't have an escape strategy. Yeah, Boaster's got to be careful. There really was just commit. There was no escape strategy. But with money on the mind, FNATIC keep those 2 rifles, bring them into the next round. Chalo FNATIC, let's go. And it makes you wonder, have they ever even run up against knife kar do mere ko Bhavin bhai. Nahi bhai. By XSET, obviously. Jisko support karna hai karo bhai. Yeah. Seeing the replay, the Prowler coming out, second sliding too. Short, just super solid idea on the bonus. And that's 3-0 right now. 3-0 full steam ahead, but again, we have to mention FNATIC managing to keep those 2 weapons from the previous round gives them a little bit more to fight with here than they would otherwise. And that could be the difference maker in this round ball. 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐒 once again spotted by the Prowler, still playing in the rendezvous, gets away. It's actually interesting, FNATIC has nothing to really clear him out, even though they know he's there. So he could take a lot more time on that angle if he wants to. Yeah, but a Prowler to the face and 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐒 swinging around, I mean, could overwhelm him, but you're right, utility-wise, there's not much there. Speaking of utility and trying to get away, Turkey eats the Prowler. They're peeking on both sides right now, really trying to find a pick, but XSET's just not giving it to them. The setup of Def and Aaron on the safe side is enough to deter them. Just that smoke popping up. And obviously the spread that they still have, they don't want to necessarily overcommit to anything. भाई 50 सेकंड हो गया अब तक कुछ नहीं हुआ है. Against 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐒. सिर्फ डिफॉल्ट और इन्फो लिया गया है बस. हम ऐसा खेलने अगर सोचे तो तब तक मिड पुश होके खत्म है. 35 seconds though. They still have this wall. The fast lane for 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐿𝐒, so they can still do that dive play. XSET are going to have to play retake here, for sure. Which it seems like they're comfortable with. They're playing so far off, but you're right, all of FNATIC burning midnight oil here in this round. And yeah, they're going to get back sight. That was the one difference, is 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐿𝐒 had not been able to get back sight, but this time he has, and he's swinging around. 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐒 weak, 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐿𝐒 on the prowl, on the hunt, and it's actually Def who falls first, and of course the crowd erupts, and then silences as soon as Alpha falls. Numbers once again in favor of XSET. Zekin with the ult, 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐒 too. Right now, I think you got to be waiting for this fast lane to come up, maybe a smoke to come back up for Aaron. It's not planted for them. No. Oh no! He's just going to hold it the entire way. It's just a full stick. What a blunder for FNATIC. You already actually saw Mystic falling all the way back, so they knew the situation was happening. But Alpha overcommitting there. We saw that a lot against the 100 Thieves. Yes, he gets the first kill, and yes, the crowd goes crazy for that first kill. स्ट्रीम फीड क्यों नहीं दिख रही है फिर चैनल खोल के देखा तो ultimately अच्छा XSET is now up 4-0. नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्या लोगों को? Oh, I thought he was going to get left in 4K. Fist bumps, guys. चलो चलो FNATIC कमबैक करो फन्नू. Back up on the guns for FNATIC. And it's a lot more presence. Look, this is the same type of thing, but much slower that they were trying to do on that anti-bonus for them. And no resistance from XSET. Remember, they had 3 in art last time FNATIC tried hitting this. 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐒 wants to not show that it's him right there, but ultimately has to fall all the way back. He had a big opportunity to find some kills. Here comes the split. Def gets a kill onto Alpha. And I want to say he was flashed. Flashed again. Damage taken. But he ultimately falls.
Cryo holding the angle with the tour de force. About to get challenged, he does, and Mystic falls. Now the knife falls, swing back out as Cryo gets a second. The ult causing so many problems on the FNATIC right now. Boaster and Enzo once again left in tatters. The entry strategy right now for FNATIC is falling completely flat. They're just slamming their heads into a brick wall. Nice, Ray Booster. Important to keep these guns up. You saw how they actually had a chance last round. Because of those, yeah. Because they saved the rounds, or the guns in the bonus. Oh, you're absolutely right. 30 seconds. They have the chance here to actually get the spike down. It's only a 2v2. Yeah, Boaster's just so weak. And Enzo has historically been very good for FNATIC, but has had a relatively quiet tournament thus far. But he is the healthy one. He is the one that can dance with the remaining members of XSET and perhaps live to tell the tale. Second with the ult, the dash right into his lap. And again, he was the healthy one. Can Boaster do this? Oh, he spotted one player. Other one just on the other side. Cryo still there. Hasn't taken a lick of damage now. You've got the Cosmic Divide. Surely he heard him tap it, right? Surely he heard him tap it. Cryo on the swing plays it masterfully. भाई अल्ट क्यों किया बोस्टर ने? 5-0 start for XSET. And the 1v1s are just falling for them. Over and over now. Cryo 11-0. And this all started. Chat miss. Thank you for the 40 Admiral. This all started because your opinion on topic. Thank you for the 40 Admiral twice. And FNATIC काफी had no irritating response to it. No way to actually get in the sight. With the Spectre. Cryo won that out with the Spectre. So well played. Boaster had no choice but to face, to challenge, and see if the bluff was a real one or kind of what was going on. Timeout. Very well played. लगता है बोस्टर रिसीव्ड योर एनर्जी। मैं तो बोस्टर को आज एनर्जी भेजी नहीं पर दिल से दी। तो तुम जो ये डबल मीनिंग वाली बातें कर रहे हो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्यार बेशर्मो तुम लोगों का प्यार pull him aside, 𝘼𝐼𝐽𝐿, and talk to him a little bit before the game started, outside of the regular huddle that they were doing. And that's really important, because you could easily get in your head. It's not the greatest start for him. And when you add up the amount of pressure that he's been under leading into this match, it surely hinders him. The weight of a country on the shoulders of a young kid who's currently donning a 1-in-5 stat line. And yeah, it's tough when your job is as Neon is to go, right? Like बुरा लगा पोपा जी. Exactly. It's a heavy weight to bear. Either way, he's got a classic here. He's got his ultimate to work with. And XSET with full momentum. And one of the things I liked about the last time they hit this side was they were able to use the Trailblazer to get 𝘼𝐼𝐽𝐿 all the way into the back of sight rather than just dashing in. But they've already used it now. Well, they had to try to clear Cryo out, and he still hasn't moved. And that was because XSET did a great job actually getting a smoke up there. Gonna try to swing off this. You gotta be careful. 𝘼𝐽𝐿 has the tour de force. Head-to-head. Cryo holding one angle, 𝘼𝐽𝐿 holding the other. Bait. This fight means so much. That might... And they're so patient there from Def. Not to swing off of that, to try to help. And look, he's set up already for this dive. He's got the nade ready. FNATIC have to throw something else at him right now. It's the overdrive for 𝘼𝐼𝐽𝐿. The nade, and 𝘼𝐼𝐽𝐿 dashes right into it, and he nade gets में a भी kill. जाके मारेंगे, sir. Upgrades a weapon too. Now with the Vandal in tow, Zekken actually drops Boaster. Spike's still not planted. Oh, and Zekken tried making the play as well. Not able to find any space to work with. Prowler now. Nice, 𝘼𝐽𝐿. He's still healthy in the safe confines of backside. Now some smoke to work with. Cryo still holding the XSET patient as they all over their approach. How do they find space? How do they move forward? You move forward right into Alpha.
Aaron left in this 1v3 on the tap, the challenge, the dare to swing, and FNATIC nice. A strong round and a response finally from FNATIC. Even though things were going great for XSET in the early round. Look at this dive from 𝘼𝘽𝐿𝐼𝐴. He just goes right through the nade that Def prepared for him. And it's almost irrelevant. So the crowd getting behind FNATIC right now, certainly giving them energy. That's also like a perfectly good indicator of what we were talking about, where 𝘼𝘽𝐿𝐼𝐴's job is just to go. It doesn't matter if there's a nade at your feet. Your job is to go in and get a kill, and he delivers for FNATIC in that round. And XSET just waited to set up Cryo here on this angle. It's going to be the head-to-head again. He's gone further up than he has before. Trailblazer out. He's going to swing with it. Skinny lands a shot through the smoke. Cryo with the win over 𝘼𝘽𝐿𝐼𝐴. He is certainly stepping up. FNATIC has to find an answer for this guy immediately. The thing is, Paul, I think every team that goes up against XSET knows that. That's not a surprise. You have to deal with Cryo, but when you know what's coming and you still get hit in the mouth, what do? Alpha holding the op. The spike still all the way back. Right by FNATIC's spawn. And at this point here, FNATIC have some money, but not a lot. Yeah, they've been ripped apart. Yeah. And 𝘼𝘽𝐿𝐼𝐴 has already picked up the op, so that's an indication. 40 seconds left. Cryo might peek into that. That might open up the round. Feeling a little froggy, perhaps. Cryo in the crouch. It's like watching a game of chicken, you know? Who's going to peek first? 30 Where seconds they don't left. know they're there. Yeah. Which really just kind of removes the chicken element from the game. Yeah, that's terrifying. कोई peek ही नहीं करेगा. Black. नहीं करना चाहिए यार. We'll see how much longer they stay. Come on, they have to fight. Come on, man. Do it for the people. Do it for the crowd. Cryo's going to swing after time ends. Watch. 2-0 तो नहीं है भाई. FNATIC जीतेगी ये game, बता रहा हूँ मैं. Seconds left in the round. Again, the spike was never picked up. Third map कौन सा Ascent है ना? Nothing. Wow. This is. ये map शायद XSET जीत जाएगी, पर Fracture और Ascent I think FNATIC जीत lose the जाएगी. advantage immediately. They get slapped back immediately. Need a drop. And they have to decide early to save. That's what, 3 rounds now? Yeah, I think so. It's ridiculous. 2 guns, they should be able to get some in this. Definitely have the firepower still to compete. Not getting fully reset, but a lot of light armor bought. Paul, Cryo's 13-1. Yeah. Like I said, they have to find a solution to him. And XSET's doing a great job moving him around the map. Look, he's going to peek Arc this time. Do you find a solution for Cryo, or do you just try to mitigate the damage? What a good haunt there. They just cleared out all of middle. And they already started rotating preemptively towards A with the non-information. And that was actually the right read, even though they don't really have much over towards B. I think they're realizing FNATIC is going to have to just stop doing what they're doing up at the top of B lane. I wonder if they fully commit to a flank or just check mid and then rotate back. B तो छोड़ ही दिया इन लोगों ने. It seems like they want to creep forward. Wow, they're relying fully on that trademark over at B. With no information. The call from Def here is marvelous. 1 point away from having his ult online. Aaron and BCJ joining suit. As the spike still over by A. Oster's just joined out. क्या हाल है मिशेल जो? Again, he's always in the right नहीं spots. जीतेगा आज मैंने पनौती लगाई है. क्यों किया ऐसा मानस? He's moving away with the time क्या as it बिगाड़ा is, था मेरी knowing फन्नू they ने have to तुम्हारा? commit soon. Here the stars down. बहुत deadly लग रहा है ये hit. He has consistently delivered. Can Cryo do it again? Here the knife fall through. Cryo holds, the angle holds. The challenge. And 𝘼𝘽𝐿𝐼𝐴 falls. There's no entry. There's just no entry. They're still stuck behind the main choke point here at A. There's no entry. How do you go when your go button is gone? Oh, the knife exploded. Second, tempted, wanting to swing, but trusts his teammates to hold the line at least for now. ये भी करना It's पड़ेगा. another round. Yeah. The same situation. FNATIC out of time. And out of players. I mean, wow. XSET are destroying them. इतने alt commit के पर कोई घुसा ही नहीं तो फिर उन लोगों को पता ही the था. read from Def, so good. They made a call to stack B almost instantly at the beginning of this round. And then Cryo as well to hold his nerve and stay there while the execute was happening over through that choke point to take the 2v1.
इसको देखो क्या हंस रहा है रे बेशरम I mean, he's got to be thinking this is way too easy right now. Hey, he might be one of 6 people smiling in this venue right now. For as much as the crowd erupted when FNATIC came out, right now, other than the sounds of the game and the commentators, you could hear a pin drop. As FNATIC just feel flat. Right back to the same old. I mean, they're even running out of ideas here. And Post is leading the charge. Ooh. A different idea. Zekin tried getting something done there. Gets tagged up pretty heavily. Up back in the hands. No, he goes actually to the lower HP player. Oh, excuse me. Yeah, you're right. Cryo gives it up. What sleight of hand. Juke me out. Dirk a second longer and he would have had that angle. Jeff using the ult. Once again, the go button is neutered, but this time Cryo not able to find anything. Alpha, knob shot buzzing right by his head. Still patient. You see how meticulously they try to move forward as they deal with the incessant crash and whine. Nice. And every bit of utility. And FNATIC find an opening. Fun. Finally, a clean round here from FNATIC. Doesn't go down to the wire. Feeling sad, Bhavin bhai. अभी भी time है XSET को support करना चालू कर दो. यही करते हो तुम The लोग. light armor strat still being सब invested नहीं. here. आधे लौंडे. The fact that they're ये getting team these जीत रही है weapons इसको round support after करो. round, they still have staying power. भाई I know XSET start is से destroying DRX them और on the FNATIC को scoreline right support now. कर रहा हूँ. अभी भी करूँगा. हारे Every जीते single फर्क one of नहीं these पड़ता. rounds, XSET has to not let up off the gas. अच्छा फन्नू is irritating. Oddly ठीक है तो enough, बंद करते it हैं. almost feels like FNATIC have to let off the gas. टिकू ठीक है Right? Like टिकू. think about this round in relation to all the other ones. It was 𝐼𝐽𝐿𝐴 go. 𝐼𝐽𝐿𝐴 go fast. Yeah. This time it was a bit more cautious, and yes, they were trying to deal with Def's ult, but it was a bit more metered, and perhaps so instead he does win the race for this composition. Yeah. Because the truth is, go fast. एक्चुअली अच्छा खेल रहे हैं बहुत सेटअप्स चेंज कर रहे हैं बार-बार. Two on the board now. अनप्रेडिक्टेबल रख रहे हैं. I did इधर think भी there was उन्होंने an सेटअप element चेंज there, करने like का that. ट्राई किया पर डॉग नहीं तोड़ा तो ये लेफ्ट क्लियर कर दिया तो You know, स्पैम कर Bogdan's दिया. law that occurred, a bunch of different things where Cryo's peak रीड अच्छी थी ये बार भी. Vandal instead. FNATIC ने मार They दिया gave स्टैक up को. their main advantage, right? Yeah. And Zekin was very weak. Yeah. They're going to push back up that B lane. Same idea here from Boaster, calling this B push once again. This might be a little different from XSET though. Look at Zekin. He's far up with Cryo, and they want to challenge aggressively. They want to deny the space. And this time the duel goes in favor of 𝐼𝐽𝐿𝐴. It really has been Cryo leading the charge instead of Zekin, and that hasn't been the case in the group stage. Zekin was the guy who was leading the charge, actually had the highest kills per round in this tournament so far. And 𝐼𝐽𝐿𝐴 is actually doing good against him. The battle of the two 17-year-olds going well for the Turk. What a shot from Dev. I mean, fully blind. And now the Nightfall that they have to navigate. Once again, looking for any semblance of sunshine in an otherwise brutal half. Stars खत्म है ना Like एरिन every के. time they push these sites, it's a cacophony of utility. And this time, their information goes silent once again. Careful here. See the pings through XSET still healthy here. They still have Cryo with the operator. Hasn't taken a lick of damage yet. And that's normally, yeah, that's normally the cue. It's seldom a bluff! And XSET read it well. Down B. 30 seconds left. XSET, or excuse me, Enzo with the spike out of reach. Not able to find anything. भाई वो हॉन्ट ही नहीं तोड़ पा रहे. हर बार वो वॉल बनाता है और उसको हॉन्ट करके मार There's the देते हैं. follow-up utility there for 𝐼𝐽𝐿𝐴, right? Because so often he's going in ultimately dry. Yes, he's going through his fast lane, but there's no flash for him. There's no gravity wall to pull Cryo off of that angle. Exactly. It's just not all the way thought out, and wow. We're at an 8-2 scoreline. And FNATIC is using Thank you their for the second 40.58 timeout. away. Yeah, yes. Only 2 in regulation. Stacks, choose one. And it's already gone. You've got to calm the nerves here. पर नहीं तो आर्टिस्ट बहुत मारता है भाई. यही भी अच्छा है. सारे स्टैक्स भी अच्छे. सारे प्लेयर्स भी अच्छे. But man, they look good on it. While as we've been saying, this is Why no fake on B? FNATIC को मालूम नहीं था कोई फ्लैंक पे आया है कि नहीं. The North American और लोग ने representatives एक are राउंड मिड using पुश their किया था utility तो to पीछे गया भी नहीं था. stifle इन्होंने all लर्क what नहीं FNATIC छोड़ want to रहे do. FNATIC. And man, it's just ये kept them बोस्टर लास्ट टाइम पनिश हो रहा था लर्क पे तो ये बार शायद उन्होंने गेम प्लान चेंज करके 5 मैन हिट करना चालू किया. 16-3 performance out of Cryo so far. We're not even at halftime.
Love to the Turkish teams, the Turkish orgs out here, obviously. Thank goodness we have Alpha here at least for them to support. जो भी नया आया हाइक और सब्सक्राइब कर दो लेट्स गो 1000 लाइक्स के ऊपर करो फटाफट देखते फर्स्ट हाफ तक 1000 लाइक होते हैं क्या क्रायो मिस कब करेगा क्रायो बहुत अच्छा खेल रहा है ग्रुप स्टेज के कंपैरिजन में अभी बहुत अच्छा खेल रहा है गाइस किधर जा रहा है ये फ्लैश अच्छा मिड पिक He's not able to find anything on these attack sides. This was a really cool idea off the flash from Mystic to try to get out here some space to challenge Dart with Durka, but again, nothing there. And now Cryo can reassess on the angle. Dude, again, the read from Def. Look, they're stacked mostly over towards A, just playing full retake, but they don't even have the trademark this time. ECJ was so good when we saw him play last. Against FPX. Yeah. A monster he was. And he's in a position to deliver for XSET yet again. This time the gravity well used, and Durka has to give the space up. And Zekin actually falls. Alfir is going to get traded back out. It's a 4v4 here. Hey, Charo idhar just now making its way into Art. You see XSET rotating through spawn. This taunt not going to be too impactful here with the smoke going down. And Def's knife there just yanked the rotations back from XSET towards A. That's exactly where FNATIC are headed. Yeah, they found some space to work with. They've worked their way forward. And they're going to manage to get the spike down, the Prowler, to try to find a little bit of something. But nothing doing yet. No ultimates on side of XSET either. Got a good setup here. Mystic still has his flash. It's a double swing here with Enzo. Oh, Aaron finds gorgeous timing. Yeah, Enzo trades him out, but Durka's done. Def now starting to work his way forward. Finds one onto Mystic. As Enzo still huddled back. Got to save time here for Boaster on the Art flank. Are they expecting him? Yeah, they are. It's Cryo with the op. You mentioned the flank, and that finds nothing either. XSET can do no wrong right now. Enzo के सामने से आके उसको मार दिया रे बेचारे. Again. To just fully stack. They've downloaded the playbook from FNATIC, and it doesn't look very long. Now Def is having himself a masterclass performance right now. And that's, again, one of those performances you may not see it on the stats, right? That doesn't reflect there, but the way he is reading FNATIC right now is gorgeous. First one XSET choice, yeah, bro. क्या XSET ये गेम जीत रही है? Cryo's his too. Last round of the half. Boaster with his Cosmic Divide. Usually you want to end up towards B because it just gives you so much value in getting that spike down and playing for the post plant. But XSET's been comfortable with that. Again, Trailblazer used to get them in the position. Cryo almost used that angle. He almost hit the shot too. To cut off Durka's hair. Because he's balling, I get it. No, I didn't mean to do that. You're using his ult, using his wall, using his relay bolts, and everything else at his disposal. And the truth is, yeah, they've gotten into long, but only halfway there. You are divided. Oh, a fake thrown from Boaster. And do they bite? They don't have information on the other side of this wall, so Zekin is getting there. And it's just Zekin. Cryo falls. Durka finding space. He's the push down alley, and Def is here alone. And does Def dare challenge? Does Def dare peek? Alpha this time finding a different approach. Let's go. The shots were a little messy at first, but they land onto the leader from XSET. 9-3, 9-3 Enzo getting spike down. 2v4 here in favor of FNATIC. As they have finally been able to convert some traction into action, into an advantage here in this 12th round, and it's just gone from bad to worse for XSET. Can Zekin pull off some sort of miracle? No, he cannot. Go. Durka with 3. FNATIC pistol, first by Veto, 9-7, come back. XSET might have taken the energy out of this room, but FNATIC need to find a way to challenge the हाँ बोलो हाँ क्या बोलते बोल रहा तो बोलो हाँ हेल भाई कमबैक हो रहा है जल्दी लिखो हाँ हेल भाई कमबैक हो रहा है down 9-3 what a shot from Durka and Cryo wanted that pixel peek too yes he did yes he did a little pop off too yeah he's angry Again, the 9-3 half in favor of XSET. FNATIC have tried to make something work, and they've just run into a wall time and time again. Let's throw it down to the desk, see what they think. Chrissy?
It's been a massive first half for XSET. Looking a little shaky so far from FNATIC. Is there cause for concern just yet? Yeah, I mean, you're saying yes immediately. I mean, part of the reason you should be concerned is because Cryo is just cool, calm, and collected under pressure. This guy seems just unaffected by the global stage, unaffected by the crowd as well that's out here cheering against his team. He's putting up absolute monster numbers currently, and you can see the crowd was all ears, right? All ears whatsoever. But every single time XSET had a pivotal round. भाई ये कैसे सिंक हो गया? मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने किसी को बोला नहीं है क्या बाल अच्छे लग रहे हैं? These guys are playing like they're टी-शर्ट अच्छी पहनी है, इसमें सिंक क्या हो? Like we were watching from these guys that are playing in the online tournaments. भाई रिश्ता नहीं लेके जाना, सिर्फ चोटी पसंद आई बस. Last time भी मैंने वही बोला. It's a silenced audience. How is They're the doing simp their कैसे? damnedest to try to really encourage the FNATIC Simp पता है players क्या to होता find है? some victories. They did manage to scrape by 3, but बोलूं आगे. I mean, look how rock and roll Adam Driver is just chilling. Like he is just chilling out behind the desk. He's like, I don't even need to do anything because Cryo is taking over the game. This guy, we just watched Ye put on an absolute clinic in that last map. In our first series of the day, and Cryo is looking to replicate it. 17-4. I think he's looking to do more than replicate it. I'm wondering, is his back hurting from carrying XSET just through that first half of the map? Nah, he's ripped. He's prepared to carry him for 3 maps if he needs to. Absolute field day performance from him, though. And a big part of it is that, FNATIC, I think, of getting a little bit, overheat moments here and there, not really clearing him off those corners, being a bit, at times scared, I think, as well, playing in this matchup. You got to play with that confidence that we know that FNATIC have. Absolutely. Well, let's get this second half underway. Let's see if FNATIC can pull something out in this second half. Otherwise, we're on to map 2. Doug, Bala, take it away. Sim detected, opinion rejected. Thank you so much, Chrissy. There's concern across the venue as the bag of tricks for FNATIC is just very shallow. Right, like they weren't able to find any traction in the first half. Maybe they do something here, but where does it go? Yeah. भाई इतने टाइम से स्ट्रीम कर रहा हूँ, तुमने कभी देखा है मुझे स्ट्रीम करते हुए? They had a lot more on defense. Right, they were a lot more aggressive with their stars, and you might see it right off the bat here for FNATIC. 𝘼𝐼𝐿𝐴, Boaster, they're all posted up at A. Yeah, I can't tell who the other one is either. Mystic? Yeah, it has to be Mystic. Yeah. It's a full battle. Yes, it is, and the battle goes in favor of FNATIC as Mystic gets the first. That's the type of thing they're going to have to utilize to their advantage. Leverage that aggressiveness that they can throw out at any point. Well, keep def guessing. Well, and the thing is, it funnels them into 𝘼𝐽𝐴, right? Which is a brutal place to be in. Those 2 headhunter shots going a bit wide. The spam through, he still has the safety of his rendezvous, and it feels like we've seen this before. In the fast lane, 𝘼𝐽𝐴 has to give the space up. His backside is lost. This B is lost. They've got the flank. Oh, Cryo with the flank! Oh, the timing! No! Oh, and it's devastating. A 9-3 half already. And it seems to be getting worse. Oh, yeah, FNATIC can find no answers. Perhaps the answer's 𝘼𝐴. Oh, and Zach on the swing. 𝘼𝐴 with the kill. Nice, 𝘼𝐴! 3 on the round for him, and Aaron extinguishes the fire. Now it's a 1v1. Astra v Astra. Aaron on the swing. Boaster on the tap. He's going to get it to half. And he swings. The second there. Aaron challenged. Does he take the challenge? Does he take the Boaster gets it. Shots inside of the head and the defuse. As FNATIC get the pistol. भाई 𝘼𝐿𝐴 और Boaster बोलते हैं. Saves the snowball from happening. Saves the avalanche from XSET. Boaster and 𝘼𝐴 with the 2v4. I thought for sure he wasn't going to get the second, or the first, excuse me, the second incredulous. Just disgusting. And he was neutralized in this one. Yeah. Immediately already forced to rotate at the beginning of the round. Oh, भाई ये फोर्स बाय निकलना पड़ेगा. Heavy pressure again towards A, and there are full stingers, there are full specters on the side of XSET. Rushing wishing हो रही है friends. They got the spike down, so sure. You did see these executes be very strong for them against FPX. Flash set up in the art. What a fast lane out from Zekken over top of the wall. And that's who you're expecting to find some value for XSET on the attacking side, as Cryo has to cover the flank and make sure there's no one coming around.
Def is already fallen. Missed. Nice. Cheeky little angle, and he gets two. Nice, Mistu, nice. I mean, the spike is forward, but Aaron's in no man's land. Nice. Way too much to deal with. Nice रे. Let's go डके. डर के आ गया है वापस मैदान में. The beginnings of something here for FNATIC. आज business store खेलेंगे. XSET's gonna force Stingers again. This one's more of a light buy, not a के बाद full मैं investment. Valorant खेलूंगा फिर business store खेलेंगे. FNATIC will have to deal with it. Watch party के बाद. They did a great job this time. They knew XSET want to dive those smokes, want to get up close. And they handled it beautifully. This time the approach from XSET's going to be on the other side of the map. Maybe to push in this double door, maybe to head off towards 𝘼𝐼𝐽𝐿𝐻 and Enzo. Knife to make sure that Durka's not playing up aggressive. No, he's further back sight. पड़ा क्या Durka का spam? नहीं. Gratuitous spam through the smoke goes in his favor. पड़ा क्या? They don't have to be as पड़ा कर रहा है. thought through on this takeover towards B at the moment, given that Durka doesn't have that op online yet. But as soon as he does, you're going to need to see the same sort of dedication to clearing out all the different angles that we saw from FNATIC on the first half. They cleared out? Yeah, they did. That one wallbang with the Sheriff clears out the alarm bot that was there, that was providing cover. And because of that, they have to drop the Prowler, and they have to get Alpha to swing to check Link. He's re-cleared it now. Nice. He gets the kill on the Cry on the other side of the map, too. Remember, this was just two Spectres on the side of XSET. Enzo, the front line, as he takes a step back, retreats to the safety of the smoke, and allows safe passage, at least for now. Second putting up a wall of his own, and they haven't cleared a mistake. He's still on the other side. He's still in a main, and he's still playing into smoke. And there's nobody looking his way. Mystic has a chance to get so much done here, and he does. Another Fanu is back, guys. Back-to-back for FNATIC as the Let's crowd go, erupts yet FNATIC. again. They're absolutely not done. Already cutting the lead in half. Right in half. Only 3 rounds in. वैसे बोस्टर हाँ देखा है. And Mystic starting to turn up as well, just like he did in their qualifying match against 100 Thieves to make it out of groups. And what an outrageous performance he had then, man. XSET invested quite a bit in those first 3 rounds after losing the pistol. जो भी नया है like subscribe करो. So here's the first real attempt. जो पुराने हैं like and करो. FNATIC full strength, all rifles. अरे. But Durka's gone right away. They're doing a lot over towards the other side of the map though, FNATIC, so they might not necessarily be fully lost after this one. Look at the approach, Def. He might end up in a sticky situation. They've got the trademark here. They're watching it. Dude, they're watching it. I mean, they've read them. Once Nice again, Boaster with 2! Unlikely hero for FNATIC in that moment. Is Enzo going to be able to creep into a good spot here at dugout? Looks like nice, he's going to. इन लोग का ये He's नहीं full है. committed. Haunt नहीं जिंदा. Boaster cannot help him. He has 1 star. Will he give it to him? I mean, XSET का. Cosmic Divide invested too. And he's actually choosing Enzo is to play on the other side of it. To smoke into it. Sees the swing, and he gets one, but Cryo on the trade. Boaster's done well to get them to this point, but can he push them past the finish line? Can he push them past to a 7th round? Boaster with 70 HP and no Cryo. The hero in the first half for XSET does it again. The 19-year-old with another 1v1. He is delivering for XSET right now. And the first sign of momentum in this second half for FNATIC. काफी जल्दी आए सर. आजा हर विकेट. तेज आजा. Oh, they went for the aggressive push, the gamble. Def was so ready for it. User was moved कपा देख रहा है क्या मैच? I mean, a barely कपा? a smirk. User was moved out of your channel. 4-round lead here for XSET as they try to preserve control of this first map. FNATIC ये round जीत गया तो XSET का economy. They were firmly in control, Doug. 9-3 half. Actually, इतना भी 2 लोग के पास पैसे हैं. Next 2 round बहुत crucial है FNATIC के लिए. Going in towards the alley. All the way down belong. That's going to land for Durka. Not close enough though. He still has the angle up on top of this billboard.
The smoke to cover. 𝘼𝘽𝐿𝐴 once again spotted Neon through. Nice! A bold peek from the youngster. Now XSET resorting to plan B, resorting to find some space across the middle of the map. Resorting to Cryo leading the way through Art. There's nobody here for him to find a pick though. Right there. And meanwhile, Boaster's going to maintain control of A main. हम 5-man खेल रहे हैं. Oh, कौन? The trademark keeping him back for now as he stands just ये on game the के बाद other मैं आता हूँ. side of the utility. If XSET commit through Art here, Boaster with that control in A main. Are they going to go through the pains of clearing backup where they need the space for post plant? EG management. Mystic on top of the box. And remember, it was Mystic who was in the smoke previously. This time he's able to clean up Cryo and push forward. There's no way in here. With the pinch, Boaster's going to be able to come back. Aaron, though, in sewers. He's got to go massive. He's got to go massive, and he does. He takes care of one. Boaster on the swing, creeping his way forward, and Def had no idea it was actually Mystic who cleaned him up. He's been back there this entire time. Aaron just smoked him off, though, but it gives room for him to work. BCJ has to find value here again, and Aaron does too. 39 HP. He tried to get aggressive into the smoke, not able to do it. Aaron still healthy, still with some utility to work with. The gravity wall to pull Boaster off. Looking for the challenge, looking for the swing, and there's nobody holding the angle. It's secret. He might be able to slip in. Nice, but Aaron's not able to land the shots. Mystic with 4 and Boaster with the defuse. The mid round there for XSET falls apart. भाई लतन भाई अभी भी टाइम आउट नहीं लोगे. FNATIC keep it within 3. लतन भाई तो डीट. This one's going to be important. Mystic with such a good angle on top of that box, top of the default site box. Enemy remaining. And he went so massive. Showing glimpses of one of the performances that got them to this point. Fast round here from XSET. onto तो guys 1.5 किला इसके तरफ बढ़ते हुए जल्दी. From FNATIC that we saw early. करो यार प्यार दो भाई. Again, it's a bunch of stingers invested. Look how careful Def is with that same push that we saw into the club over on the B side of the map. ये stinger round Just नहीं आ watching रहा है it, making sure there's nobody flanking early. Now we've got about 20 seconds. That same knife lineup that we've seen from Def a couple of times landed in the exact same spot and hit Alpha in Cubby. So they know Alpha's not on this side of the map. Yeah. The thing That may make them a lot more cautious here, given 𝘼𝘽𝐿𝐴 isn't the guy to be spotted. But again, that knife hasn't hit him at all, so maybe, I don't know. You're getting into the mental gymnastics of it all. And Mystic foregoes the gymnastics and continues to frag. They actually did ult here, so Def is back up, but immediately back down. BCJ with 2 HP. They've gotten the spike down now. They have the Nightfall to work with. You've got Cryo who's going to be on the flank. Can he get the timing just right? Ezekin with nowhere to go. Has to challenge, has to swing, and 𝘼𝘽𝐿𝐴 drops him. Now Cryo again on the flank. Oh, bhai. Yeah, but is there any follow-up? BCJ overheated. Try challenging the angle. And Cryo not able to land the shots. The defuse comes through as FNATIC drop the lead to 2. Yeah. Guys, champion bundle giveaway है. जल्दी 50k subs करो When it पूरे. was 6, ठीक है. now it's 2. इंस्टा पे follow And करो that बस. one, दो ही चीज करनी a lot है. of ults invested. Let's And go they guys. make Let's it go. a Prime FNATIC. Gaming flawless. All 5 players still standing. And that was even harder because they took Def down twice. Look at that haunt. Gets the kill easily. And the crowd is clearly right back up. They've woken up since that first half. So devastating. This time it's actually XSET calling a timeout late in the second half, trying to preserve a 2-round lead. You mentioned the crowd having awoken. You mentioned FNATIC. भाई लतन भाई finally ले लिया भाई time out. I mean, just listen to him. Audience में देखने में कितना मजा आता होगा यार बहुत. Only 2 rounds right now. I think casting वहाँ पे Turkish में हो रही है जैसे. This time out here for XSET that's been forced out is a chance for FNATIC to get Mini talking to them. They already used both of their timeouts in that first half because of how bad that lead was getting.
So they've got to चलो 3k likes पूरे करो battle pass देता हूँ 6.9k likes जाने दो 3k likes पे आज battle pass दूंगा एक चलो देखते हैं अभी मेरे लिए नहीं तो battle pass के लिए तो कर ही दो given how fast that lead has shrunk. Yeah. This is only going to be the second yes, there are true local gun casters, round. yeah. And even then, it's Zekin likely having to use his ult. Yeah, he's got to. Only invested a sheriff here. Yeah. You've got to hit the timing just right. 𝘼𝐽𝐿 once again not playing up. That knife confirming that he's not taking the aggressive angle, but he's still around. And look at the aggression from FNATIC across the middle of the map. They've cleared it all. Smoke up top mid too. They're easily able to rotate through the flank or alley. Zekin has to find something. They've used the nightfall as well. 𝘼𝐽𝐿 is all the way offside. FNATIC भी prepared है guys. बहुत मस्त खेल रहे हैं FNATIC. एक भी execute में FNATIC off guard नहीं मिली उनको side but it's not coming. Zekin still with the ult. If he's going to find some value, he's going to have to go soon to know. Back to the sheriff. It might be a push in alley actually. They're posturing for it. Oh, they're going to have to deal with Cosmic Divide, and they're going to have to deal with 𝘼𝐽𝐿's wall. And how do you deal with it? You deal with it as BCJ does. Look at the flank coming too. Cryo has to deal with Mystic on the flank. 4v3 here, Cryo on the flash, the turn, and the shots are gorgeous. As Aaron's not able to find the same success, Boaster once again finds himself in a 1v1, 1v2, excuse me, a clutch situation. BCJ on the peak. That retake so slow for FNATIC to come back. 𝘼𝐽𝐿 gave up so much space that again, he has to slow walk it all the way through. He was by himself. There was 3 members of FNATIC in alley. One member flanking and 𝘼𝐽𝐿. Haunt 1 second अगर पहले आता तो BCJ नहीं मार पाता. One enemy remaining. Jinxed. Yeah. There's no pressure for Cryo to have to retreat and try to help his teammates on site. He could just completely deal with the flank alone. And did he ever? This time, the knife, and 𝘼𝐽𝐿 pushing forward. He has not done this before. He's using the same angle that Cryo did. The fence right here. He's in the smoke. Do they challenge it? Surely understanding that the window possibility is there. No, Zekin walks into it and 𝘼𝐽𝐿 drops him, gets away. Hello, क्या हाल है? All good, What Divya. a play from 𝘼𝐽𝐿. And the push from FNATIC that's gaining information and art just happened. Cryo with the chance to punish it, but he doesn't. Here's the wall out. Should try to get the plant, but there's a lot actually committed to stop it. He's just going to go straight in. Plant super, super deep. Is there anyone covering him? Yeah, Def holding that angle. Cryo's so far away. And he's going to have to hurry. If the play is a flank here, get the timing right, he's going to have to get on his horse. He's going to have to move, and that's exactly what he's doing. It is planted for Cryo to spam through that box in heaven. Plus the long plant as well. What a setup. BCJ clearing it out. Boaster has fallen. Oh, and Def does too. Again, you have to keep an eye on the flank, but 𝘼𝐽𝐿 with 3. There's Cryo on the flank. Cryo gets 2, not able to land the 3rd. Aaron, outnumbered, outgunned, somehow stays alive, and Aaron gets both. The Red Bull clutches. Aaron gets 3. XSET get to 12. There's just no way Aaron pulls that off after what looked like he was going to fumble those shots for sure. Line of fire में आ गए रे. The setup was perfect for XSET. What was it, a 4v5? Remember, 𝘼𝐽𝐿 got that early kill onto Zekin. And they put themselves up on match point. But FNATIC have put themselves in a position to still make this doable. It's only 4 rounds till overtime. But XSET find themselves mere inches from the end zone. FNATIC once again sending a 3-man flank down belonging Cryo. Waiting on the other side. Does a little bit of damage to 𝘼𝐽𝐿 and then gives the space up. And they're going to continue. They're going to hold this angle. Oh! They had no idea Cryo was there! What a ratty little setup! And they already took control fully of mid. Look at Zekin's position. He's inside of sewers. He's under the waterfall. 𝘼𝐽𝐿, they're standing right next to each other. They've walked right by each other. Nice, Enjo. They have no idea that they have passed right by each other like ships in the night. Cryo missing the shots. Now 𝘼𝐽𝐿 wise to what's behind him. And you see the rotation starting to come back, and they deal with him.
48 seconds, all the time in the world to pivot right now. FNATIC had a chance to really claw it this round, but now it's just left to Mystic and Enzo. Mystic, probably the most clutch member of FNATIC so far in this tournament. Enzo, the most won at Copenhagen. 2 versus 3 to save the game. Oh, and the gamble's correct. But they're slow, they didn't go through alley, so this is taking a lot more time. Mystic and Enzo, you mentioned their clutch history. They find themselves on B ahead of XSET. They've gotten into backside, they've gotten into heaven. Mystic, if the timing's right, it's gonna be gorgeous. And so far it is! Mystic has gotten into a 1v1. Aaron's flash to spam's just there. 41 HP. And Aaron answers the call for XSET yet again. 13-8 for XSET as they take down FNATIC on Pearl. But boy, did that get close. चलेगा guys. कोई नहीं, well played, फन्नू, nice try. 7-1 से तो अच्छा ही किए comeback. 3 versus 2. ये राउंड में निकल जाता, लास्ट राउंड में निकल जाता. ठीक है, कोई बात नहीं फन्नू. फ्रैक्चर और एसेंट अपना ही है guys. बोले रहा ना, फ्रैक्चर और एसेंट अपना ही है रे बाबा. Because you look to Cryo, second, BCJ, perhaps. Let's go guys, hit the like and subscribe button. Champions bundle giveaway कर रहे हैं 50k subs पे. जल्दी कर दो guys. जल्दी कर दो. What a performance out of Cryo. Just unbelievable. आज के लिए 44 के तो 44 के ही ना. And day different. कितने पे है? 44 के तो कर दो आज के लिए. चलो. Their stars are playing well. नहीं, अच्छा खेल रहे थे. And the supporting cast is playing well. Def, you said it, a masterclass in this game of his calls and his reads on FNATIC, at least in that first half for sure. And remember, there was, from Copenhagen up until now, it's not like XSET were playing an LCQ or playing officials. They were in the hyperbolic time chamber, in the lab, just trying to train and become as Super Saiyan as possible. एक दो चीज बताता हूँ मैं को जो अच्छी लगी XSET ने जो की. हेलो प्लांट, ठीक है, जो मेरे हिसाब से उन लोगों ने काफी अच्छा किया. देखो, मैं पर्ल खुद कॉम्पी में इतना खेला नहीं हूँ, तो जितना मुझे लग रहा है जो XSET के सेटअप से, अभी देखो एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है. यहाँ पे क्रायो, ठीक है, जो यहाँ खेल रहा था या यहाँ खेल रहा था, जो भी था, ठीक है, वो कभी भी हॉन्ट खा के इंस्टेंटली नहीं टीपी किया. उससे क्या होता है मैं तुम लोग को बताता हूँ. एक एक्स्ट्रा स्टन, एक एक्स्ट्रा फ्लैश या एक एक्स्ट्रा कुछ तो यूटिल बेट करा के वो जा रहा था, कुछ तो बेट हो रहा था. ठीक है, ये एक छोटा चीज़ है जो अगर आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि हर राउंड नहीं बेट होएगा ऑब्वियसली, पर कुछ राउंड बेट हो रहा था. और जब वो लेफ्ट में नहीं खेल रहा था, वो यहाँ खेल रहा था, तो उसके लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई कुछ तोड़ रहा था, ठीक है, या इन्फो ले रहा था या फ्लैश दे रहा था. ठीक है, और क्रायो बहुत डिसिप्लिन खेला. जब उसको नहीं पिक करना, नहीं करना, ये जंप स्पॉट में अगर आपने गेम्स देखे तो बहुत लोग मरे हैं अभी ये चैम्प्स पे ही. ठीक है, और डेफ में मस्त सेटअप्स चेंज किए गए. देखो उन लोगों का प्लान सिंपल था. उन्होंने ये जो बी ट्रैप लगाया था ना, अच्छा सेटअप था. मिड फाइट किए उन लोग, ठीक है, मिड पिंसर फाइट किए. ए पे एक जन था तभी, और उन लोग को जैसे ही मालूम पड़ा बी पे कुछ प्रेशर नहीं है, मिड पे कुछ प्रेशर नहीं है, ए पे ही जैसे फनाटिक ने डिफॉल्ट चेंज करके ए पे डाला, उन लोग सीधा स्टैक करके ए पे चले गए. तो काफी वेरिएबल सेटअप्स था. फनाटिक के लिए हार्ड था रीड करना, पर फनाटिक को लर्कर छोड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से, जैसे बोस्टर कर रहा था इसके पहले वाले गेम में. बट आई थिंक वो बहुत ऑफ गार्ड मारा, इसके लिए वो ये गेम नहीं किया. तो अगर यही टाइम पे लर्कर, जैसे क्रायो ने देखो 2 राउंड लर्क करके ही निकाले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता. अगर वो क्रायो लर्क्स नहीं आते 2 राउंड, तो इन लोग के लिए मुश्किल हो जाता. एक्सेट के लिए 2 था, 1 राउंड था, 1 राउंड लास्ट राउंड तो था ही, उसके पहले एक और राउंड था आई थिंक जिसमें उसने लर्क किया पिस्टल राउंड में. हाँ, वो हार गए उन लोग, ऑब्वियसली हारे, पर वो लर्क बहुत क्रूशल था वो राउंड सिक्योर करने के लिए. वरना फनाटिक फ्लैंक से आके और सिटी और ये होल्ड करके राउंड निकाल देता था 2 राउंड बराबर. ठीक है, और क्या है, हाउ डू यू मेंटेन योर फोकस थ्रू सो मेनी मैचेस ड्यूरिंग टूर्नामेंट. वो तो अभी उसमें कुछ ऐसा है नहीं. जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी.
ऑपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट इन पहले यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू, इतने सारे एंगल्स है ना, तो यू कैन कीप स्विचिंग अप द ऑपर। देखो ये एक वेरी कॉमन लाइन है, ठीक है, इधर से हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया, ठीक है, पर ए पे भी वैल्यू है, आर्ट रूम में भी वैल्यू है, कोई अगर हॉर्न तोड़ रहा है तो डोर पे भी वैल्यू है, कॉरिडोर में वैल्यू है, देयर आर लॉट ऑफ लॉन्ग एंगल्स, तो वैल्यू तो है ऑप का, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है ऑप का। अभी फनाटिक वही क्या कर अच्छा कर रहा था ए पे, जो मैं खास करके बोल रहा था, एक्सेट का जो एग्जीक्यूट था ना ए पे, ठीक है, जो भी था, इधर इधर स्मोक वाला था, कोई इधर स्मोक वाला था, जो भी था, पर उन लोग का फास्ट लेन मॉली या इधर मॉली हॉर्न ना चाकू, सबसे ना उन लोग ये कर रहे थे, साइड लेना होल्ड करना बहुत मुश्किल है, तो फनाटिक एकदम डीप पोजीशंस खेल के एक पिक के लिए या दो पिक के लिए खेल रहा था। अब एक्सेट ने इतना यूटिल कमिट कर दिया तो उसके बाद एक आधा पिक भी चला गया तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है वो राउंड सिक्योर करना, तो फनाटिक ने वो बहुत अच्छा किया ए पे। सेम वो राउंड भी जो तुम लोग बोले ना, फनाटिक अच्छा ही खेला, बी पे पैसिव खेले, वो खराब नहीं खेले उन लोग, ठीक है, वो खराब नहीं खेले, अल्ट पे जो रिटेक के लिए खेले, सामने बीसीजे ने भी अच्छा प्ले कर दिया, फास्ट लेन में आके खड़ा हो गया, और हॉन्ट एक सेकंड लेट हो गया, वरना तो बीसीजे मर जाता पहले ही, ठीक है, तो वो खराब प्ले नहीं था बाय एनी मींस, आई डोंट थिंक कि वो खराब प्ले था। और लास्ट राउंड भी जो उन लोग हारे, जो एरिन ने ये क्लच किया 1v2 इधर से, ठीक है, वो तो नहीं कर पाना चाहिए था सेकंड लास्ट राउंड, वही वो आई थिंक सेम राउंड तो नहीं, नहीं हाँ सेम राउंड नहीं है, वो लर्क से आके दो को मार दिया, ये हो गया, ये इंडिविजुअल प्ले से राउंड निकल गया, पर इसका मतलब ये नहीं फनाटिक का गेम प्लान खराब था, अच्छा खेले, दोनों टीम में अच्छा खेले, फनाटिक आई थिंक टी साइड इससे बेटर खेल सकता है और खेलेगा भी, आई एम प्रीटी श्योर, और दोनों टीम अच्छा खेले आई थिंक। Gonna go because we were talking about it actually before we came into this little post map. और ये मैप पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूंगा और क्या कर सकते थे, जैसे मैं खेलूंगा मुझे और नॉलेज आएगा। In this tournament yet, XSET got blown out of the water by FPX. Only picked up 4-round wins there. But one of the brightest spots for FNATIC in that map that we just witnessed was Mystic. जल्दी guys, like, He subscribe. really started playing well as we got into that second half. First time, not so much. How was the day? The day was here. It was a hell of a lot better. Out. I mean, look at the difference between the first half and the second half. This is, I mean, it's kind of absurd as well. But दोस्तों को you do मिला need थोड़ा Mystic to be playing in this top form level like he was. खाया, मैगी खाया, second half because he was और क्या खाया, already in waiting. राजू सैनिक मालूम है किसी को, कोई है एचआर केसी से यहाँ पे, राजू सैनिक वाला मालूम है किसी को, एचआर केसी के सामने, नहीं नहीं, Mystic needs to keep that performance going as we head into Fracture. राजू रोल, राजू सैंडविच, जो भी बोलो, portion of the fact that they were able to come back and make it. तो वहाँ गया था मैं अपने दोस्तों के साथ, खाया वहाँ पे, चिली चीज टोस्ट खाया, पनीनी खाया, नेक्स्ट कब मिलेंगे भाई? अरे रविकांत भाई सबको बताना नहीं, आप आए थे वहाँ पे, वरना सब लोग आपको बोल देंगे। फिर उसके बाजू में नया मैगी वाला खुला है, वो खाया, आइसक्रीम सैंडविच खाया, ये चिल किया, सनसेट देखा मरीन ड्राइव पे, मेरा फेवरेट जगह है गाइस मुंबई में, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्पॉट्स शाम और रात के टाइम पे, तो लिटरली मैंने सन सेट होते हुए देखा, आज 3-4 मिनट लगा सेट होने को, फुल एकदम ऐसा व्यू मिला, क्लाउड्स के बीच में से एकदम ऑरेंज मजा आ गया, फिर क्या वापस आ गए। Not going to beat around the bush. The guy is normally at the bottom of the scoreboard, and he's not putting up big numbers. But this map in particular, hello, sup. Hello, Srini. All good. How are you? Oh, against the EMEA, I should. किसके साथ देखे? मेरे कॉलेज के दोस्त थे जो हम लोग। Lights out so far. I think it was like 19 and 10. केसी कॉलेज में था ना मैं, तो आज ऐसे ही मिल रहे थे सब, तो इसके लिए लेट हो गया। Element as well. If they keep that one going, I think XSET could look like a bit of a scary team as our मतलब मैं उन लोग के साथ ही था, तो जो पहले करते थे सब कुछ, राजू रोल खाते थे, उधर मैगी वाला खुल गया खाते थे, मरीन ड्राइव जाते थे, तो आज डाउन द मेमोरी लेन, समझ रहे? All of the comments that he had about him being a great initiator player. He didn't have to take over this game like he did the last time out versus FPX. He was just able to sit back and everybody else was really leveling it up. But ultimate thing to do peacefully enjoying the sunset, yeah bro. Yeah, I think heading forwards as well. I mean,
if they can carry it Yeah, forward, yeah. as a Shrini is team, the same they're ones. they are a dangerous team. They have looked dangerous. They have a lot of momentum coming off on the second half of that first map. And But for yeah, those Fracture who is where don't it's know, gonna be the decided. Jays मालूम है ना तुम Well, लोग को? before we get into map 2, Majority it's लोग को time मालूम once रहेगा. The again for the Jays aim lab shoot around. Let's get का into a little सबसे पहला pre-game branch warm up with was Mystic on the in Fnatic side. front of KC Getting ready College. for map 2. जब नया नया चालू हुआ था and, तब से मैं वहाँ पे hopefully we खाया can था. take क्या maps मस्त so we होता can था get तभी to जब map 3, right? पहला ब्रांच था. That's all तभी it's वो built for. चॉकलेट I mean, मोमोज if भी you have a बेचता था truly stacked स्टीम्ड. day of just NA versus EMEA, बहुत it's मस्त gonna be होते थे. absolutely incredible, and I think that अभी तो सिर्फ the फ्राइज fans, कर दिया है. It'll be they quiet. want it तभी so बेचता था वो badly. I चॉकलेट think they मोमोज. deserve it as well to और be भी able to कुछ see तो that बेचता third था. map. And I think पेस्ट्रीज भी everybody बेचता watching था. from home, NA fan or not, you're probably going to want to see these teams go the distance. Yeah, I mean, Mystic's और looking तभी वो good. गराज It's था, looking एक kind of गराज. icy right now. गराज I'm के not gonna अंदर lie, उसने doing the दुकान aim खोला lab था. routine, but it is द about जेस जो carrying it आजकल forward इतना into that फ्रेंचाइज हो गया faction. ना, एक गराज के अंदर एक दुकान Typically, था the role बस he और plays कुछ well, नहीं I था believe पहले. he's ended up on the breach as well in the past in the player. We एज क्या है आपका can हेलबाई see different 24. compositions. I'm not sure अभी how 8 they're अक्टूबर changing को them as well. 25 Fnatic हो रहा actually हूँ. haven't played Fracture, I accept checks, champions so far. gifts, So that's going to be an intriguing one. super And, chats, yeah, it will mean that memberships. they have to take away their map pick if they want to bring it to that decider of a set. And of course, Mystic's been absolutely huge on the Fnatic side, but it is a team game. The rest of Fnatic have to Yes. step up, follow with him. You know, Crow's been great, but I he thought has 30 तो also पागल had वागल हो गए help. थे. Fnatic looked a little asleep at the wheel here, but hopefully map 2, a pick that they're very, hope a little bit more comfortable on. I mean, this is a map where you cannot be. Wishes accept नहीं करोगे? Wishes तो करते ही हैं. Fracture oftentimes, almost always, is the map where people like. रॉसी की एज क्या है? रॉसी मेरे से बड़ा है गाइस. रॉसी भी 24 ही है, पर वो मेरे से बड़ा है. You have to be able to up the कुछ pace दिनों and से बड़ा है. also slow things down from time to time if you're trying to catch your opponents off guard. But I'm curious to see what everyone's going to be running. Are we going to see a different composition coming through for the side of Fnatic since it has been a while? मैं एक सेकंड वॉशरूम क्या है? गेम चालू होने वाला है. Back to much of what we know. Well, let's get into it now. This is the Prime Gaming Agent Select. Let's see what everyone's going to be picking. Yeah, and I think XSET will probably, I mean, we've seen them play on Fracture, but there is changes across the board actually on Fnatic's side, so they are going to be swapping up their composition. But for XSET, it is going to be the tried and tested comp. They've been playing Fracture a couple of times now at Champs 2022. It hasn't looked amazing for them. It's kind of just been almost in the middle and the low ground, I think, when it comes to their overall map pool. So this will be a bit of a test for them to try and take the series in a 2-0 fashion. But yeah, on the Fnatic side, I'm kind of more curious about their comp because they are leaning super heavily into 𝘼𝐽𝐿𝐼 playing that Neon more and more and more. I mean, it's a role where, you know, in the past he hasn't played it a lot, but it seems like coming into Champions, he's been putting a ton of work into this one, and this is a big switch up for them. Yeah, I think, you know, widely just kind of ignoring the pro that we just witnessed, we know that 𝘼𝐼𝐿𝐼's Neon can find an immense amount of value, especially when you're trying to break into that B site, get the relay bolts up in the tower. This makes it that much easier to really push into that position and really take over the site itself. So I think that overall, I like the changes. I think this is very much in line with a lot of what we have seen from other teams, such as DRX as well, who will occasionally bring out that KO. So overall, quite satisfied. Yeah, I mentioned him again. I think that you just keep talking about DRX, man. I think Fnatic, one of the biggest problems that I've noticed from them is that 𝘼𝐼𝐿𝐼 will often take space, and if he isn't dominating on that Neon role and actually clicking on heads and clearing the way for them easy peasy, sometimes Fnatic don't have enough confidence to take advantage of the space that he's creating. So I don't want to see that from Fnatic now. I want to see this go to map number 3. I want to see them come into this with a lot of confidence. And, you know, listen, the crowd is behind you guys. It is fully in control for them to bring it to that map number 3. Well, let's find out if they can close it out on this map and bring it to map number 3. I'm sure the crowd will love it. Send it back to our casters. Doug, Bala, take it away. Thank you so much, Chrissy, Bala, and really, Brad. The problem is the crowd was behind him on Pearl as well. Yeah. And while they put together a comeback performance in the second half, it just wasn't enough. Perhaps Fracture is a bit different. We haven't seen them play this in so long. Yeah, but I think we also accept return. We also accept giveaways and battle pass as a return gift. मैंने तो बोला ना 3000 लाइक पूरे करो, battle pass लेके जाओ, 50,000 subs पूरे करो, champions bundle लेके जाओ. और guys socials को follow करो, Twitter. हाँ, समर्थ की बात सुनो, ट्विटर इंस्टाग्राम फॉलो करो, आपका भाई डेली कुछ ना कुछ तो अपडेट डालता रहता है, डेली, ऑलमोस्ट डेली. I'll try and get a good birthday gift. अरे थैंक यू शनि भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे जरूरत नहीं है, प्यार बांटो बस, प्यार बांटो के ना काफी है. And they're so important on this map. How often you see these guys lead the pace. Let's get this pistol round underway right now. FNATIC trying to strike back in map number 2, tried to bring this to a map number 3 and avoid
what would be 3 of the MEA teams who have made it here to playoffs going down to the lower bracket. It seems devastating. भाई उसने knife के वजह से call change कर दिया. And it seems like they're going to try to do that over towards A. And they're going to walk right into cryo. Knife में कोई spot नहीं हुआ, call change direct A. Maybe having second thoughts. Cryo's TP. भाई booster spike है तेरे पास भाई. He's looking over towards Dish, but it's TP back into Halls. They have no cover there either. I mean, you saw a little bit of on Pearl how crazy that was that they were committing so many players alone. And it's again just भाई वापस भी जा रहे. FNATIC is not going to be clearing the space that you're not watching. नहीं A जा रहे ना. He does ultimately not take the rendezvous and retreat back towards mid. Meanwhile, Dirk is on a solo expedition towards B. Maybe sitting under past the flank later in the round, and it's a free site for FNATIC. A lot of utility spent, and they will clear all the way back. Dirk is listening to all of the rotations happening right now. There's the flank that you just mentioned. Yeah, the spike's gonna go down. देखा ये बार FNATIC ने flank भेज दिया. I need डर के. I need 2 kill डर के. He's got a ghost and he's got a kill on to death. Making sure that no one else is lingering back. And no, it's not the case. XSET have fully gotten onto the site. You see the first wall's out though. To deny the plant. You're right, there's that wall. They're gonna have to span through as Dirk finds another across mid. Boaster paranoid! And second slow swings out and gets a kill anyway. Here's the aftershock. Aaron has to get off. He's not gonna commit to half. 3v3 here for the site. How much more utility do they have? How much more post plant deny? Nice. Second was supposed to hold the angle and Mystic swings out. Nice. Fanu. Too strong. Let's go. And they rip him apart. Extremity by extremity here on this map. Limb by limb. Booster ने मस्त wall के पहले ball डाल दिया. with the flank was so well prepared. You also mentioned the ghost investment. That's not typical for a chamber player, but he knew the second that round started, he needs to have all the time in the world. Talk about playing into your advantages. That's wild. That is crazy. I mean, you could see that on Pearl actually, how it was panning out. When they're ahead, they're good. And obviously the 2v4 by Aaron and Cryo as well. Able to push them over the edge. Guess for scoreline, 13-6 FNATIC. This time an early challenge towards Dish from XSET, and they continue to push their way forward. This time you see Cryo's playing back towards B. Make sure there's no light flank. Right there. No information gathered from either side except for XSET at Dish. Knowing there's nobody here in FNATIC, the same thing in Halls. But the rest of the map, which they've just actually smoked off the strip, this is not going to gain them that much in the current situation, but obviously they could be flanking multiple people here in Arcade. And that's what they're hoping for, but it's just not the case. Really just confirming the suspicions that they had previously. Zekin is here, Depth is close by, and the Vandal's just way too good in that instance. Mystic getting a spike down, it's planted for long too. They should be able to control that area of the map as you see a rotation coming in through Crashies, and Aaron wins it out with a classic. Forget what I said about the Vandal earlier. Now Enzo with the frenzy. Oh, उसने rope को Crashies बोल दिया इन्होंने. But you really feel the gun difference. One enemy remaining. There was one kill and it was a fun one to watch, but that's all it was. FNATIC get 2. And it's clean. And we didn't really touch on this too much so far, but the end of Pearl, obviously they brought it back from 9-3. The momentum was on their side. Yes, we were criticizing a lot what XSET was doing in terms of buying a lot of those stingers, forcing those rounds, ये मैप होने तक 2K likes पूरे करो. that game. 2K likes. गोल है तुम लोग का. ये मैप होने Players are तक. definitely revitalized towards the end of that game. So in terms of a GG go next, 3K likes पे तो मैं वैसे भी battle pass दे रहा हूँ. Be able to confidently go next here. And they look good so far in these first 2 rounds. Very clean. Aggressive look from both Neons. As it seems like FNATIC is going down into underpass. See the wall up from Aaron. He was considering dropping it, choosing not to for now. And this time it's Mystic who's actually on a solo mission towards Dish. Everyone else at B. Cryo in this tight angle. Sitting on the rendezvous, the spam. Oh, and Cryo still gets alpha and then gets away. How does he do that? They literally set up a timed spam to clear him out. From both sides. And XSET are ripping them apart right now.
नहीं वैंडल होती ना यही तो मर जाता स्पैम with the first contact. Aaron with the swing following up. कर रहा था कोई तो. Caution here. And it's the 2 star players of FNATIC who fall. And remember that stat from moments ago. 10 for 10 on rounds where XSET get the first kill in this series so far. And it's going to make it 11. Again, looking to play into their advantages. Mystic has gotten into A, and he has fully cleared it out, made sure there's no one around. So you see Enzo rotating over with the spike. He's also going to farm that orb, get the spike down. Get a little bit closer to having that Rolling Thunder online. As Mystic tries to hold the line across mid. BCJ playing in halls, creeping his way forward. 13 seconds left. You see the utility through the paranoia, and Enzo almost walks into it. And they just overwhelm him. खत्म कर दिया रे. It's entirely too much. TS Discord कप्पा आजा TS. TC वाला. Really solid anti bonus. In fact, उधर ही तो बैठा है तो ट्रैक कर रहा है. Prime Gaming flawless as well. कैसा का है कप्पा भाव. Just that initial setup taking down both star players from FNATIC. Hello. And that has बढ़िया भाई बढ़िया. FNATIC still going to be able to invest a lot into this round, obviously, and they are committing fully to the half armor strat. जाता है क्या विसर्जन को 11वें दिन पे? I mean, that was insane from him, but also just crazy that FNATIC is not able to get. क्या लगता है कप्पा कौन जीत रहा है गेम? Time spamming him. Yeah. They really left him no options, or it seemed like हाँ. anyway. मतलब तू भी FNATIC को ही सपोर्ट कर रहा है. Heavy presence towards B from FNATIC this time around. BCJ manages to get away without really even a scratch. And Boaster calls the exact same default that they played in the last round. Send Alpha to get a little control over upstairs, make sure nobody's pushing, and then go underpass to clear arcade with the trio of Mystic. जानबूझ के उसने पहले कोने वाला वॉल तोड़ा है क्या? कि ताकि कोई ये नहीं कर पाए. वॉल के ऊपर नहीं खड़ा हो पाए. And FNATIC are glad to fill the space that was once occupied. And you see the utility down again, slows the relay bolts, aftershocks, the counter paranoia from BCJ, and it's actually Durka who gets the first. Slowed nice you see the dash across from Alpha. Durka farms another. Numbers heavily in favor of FNATIC here, a 4v3. It's Alpha with light armor. Holding the space, Durka creeping around, prowling through, and it's actually Cryo who flanks him out. Breach ult. All 3. Cryo's not hit though, but he gets immediately swatted down. And that was the only one, as you mentioned, who had been able to sidestep the ultimate. Def with no utility to respond. There's the Molly 2, cuts them off from entering the site. I mean, this setup is gorgeous out from FNATIC, man. Second with this push on the tower, might be able to make something happen. There's just no time. At least maybe a collapse on Enzo so he doesn't save his weapon. Other 2 FNATIC players have made it out safely. Yeah, well done from Zekin to clean up Enzo, but you could tell the protocols for FNATIC were there, right? Oh, yeah. You got the spike down, and then all of the way they change your utility let's go, guys. Let's go. to deny any sort of entry or even an attempt at getting the spike defused was gorgeous. Well, सब गेम देखे क्या कप्पा? मतलब कुछ गेम देख रहा था इससे पहले. हाँ देखा है ना. The way that they approached it. BCJ and Aaron try to walk through the slow अच्छा खेल रहा है. the stuns. To catch him off guard, you expect him. DRX भी अच्छा खेल रहा है भाई. प्लेऑफ्स में जीते भाई कप्पा फाइनली. इतना अच्छा लगा, आँख से आंसू गिर गए एक दो. हाँ DRX बहुत टाइम के बाद. हाँ प्लेऑफ्स जीते ही नहीं थे ना. हमेशा ग्रुप्स में ऐसा मारते थे, लगता था भाई इवेंट जीतने वाले, फिर प्लेऑफ्स में फर्स्ट गेम में हार जाते थे. लेकिन बहुत क्लोज गेम्स हो रहे हो लोग के भी. हाँ ब्रीज वन साइड जीते और एसेंड ऐसा भाई, मतलब मजा आ गया था कल देख के. And Aaron are using both of their control utility at the beginning of the round to try to completely control B side. That smoke to not let. वो लोग ने थोड़ा टिपिकल गेम खेलना बंद किया ना बीच में, इसके लिए जीत रहे भाई. हाँ मतलब जैसा लोग उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि यही करने वाले हैं. अनऑर्थोडॉक्स खेल रहे थोड़ा. अभी मिक्स कर रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं जो उनका एकदम. Look at the timing here. Both trips going to potentially be broken at the same time. Durka's going into their flank. Oh, now he knows that they're there. The flash, the trademark, he realizes he's made a mistake. Get out as soon as you possibly can. Oh, they drop him. Oh, पकड़ लिया. Oh, looking for any semblance of safety, and he finds none of it. Def with the spam through the smoke. Nice. It's actually the Boaster who answers with the swing out. Mystic getting the spike down, succeeds.
क्या बेट किया रे कप्पा स्पैम करके And now उसके time लिए is a factor. Now the spike is in play. नाइस रेंज Massive kill out from Enzo. Aaron responds. Aaron trades it back. Now Cryo creeping forward. Aaron's still close by. They have numbers. They do have presence here in the relay bolts. Maybe way too much, but Enzo with another. Enzo is awoken. 3 on the round for him, and Aaron has no magic this time. Enzo slices through the spine of that fast lane. Just ridiculously. He's up on dish, on top of drop. And sure, 𝘼𝐽𝐿𝐼 obviously got stuck here. But it doesn't even matter in this case because they committed way too far out of halls. Here's the shots. He can't even see. भाई क्या? Oh my goodness. नौका धर लिया रे? हाँ रे। बॉल के थ्रू मार किया। मेरे को लगा दिख रहा है उसको भाई। हाँ। 3-round lead here for FNATIC. They have 2 ultimates to work with, and boy, are their key ones. 4 players here out from XSET on top of the wall. But the commit is going to the other side again. Very cool setup, and understanding that they're going to heavily invest in aggression towards B. They have Cryo play up towards Dish and leave A alone. And they didn't actually really get too much information about what XSET was doing on the other side of the map, but they don't commit any of their ults here. So they still all have them. FNATIC does. So no command and Boaster's ults. Fight going on in sand at the same time. They're getting pinched by a lot of sides. And off of that, 𝘼𝐿𝐼 dying means they can fully send. They don't have to worry about their trademark anymore. The spam's onto Mystic as they try to keep him back. And try to find some space of their own. Another kill going in favor of XSET. Orbital Strike, they're going to have to dance around. A 𝘼𝐿𝐼 is waiting for him on the other side. This Cryo switching over to the Headhunter, not finding anything. As FNATIC yet again look to dismantle XSET. मारो इसको भी. And there's just not enough time for Zekken to find anything. He's got to tuck tail. He's got to get back. भाई क्या टाइम पे बूस्टर का अल्ट आया भाई. But just like we started off, जाने वाला. हाँ जाने 100%. वो तो मॉली पकड़ के बैठा था. Right back into this series on their map choice here. Now it's XSET calling an early timeout. Boaster just went off in this round, man. He did a great job too. They delayed any sort of attempt at get. Hey. Oh no. Booster married me. Just kidding. Man. He played great in that round, but unfortunate, buddy. Who do you think, Rage or Neon, is the best on this? ऐसा कुछ नहीं. Both are viable. Play styles अलग-अलग. Early on FNATIC's map pick, Fracture. And again, the crowd really has come to life. एरिया लेने का तरीका बदलेगा बस. Fully awoken. They've forgotten about Pearl. And XSET's got to now deal with that same sort of thing, right? It's the opposite effect on them. The negative effect of the crowd only cheering for the other side. And in the first map, they might have been able to brush it off easily. Like, okay, yeah, it's the Turkish crowd, of course. Like, let's go out and stomp them. But they certainly don't have any sort of home field advantage. But they're not the enemies either. That's the important part. Is that a Tactibear holding a balloon of a Tactibear? Is that what that was? I didn't see it yet. I think it was. Is he celebrating his own birthday? You have a balloon of yourself? Sometimes. Early aggression Fast from घुस जाएंगे. FNATIC towards B. Look at that wall go I'll off deactivate कर दे. Trying to find Nice space, and he dies, and he's rewarded with a kill. Dumping utility all over space where XSET previously were. भाई ये कॉल किसने तो किया था पिस्टल में? कौन सी टीम थी वो? DRX ने किया था शायद. हाँ DRX का कॉल लिया इन लोगों ने ये. Slow map on Pearl. Seems to have forgotten about it just as much as the crowd has. Cryo not landing that shot. I mean, the juxtaposition between the two players we just saw is outrageous. There's no flank pressure here from XSET at all. No arcade, no tree push. You could just work your way in through the belly of the beast, forget the flank. 𝘼𝐿𝐼 and Enzo, you mentioned the extremities that they had, but is it going to be enough? BCJ gets it to half, gets it all the way with members alive. साइड पे मार रहा है. I mean, that just completely मेटल पे मार रहा था. अच्छा. The entire control they ये had of एकदम arcade, ओपन प्लांट है ना कोने वाला. एक ही जगह से तो डिफ्यूज कर सकता है. And just not being able to get that spam down. I wonder if the spike was slightly mispositioned for 𝘼𝐿𝐼 there.
or if he was able to tuck behind a little bit part of that metal box. I don't think so. And I wonder what utility Enzo had as he was playing on the northern side. Yeah, it's tough to say. But you're right, it just really feels like it backfired. Back towards the same default control. And Alpha has ult. Can't imagine him using it here, though. Obviously can pivot to a super fast hit from that, the classic from this comp. Oh, we've seen this look so many times. The dump of utility, and then he goes into underpass to join up with Durka. One of the different changes here, though, is Mystic. He's already controlled this entirely. And XSET is known to late push. Most of the time it's been towards Halls, and it looked like they might want to go for that same sort of late push again. Enzo farming the orb, Rolling Thunder online. And it seems like they want to go back towards A. The thing is, I mean, there's some Halls presence out from XSET, so we'll see how they handle that. hold करके बैठा ना bridge. Here from BCJ does spot the players at Dish. Spotted both Alpha and Mystic. Durka with the late. मुझे लग रहा है एमएन अल्ट खींचेंगे क्या डायरेक्ट? Zipline in mid right now, trying to group up before they take Halls. This Halls take depends where they use this. Rolling Thunder. Can't use it. They haven't committed to it yet. And Easily get pinched here. Def on site. BCJ has arrived. Def's able to take care of Alpha. Def finds another. Two here is Durka and Boaster, the only two alive. They're going to get into A. Nice. What? Durka with 3. To cover the res now. Yeah, and I don't know that Aaron's in a spot where he can really get out and get to it, but he's going to try. My goodness, he's going to try. Smoke. Maybe it's bait off the swing. Durka with 4. On for the 6K. Cryo. That's one. It's all onto Durka. He has to rendezvous away, but he repositions. He's still healthy. He's got 1. It is going to be the 6K, but Cryo stops it. Alt क्यों नहीं कर दिया इसने? Oh, this building would have burned down. इसका alt था ना? Smoke जाने का alt क्यों still, था? if Cryo continues to do what he's doing, just canceling the legendary round possible from Durka right there. Oh my goodness. Look at these from his perspective too. Saw the first two, but the follow-up right here through the smoke just before it lands. Would have been unbelievable. The crowd wanted it so bad. So close. 1 kill away. Look around. 4 ultimates on the side of FNATIC. दोनों round last के लोग के You want to play? Let's play. How do they approach this? Remember that threat, you mentioned this default always suggests a threat that he could go in towards B. But this time choosing not to. The big difference is consistently Mystic and his position. He's rotated all the way back down towards the south side, so looks like they will eventually want to go for this classic. And Alfier's coming back to put down the wall. Aaron's already used 1 slow. He's set up over towards the back of Gen. They've got so many ult combinations here too. What do you have to clear out Cryo? Is it the Rolling Thunder? Is that enough to push him back? His rendezvous is set up to get back into spawn. Back to where the rest of his team is. That's not gonna hit him. And there you go. All of the ultimates that you mentioned. You see them cross right across each other. The orbital strike there too as it splits up the defenses of FNATIC. BCJ playing in the smoke close by. The swing is there and he gets 2. Mystic on the trade. It's a 3v3 here. The spike's still not down as Mystic goes hunting. Finds 1. Durka's still alive. He's the one with the spike. Nice, Ray. Snatch around away. And for a moment when the round freezed there, I thought for sure XSET was going to be able to maneuver their way back into that. But it's Mystic, who is again having himself a decent game here, 7-5. That push into Canteen deep. Look at this. 3K for Mystic. Cryo ने shot miss कर दिया रे, नहीं तो the conversation I was thinking before we're heading into Fracture was, oh, if he plays Breach again, which was a standard role on this map up till now, was he's going to potentially have that same type of drop-off that we saw in the series against 100 Thieves when they opened. In those first 2 maps on KO and Sky, he went 40 kills total. And then he played to Breach and he only went 6. This time they stick him on KO and it's all the same. Super comfortable. Definitely seems to be working, and you see the confidence. They pushed through the one way that was set by BCJ.
Not a great buyout for XSET. And well, never mind, forget it. The shorty and the stinger find what they need. But 𝘼𝐽𝐽𝐿 has gotten behind enemy lines. He slipped the net, and he's healthy. He's so healthy. Nice. Second. What happened? He had all the opportunity in the world. Nice, Alpha. भाई ज़ेकन बेचारे के पास सिर्फ फ्रेंजी थी भाई. XSET made a run at that last round, but that man right there is 𝘼𝐽𝐽𝐿 who took over. He's starting to really feel comfortable now on this Neon in ways that he just wasn't on Pearl. And even while Second wasn't having a good game overall on Pearl, he was still he was still +3 kills against 𝘼𝐽𝐽𝐿. This time I'm sure it's flipped. Aggressive peek out from Cryo, and Durka's just on the other side of the box. They're paranoid, and they're going to swing, they're going to challenge him. Durka gets away. भाई क्या फास्ट सामान उठाया, टीपी किया, निकल गया. This map. मस्त. Ridiculous. Those chants reminds me of G channel. भाई LAN पे तो बहुत मजा आता है. Aaron has missed the wall here. Or it could just be a bait setup. Funnel you into peeking that angle, and you're holding a ridiculous angle. Look at Zekin's position. He's underpass right now. He's going to get all the information about this rotate from FNATIC, but he cannot die. And he doesn't. He gets away. See some members rotating back. BCJ dropping a smoke, and FNATIC have fully dumped once again everything into this B site. And Zekin's taking an aggressive spot. He's going to challenge Alpha, and he wins that out! Now the relay boat as Cryo shows up just in the nick of time to find one with the op, but the spike still planted. Also going aggressive in Canteen now. Could easily catch rotations here, but has he focused too much on BCJ? No. Now we're cooking. Aaron's gone. It's the second time FNATIC caused problems from that very spot. And what is Def doing? He's taking so long to make this rotation, expecting the flank still from Mystic. They've just been conditioned. Never having a safe moment, and Cryo with the op gets a third. चलेगा चलेगा. 8-4 भी अच्छा ऑफ है. He was still in tower this entire time. Remember, he was the one who spotted the rotations. He took damage, and then he full-on challenged. भाई क्रायो भाई तो मान नहीं रहे गप्पा. And that does speak a lot to the call from Def there. We were looking at him stuck on that A side, and I was wondering, like, okay, what are you doing? He just knows, okay, we still have Zekin in tower, we still have arcade control. We have many ways to get back into this round. The only way is these types of flanks that Closer did get value out of. हाँ वो भी है actually. And to think timing goes a little bit differently, maybe he finds more. And look at this, FNATIC is gripped up outside of A. We haven't really seen a fast Halls push, but with Mystic's ult. Guys, 2K likes क्यों नहीं हो रहे? जल्दी करो भाई, 3K पे battle pass गया हुआ है. He just popped it right now. जल्दी like करो. Gonna use the ult too, the spam's up. The knife there, and Aaron's only one here! But BCJ has shown up too. The challenge up from mid, Enzo can't see a dang thing! And BCJ's Classic wins it out. 3v3 here as Zekin continues to cause problems on the side. Flash. Mystic and Durka left standing. The spike planted, as you see it on the minimap, they're starting to get surrounded. Can they hold the line? Can they keep XSET back? Oh, that's a double aftershock. Through the barrage of utility, Durka dancing around, finds 1 second ult. Trades it out. Can Mystic do it again for FNATIC? No. What a round again for Zekin. Just as 𝘼𝐽𝐽𝐿 started to come online, Zekin returns the favor. And evens out this half. It was looking really bad for XSET for the entirety, but they're still down at the end of it all. But to win 4 of the last 6, when you kind of wondered if they'd get anything as impressive. But FNATIC hang on to the lead at halftime, 7-5 on their map. Let's throw it down to the Public desk. is getting creative. Thanks so much, Doug and Bala. We're back here on the desk. It is halftime here in Map 2, and it looks like we might be getting a Map 3, right? It's certainly possible. I mean, XSET, they did manage to make this, again, a lot closer than it was looking for a while. FNATIC had such an amount of momentum behind them, but XSET finally finding a bit of stability. They managed to make it a 5-7 half, so it's not that bad. Yeah, it's not too bad in a half at all, because it was looking absolutely abysmal, I'm not going to lie, because FNATIC were getting the spike down so consistently, and there was no attempt to really stop it. These numbers are now a little bit more even. You can see that they got 11 out of the 12 rounds in the post plans, and how many they were actually winning them as well, which was,
pretty significant, but XSET were getting boomed when they were trying to retake early on. But they did bring it back ever so slightly, but it was a bit of a sticking point for them, and they're going to be looking at this next half as well with a disadvantage against by 2 rounds. कितना हुआ है बाकी वो? FNATIC crossfires, the way they do it, just essentially getting the site for free, was really just setting the pace at the early start of अभी काम बाकी है. Yeah, it was just really well played by FNATIC once they get the spikes down, and XSET as well. They had some misreads early on. They were trying to go for a lot of roaming plays, wrapping around towards plat side, and there's going on the hunt. They're wrapping around into arcade, but they can't find anybody. They just can't get a read early where FNATIC बोला चालू करने को. Now going into the second half, do XSET stand a chance? हाँ, खेलना exercise सब. That's a, yeah, I mean, it's a pretty difficult question. What are the odds we're looking at? It's a difficult question. It's not looking good, right? Because, yeah, the last time we saw them play on this map, it wasn't hot, and you can see that we pulled kind of this attack win rate, which is the big number you want to look at here. The attack side on Fracture, statistically and historically over the course of this tournament, hasn't been ideal at all. And we're getting a clap it's from the crowd behind one of the big things causing it is the crowd just absolutely hates XSET. They just they're so here for 𝐼𝐽𝐿. They are very, very excited. This whole wave of clapping started by Bala and Doug. It was. Yeah. Bala just leading the XSET hate chant. just unbelievable scenes. They have their work cut out for them. XSET, if they can improve, if Second can really find his stride with his Neon and break open sights, that's going to be the win condition for them. Yes. FNATIC, though, it's in their hands. We'll see if they can get the 3. All right, let's see if we can get that map 3. Doug and Bala, take it away. We're diving into the second half of map 2. Hashtag Fanu win. Oh my. 2 rounds separating FNATIC and XSET. Again, on map 2, Ascent possibly on the menu if we manage to get that far, but it's going to be on XSET to get us to that point if they can somehow surpass the defenses of the EMEA representatives. I'm Doug, with me is Bala on the call. The crowd has been electric. FNATIC have been electric on this map. We'll see if they can continue. It isn't the dominant scoreline that we saw at the half on Pearl. And oh my goodness, pistol round, which means so much. The crowd knows it. I mean, listen. Nothing. Complete silence from the players, from the crowd. This setup for FNATIC could be devastating. It's all contact though. Now we go. The wall up, the utility dumped. As you see, Enzo's trying to keep them back with the fault line. Cryo playing on the other side of the smoke. Is Aaron looking to get the spike down? Should. They know. And somehow the spike has gotten They're down turning. without a single bit of damage. And there's the pinch that you Nice. mentioned. But Mystic and out Nice. there. Enzo Nice, does nice. it too. Nice. They somehow walk away with such Nice. a heavy advantage. And FNATIC win another pistol. Oh so my. crucial for them to lock out this map right here, right now. Win the pistol, start snowballing. 3-round lead. And while that might not be the largest lead that they've had so far in this map, it certainly feels like a great step to get there. A 62% win rate on defense. With a cushy 3-round lead too. I mean, Yep. I mean, by that stats. Yeah, you're sitting pretty. Yep, absolutely. It's a different opponent here, though. It's a different comp. Who knows what this one looks like? अरे crowd Defensively, दिखाओ. We've seen so many people run तो it. देखा नहीं है? है public. FNATIC. हाँ, public पे आवाज कर रहे. हाँ. दिखाएंगे 4 इसके. stingers and a spectre for Cryo. टाइम आउट रहता है He ना also तभी still has 2 दिखाते. shots in that headhunter. And it's another quiet approach. भाई सेम कॉल कर रहे हैं भाई. 4 players at dish again. It's the same thing that they did against the Hall stack of. पर ये राउंड निकाल लेंगे ऐसा क्यों लग रहा है? Eventually. They tried to pinch and it just didn't work. This time the pinch could come much faster. And you saw how hesitant, yep, they're going for it immediately before even planting. They want to take the fight. The paranoia is going to find no one. Look at that though. FNATIC just rotated into sand, not even messing with the opportunity of a pinch. And they've cleared out the Sage wall. BCJ repositioning, looking to get the spike down as 𝐼𝐽𝐿 is going to go forward. The utility once again dumped. 𝐼𝐽𝐿 takes a bit of his own. Durkle with what? But Dev, second, 2 big ones. The stingers finding so much value as 𝐼𝐽𝐿 भाई एमएन tried के लिए to स्मोक dash ही नहीं in. बचा उसके पास. हाँ. And what XSET tried to do on Pearl in the second half, they succeed this time. And that keeps it so close. FNATIC stumble. They gave him way too much room.
that quiet that you're hearing, that slow approach to the round by both teams. Unfortunately, FNATIC crumble under it all. Even the retake, 𝘼𝐼𝐽𝐿 got a wall out. That was really nice for them to clear, but here comes another push. For FNATIC this time, pushing the north side. Oh, and second, again, first. I don't think they know the Mystic's there. They haven't cleared him out. There hasn't been a challenge, but they're staring right at him. They're baiting him out. You see the flash come through. 3 members awaiting. The second flash there to find more, but the counter paranoia out from BCJ keeps him back for now. And Def swings at just the right time. It's clean. Second to get the first 2 kills, and then they able to deal with it all from Mystic, but he was just by himself, so Mystic might sometimes look like a one-man army, but just with the classic, just with 2 flashes. अभी 13 नेट वाले बचे हैं और 13-10 वाले जो थे. Before himself. That's what I do every time I'm in a 1v4 with a frenzy. I'm looking in the background of Enzo's camera right now. 𝘼𝐼𝐽𝐿 just laughing hysterically. Enzo's joined in on the laughs. A joke was said and we've missed it. Yeah, I feel left out. I want to laugh. Yeah, me too. Enzo might have something to laugh at here. BC members of XSET retreat away. Maybe a parting kill. He gets a kill, he'll have ult if he dies. Neither thing happened. Dies to the spike, doesn't get the ult point. 𝘼𝐿R तो तोड़ के गया 2 लोग का. And XSET get the round. You see the investment in the 14 paying off. हाँ. Small victories. And we'll see what the buy looks like for FNATIC. Already seen it. I mean, Zekken, dude. He was certainly not the same Zekken that we saw all tournament long on Pro, but he put the mask on, and all of a sudden, he's a superhero. Yeah, he's like Bane. Let's go, guys. Like, subscribe, ठोको जो भी नए आए हैं. Hit that subscribe button, guys. 43, 44 के आज पूरे करते हैं. Let's go. Love you all. But he's turned up back to group stage form right here on this map. At least in the tail end of that first half and the second half here. Def's gonna get his ult up. Oh, and you have Aaron awaiting the flank. But do FNATIC expect it? Do they invest flashes? They do. Nice. 𝘼𝐼𝐽𝐿 finds a second. And Mystic finds one too. Cryo with the pinch though, and Mystic stuck now. There's the fragment to push him off. Hopefully he can escape from this position. But right now, you got to figure out what the heck else is going on the map. There's this pinch coming. Nice. Escape, but Dirk is chasing him down from the backside. That was the spike. Man, he was in so much trouble. Zekken was surrounded. Oh भाई 2-0 वाले भी है क्या XSET वाले? We're getting really deep in this game. And it's staying very, very close. What? And Alpha almost gets the third. I mean, that is just ridiculous. The spray from that range with the Vandal. And he hits those? Let's see here. Cryo's got the op this time, Zekken's with the overdrive, and they're all grouped up towards B. They could easily hit a fast B site execute. Yeah, 𝘼𝐼𝐽𝐿 has his overdrive too. He's pushing fast in halls, actually. He is. The knife not going to spot anyone. That pressures XSET to fully commit to this push. Good one way though. Cryo's up. Zekken trying to do a bit of the same, investing his ultimate. That was actually Boaster's smoke, so के लिए smoke था लेकिन आपने मार दिया उसको. For 𝘼𝐼𝐽𝐿 to actually work with. पता नहीं क्यों था ट्रिप के लिए था नहीं शायद पीछे से कोई ना मार पाए क्या मालूम या जो एंटी फ्लैश खड़ा है वो पिक करेगा तो स्मोक रहेगा ऐसा 7 में हो गया drop all their smokes the rolling thunder's going to be there too and I believe that hit 3 सेव कर लो Dirk might have been the only one who avoided it and he falls Zekken going aggressive Zekken's going to chase, he doesn't have his ult anymore, so might as well just put this classic to work, and he almost does make it sing. Thing is, how much more will he look for? He's hunting him down, trying to chase him, trying to get the guns out of his hands. That Vandal might be accessible to him after the spike. Easily as Neon, he can get this. Just don't step too close. Yeah, got it. He does. Success. Timeout. And with that, XSET get the lead down to 1 round. My goodness. Timeout. Cryo has the op. He's going to be 1 point away from having his ultimate online. And this, you're right, that smoke just kind of ruined 𝘼𝐼𝐽𝐿. I mean, it could be really good at people trying to hold on to people holding Hall's push, right? But in this case,
trying to push it even further. 13-11 We've seen FNATIC. so many instances like समर that तू from सही बात Alpha बोल from रहा है. FNATIC. बस जब It तक cannot FNATIC जीत continue रही to है, happen. चाहे The 25-23 overheat क्यों ना हो. BCJ spotted with the knife. You feel the pressure. I think Zekin's crossed before they even recognize that he could have. There's the aftershock. Dirk has to get out, and he will. Did have that rendezvous to get away with. And Zekin is right beneath them. Quiet trip across the ropes. Back over towards the south side here. They still have the option to pivot. Cryo's taking a lot of space in halls, making sure there's not the presence of Durka. But they won't use that. Instead, they'll go back towards the classic. Zekin still has a lot of his utility. He still has the relay bolts on his wall. Paranoia available for BCJ too. Oh Lord, क्या सब कुछ ही है. Dash. One flash as well. Triple small ball. There's the first, and he's waiting on the other side. He's slowed down too. Like a bloody lunatic. And Mystic cleans him up. Durka retreating to a safe angle, not able to land the shots. XSET didn't have the first this time around, but they still find themselves in a 4v4. Enzo using the Rolling Thunder instead of trying to get the spike down, and he didn't. Cryo goes up top. Cryo finds a kill, looking for a second, double dipping his way into the round. Not able to find the third. Mystic's gonna have to do it himself, and he cannot. We're tied at 9. XSET want to end Fracture, end the series, and move on to the upper bracket semifinal, which would be a statement for them, I mean, given their history. Would it ever? They fell so early at Copenhagen. 2 matches and they were out. One of those was against Optic, who we know they struggle against domestically. And that's the team waiting right now for playoff day 10. भाई playoffs का day 2 है ना? In favor of XSET. आज. It was a close lead. Overall day 10. But a lead nonetheless, and it's been eviscerated. And what I'm learning right now from XSET, as we continue to watch these rounds play out, is the second encounter we saw at Copenhagen was not even their final form. To one of the best EMEA teams, FNATIC. Taking it to the hometown hero in Alpha, who's waiting on the other side. You've got Enzo with utility to help. That's exactly what he does. Almost has orbital strike too. The slow orb is there, but Zekin challenges. He opens the door and gets the kill. Orbital strike gone. Right. And there's no tools here. On another kill, Mystic is just overextending past the smoke, past the door, trying his darndest to get this round, get this map in their control. And Cryo's gone hunting. It was a judge in the hands of Durka, now that's gone. Enzo waiting just on the other side, and Cryo would have to swing pretty far if he wanted to challenge that. Look at the way that he's holding the angle. He does not expect actually Enzo to be past this. Finally, the time FNATIC अरे lower bracket है रे पर अभी भी जीत सकती है. Come on, Enzo's stuck between a rock and a hard place. Yeah. Between a Cryo and a Zekin. The spam through position given away. A prime gaming flawless for XSET as they take the lead. And it's 3 for Zekin. Game नहीं गया, I meant Enzo गया. It's those two at the top of the leaderboard. 18-11 for Cryo. 16-10 for Zekin. And it's them who lead the charge through this round, through the all-important round where they take the lead. Why so quiet? No, they're loud now. Latan bhai bhadak rahe gappa. That might be inviting. So Coach Mitty definitely can get involved, and when we're talking about the well of ideas drying up, your coach is your most valuable asset.
And while, I mean, Dawn provoked the crowd moments ago, and they're still, I mean, they're still quiet here, Doug. Fully leaning into that villain role. Well, it seems to be working. Oh, here's a lineup for Mystic. They're going aggressive in Northside pinch. And it's just 3. I don't know that they're going to be able to get out. Excuse me, it's 4. Can they hold the line? You're right. Alpha finds 1. Mystic does 2. They're stuck here. The fight continues. There's no way out. And the thing Nice is, on the other Citadel. side of the map, he has to sit back and watch as his team is dismantled. It is a perfect call from Mini. Something that you completely don't expect. You're looking at the weapons, you're looking at the economy, FNATIC, what they can buy. Gonna use the headhunter right here, try to get a couple shots off, and Durka cleans him up. 3rd on the round for him. That's FNATIC punch back. But back to the point about the economy, right? You could see they're not 240 getting best अच्छी है punch in guys. that round. Plan पे I think. The best they could do is get a couple stingers, and that's what they had. Guys, like ठोको 2 के पूरे करो जल्दी. So the last thing. 3 के likes पे battle pass giveaway करो What you जल्दी expect 2 is के a पूरे north करो. side pinch with the distance as it is. That's got to be Psycho's reaction to the booing that just happened. और subscribe And you can hear right now, he just came on the screen and it's boos again. That might be the loudest the crowd has been since the walkouts. Now Fear going aggressive. He's going to be met with a wall. It's a very strange commit of the wall. Just so scared of the pressure right there, given FNATIC just showed. Making up the pace. And go in a quiet trip down. Wall उल्टा FNATIC के लिए अच्छा है. वो side आ ही नहीं सकते अभी. Look at the ults from FNATIC too. They've got boasters. Orbital strike. They've had it for a couple of rounds. He just hasn't found the right moment. If XSET continues to be this slow, that could be such a round ender. And they already noticed that they walled themselves off in the south side of this map. Durka's post up in halls. They know exactly that it has to be coming from this north side, and it does. 4 members here. Zekin dashes forward. Canteen not cleared, and there's Orbital Strike that you mentioned. Zekin dancing around, gliding back with all of the elegance of a figure skater, but Monster punches back! Enzo does 2! A 2v2 remains. The spike still in a good place. The rest comes through, and it's a bait. It's a challenge, and Durka takes it. Hook, line, and sinker. Enzo. The spike down. BCJ is going to get aftershocked here. He has no chance to escape! And he tries to stay! Spike is down. Aaron immediately recovers it, so they will get the plant. Numbers advantage still in favor of XSET, and that res, all the more valuable. But how do you get through Cryo right now? Enzo. 1v2, and you have such a long sight line to get through, and there's an op hanging on it. Aaron just has to wait. Wouldn't dare move. Enzo has to go so far to clear him out. And it's Cryo that delivers the devastating death blow. XSET take the lead back. How do the team after timeout win easy? ऐसा नहीं होता है. Coach उनको suggestion देता है. हम लोग वो call या suggestion के ऊपर act करते. He gives himself room to peek. That's how he gets 2 kills, but BCJ just destroys the players on the site who are going to actually swing with him, so they don't get super value out of it. The one XSET fan in the crowd. I was about to say, there can't be many. There cannot be many. Look at the economy right now. Thankfully, Durka does have the stimulus Bye of the tour de force. Alt है ना कप्पा. Op है, 2 rifle है. बाकी अभी एक Bucky और एक Frenzy. 3 ultimates to their name too. Next round के लिए बचा है. Well, Cryo has an op now, and then the tour de force in case things get messy. Slow approach. XSET completely expecting another push. BCG के पास TP नहीं था mostly. This is how XSET started this half. Remember, it was quiet. उसका smoke था. अगर वो ऐसे swing कर देता तो बच जाता. Then this is. Sure. They're trying to read out if there's going to be any push from all sides of the map. This time they're sat down. हाँ पर TP जब तक होता तब तक मर ही जाता. Aaron watching halls. Right there. Here comes the hit. Death has the rolling thunder. It's not going to tag anybody. Yeah, Boaster is still here. He drops the molly, and it's really just Second that goes across, and that might be okay for XSET after all. No! Nice! The big bucket that gets 2! Oh, the buckshot's just too much! And he's still there. He's managed to upgrade a weapon 2 in the tour de force from Durka. Gives the numbers advantage further in favor of FNATIC.
𝘼𝘽𝐿 close by. Death gone. भाई मैं टावर लेने जाने का नहीं. And 𝘼𝐿 can find nothing. Surely not. Surely not a 1v4. Surely not with 13 seconds left and the spike out of reach. 10 seconds left. And he has nowhere to go, nowhere to run. All you can do is count his lucky stars and hope he survives, and he does not. FNATIC tied up again. And surviving with 3 here is huge. No matter what happens in the last round. We got 2 buy rounds here coming up from both sides. And we're going the distance here in Istanbul. How does Mystic get away with 2 here? I mean, just flashbacks to both EFC right now. Enzo का stun आया उसके लिए रे. It's elation. Enzo set that up so well. XSET का 3 ult तो है. 3 ultimates on the side of XSET 1. कोई round defining ult. Zekken का. And you hear 1 already used. Oh, instant rotation here from XSET. I'm wondering what's spurring that on, but either way, they're going to have more challenge to deal with 𝘼𝐿 here against 3. There's a flash waiting on the other side. Waiting for contact. There's the flash. There it is, and the turn! 𝘼𝐿 gets 1! BCJ shows up in time! And now the Rolling Thunder, Zekken tries to survive. Oh, भाई वो TP करके अंदर आ गया. Hero yet again! He's gotten 3 on the round! भाई ये अगर अपना फ्लैश डाल देता राइट क्लिक वाला तो निकाल ही देता. But can 𝘼𝐿 equalize things? We just saw 𝘼𝐿 in this situation. Can 𝘼𝐿 do it? Spike planted. आधा हो जाएगा. 𝘼𝐿 up top. On the wall. Looking down upon XSET. Looking for the height advantage. He's taking care of Def, but has to drop back down. Gonna go for it again. Double dipping. If it ain't broke, does he commit? They have so much. I mean, they have money. They could challenge. That's exactly what he does. 𝘼𝐿 with 3. And you feel the moment slipping away. 𝘼𝐿 holding me up. And 𝘼𝐿 lands the shot. XSET get to 12. 𝘼𝐿 is the 𝘼𝐿 shutdown button for XSET. 2 legendary opportunities there for 𝘼𝐿. The 1v5 just now, the 6K before. Look at this TP from BCJ. He TPs into the Rolling Thunder just in time to avoid the stun and save his teammates. What a play. That puts XSET on match point. It's all on BCJ. Buster बोल रही है अल्टी कैसे नहीं खाया? XSET 1 round away from once again silencing the arena. Buster Stinger ले लेता रे 𝘼𝐿 से. And Boaster's on a frenzy, 𝘼𝐿. Enzo's on a Spectre. 𝘼𝐿's on the knob though. And that's been enough many a time. They've just completely given up on these aggressive plays. And don't forget, FNATIC did not even spend their last timeout. So they're going at it dry by themselves. B-Rush. FNATIC quietly looking to take us to overtime with a less than ideal purchase. And Boaster's nowhere near being able to combo his orbital strike with the trademark. He's so far. The paranoia out. Zekken's going to take space, and he's going right into spawn. Enzo waiting on the other side. He's expecting the challenge. Yep. Utility use. They walled them off in tower. They walled them off. Oh my tower wall. And they can fully commit to this tree post plant. XSET with a great idea here. FNATIC. I will say though, they don't have utility. Look at the flank Def. Oh my goodness. Oh no. किधर दिख रहा है? अच्छा एंटी फ्लैश तक है. 𝘼𝐿 in a brutal spot. There's orbital strike. Zekken gets onto 𝘼𝐿. He gets away. 𝘼𝐿, Boaster, and Enzo to try to overtime, and Boaster falls. A 5v2. XSET looking to make a statement. Numbers going back their way. 𝘼𝐿 on the tap, holding the line. He gets onto Zekken. Can they bring this back? 𝘼𝐿 not able to get anything. Def on the swing. Haters hushed. Doubters damned. XSET advance. Silencing. आ गए भाई sunglasses पहन के. The home crowd. नहीं पन्नू. And you can't doubt anymore. XSET have emerged as potential candidates for world champions.
And two potential भाई ये में ये MVP तीनों players in second cryo. Lower bracket. Lower bracket. Oh, what an opening series of playoff matches here. The question for XSET after Copenhagen leading into Istanbul was, okay, you've got Guys, like, subscribe, ठोक दो guys. Let's go. Hit that like and And subscribe holy button. smokes, what else have they shown? I mean, 3 के likes करो, battle pass giveaway करेंगे. अब क्या करें? दिल टूट गया है. हाँ, थोड़ा बहुत on that play. ऊपर आ जाएगा like subscribe करोगे तो. हाँ. Just phenomenal. Taking both the opening matches 2-0 We get Scream versus Durka. and taking Fracture after they got dominated by FPX on this map. But भाई EMEA पूरा lower bracket में तो है, पर comeback until करके today जीत भी could सकते not. हैं. Immediately coming out. भाई of XSET बहुत EMEA strong लग रहा है भाई. Looking so good. FPX को भी हरा दिया. In the face लोग of को भी हरा दिया. a heavily biased crowd. Valo खेलेगा कप्पा? नहीं But I भाई. have to say, not overwhelming, and I think आजा खेलते हैं, 5-man खेलते हैं. Don Wick understood that the entire time. कितना games खेलेगा? It is ridiculous कितना game what खेलेगा? XSET just pulled off. 1, 2. 2-3 दो And खेलते हैं. surely nobody thought they'd make it out of groups. Surely nobody thought they'd beat Fnatic. It's just pure. You're absolutely. User was moved to your channel. क्या हम लोग business tour भी खेलते हैं आजकल. NA team Sound to Why not? massive playoff outside अरे of मजा आता है Optic. बहुत. And he's inviting the hate. अच्छा मैं कुछ देख लूँ. अरे भाई मजा आता है कप्पा business tour खेलने में. User was moved to your लोग channel. poke करके पूछे खेल रहे हैं कि नहीं. हाँ खेल रहा है क्या 5-man? अभी नहीं रे, थोड़े टाइम बाद. अच्छा अच्छा. गोपी है क्या? गोपी को भी पूछ. तो अभी ऊपर मूवी वूवी देख रहा है शायद अच्छा के अच्छा. रूम में. ठीक है ठीक है. XSET is all set. सही है guys. क्या बोले अभी? कोई आ रहा है? विबोर, शिवी, इजी, नाइट इन लोग 5-man खेल रहे हैं. इजी को पूछ लो, इसके बाद आ रहा है. आ रहा है इसके बाद. आ रहा हूँ मैं. बुरा लगा दिल से. हाँ यार क्या करे. 2-0 बोला था ना, स्टॉर्म भाई बोले तो थे, पर अब क्या करे, दिल नहीं मान रहा था. क्या एक गेम गो कर दूं, फिर तब तक आ जाएगी पब्लिक. हाँ 2 मिनट देना. हाँ हाँ. लोगी आए. अरे लोगी को बुला लेता, पर अभी और भी तो लोग चाहिए. देख एटलीस्ट उसको छोड़ के एक और आएगा तो एक आ जाएगा ना. एक भी नहीं रहेगा तो फिर. वॉइस चैट डिसेबल्ड है. क्यों भाई? एनेबल कैसे करूं? वॉइस चैट को एनेबल कैसे? ग्लिच है नहीं है? हेलो नहीं भाई, ग्लिच नहीं है. हेलो हेलो. गेम रिस्टार्ट करके देखें. अच्छा गेम इशू है. ओके ऐसा बोलो ना. तो हेलो हैकर खेल रहा है क्या 5-man? हेलो कौन कौन है पूछ रहा हूँ. मैं, तू, कप्पा. इजी भाई को खींचो वो लॉबी से. जी भाई आ रहे से रहे वो लॉबी से. तो ये गोपी किधर है?
शालू किधर है? वॉइस चैट इज करंटली डिसेबल्ड व्हाइल वी इन्वेस्टिगेट एन इशू। हाँ बोला थोड़े टाइम बाद खेलेगा। लोगी को बुला सकता है यार। गोपी किधर है? गोपी को फोन करना। गोपी भाई ने क्या सन्नास ले लिया क्या गेम से? नहीं, खेल तो रहा था आज। अभी प्रैक्टिस चालू ना, अभी शिद्दत वाला गेम खेलेगा। अच्छा। अभी सबका प्रैक्टिस बंद आ गया। हेलो गोपी, किधर है? फर्स्ट फ्लोर बोल। अरे आना फाइमैन। मैं जा रहा हूँ सोने जा रहा है? क्यों लवड़े, तूने तो शेड्यूल फिक्स कर दिया था। हाँ तो मैं 3 बजे सो जाऊंगा भाई। बहुत बढ़िया, चलो आना। भाविन और कप्पा भी है, फटफटा। नहीं ठीक है। सिमर को फोन लगा। सिमर बाहर गया हुआ है। अच्छा, क्या अभी से रात को नहीं खेलने वाले पब्लिक? सब जल्दी सोने वाले क्या तुम लोग? हाँ भाई, सुबह जिम जाना है सबको अभी। ओ भाई, सेटअप हो गया सब? का क्या? किसका? आरएनटी। वो लोग का तो कब का हो गया रे? बुक कैंप पे ही वो लोग सब लोग। हाँ, बहुत अभी ब्रेक था ना, ये गणपति था तो ब्रेक था ये लोग का। अच्छा। मार्जिल फाइमैन नहीं खेलता है गाइस वैसे तो। तू और कप्पा डुओ ही कर लो भाई, इससे अच्छा। अरे पर कॉम्स नहीं है ना लॉबी में, वॉइस कॉम्स आर डिसेबल्ड। बे हाँ बे, वो भी सीन है। लोगी को बुलाता हूँ, एक तू हो गया, एक पांचवा अपने को फिर भी चाहिए। विम को बोलना, विम बोल रहा था थोड़े टाइम में खेलूंगा, तो पूछे कर लो। पोक किया मैंने उसको, 2 बार पोक किया, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। इसी पे तो है। रोशी को मैसेज करके देखता हूँ। इधर है रोशी खेलेगा। कॉल ही करता है जरा। User joined आ your जाओ भाई। channel. आजा इजी भाई, आजा तेरी ही देर थी बस। कल नहीं, मतलब कल तो मैं जाऊंगा पहले बूट कैंप मूवी देखने, फिर बूट कैंप देखने। मैं बूट कैंप मूवी देखने, मैं बोला ये क्या बोल रहा है? फिर बूट कैंप देखने जाऊंगा। हाँ। और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस। अच्छा, आज जल्दी सोऊंगा। बूट कैंप देखने मतलब रेडी हो गया है कि बूट कैंप के लिए जगह देखने जा रहा है? जगह देखने। तब वो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं बोल सकते। वही बोल रहा हूँ मैं, GGWP करना जरा। क्या GGWP कर रहा हूँ? और किसका? एक ही चीज का। स्ट्रीम क्या बोल रहा है? एक गेम खेलता हूँ फिर बंद करता हूँ। हैकर भाई। अरे पब्लिक को तो आज मैंने बोला बिजनेस भी खेलेंगे अपन, सब खेलेंगे। तो डायरेक्ट फिर चलो आज सब खेलेंगे। आज एक काम करता हूँ, मैं सीधा 8 बजे ही जाता हूँ मूवी देखने, सोता ही नहीं हूँ। 8 बजे का शो है। मैं 3 बजे जा रहा हूँ सोने। अरे हैकर 2 गेम तो खेलेगा अभी। 2 गेम तो खेलना हो जाएगा ना 3 o'clock। हाँ 3:15 हो जाएगा, 2 तो खेल ले। हैकर भाई आपकी बिना मजा नहीं है फाइमैन का। नहीं भाई, स्लीप शेड्यूल फिक्स करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई तुम लोग के ऐसे मेरा खराब हो गया,
भाई ये तो है। हाँ मैं सोता था वैसे 2-3 बजे तुम लोग अरे एक और हेल करते करते अभी मेरे को आदत लगा दी है 5-5:30 तक खेलने का और खुद अभी स्लीप शेड्यूल फिक्स करने जा रहे बेशरम। हेल भाई आपकी प्रैक्टिस अभी चालू नहीं है, चालू होगी तो आप खुद चले जाओगे जल्दी। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है। अरे भाई वो दिन प्रैक्टिस थी फिर भी मैं तुम लोग के साथ 6 बजे तक खेला। नेक्स्ट दिन प्रैक्टिस था। वो दिन तो जाने ही तो। कभी कभी हम लोग ओवर कर देते ना। ओवर करते फिर हारते। गलती है भाई। हाँ ये एक सच बताओ ना, ये जब से सायक आया ना तब से 6 बजता है 5:30 बजता है। पहले हम लोग 4-4:30 बजे तक खेलते थे। हाँ 4-4:15 तक खत्म हो जाता था। वो सही भी टाइम है, उड़ भी जाते 12 के पहले। हाँ सही बोला, एकदम सही बोला। साय भड़वा है साला और एक अलग पॉलिटिक्स करता है और इधर ये 12 बजे तक 6 बजे सो के 12 बजे तक आँख नहीं खुलती है रे दोस्तों। नहीं एक्चुअली हाँ एक्चुअली नहीं। 3 बजे सोया तो भी 10 बजे तक खुल जाती है भाई नींद। हाँ वही 7 घंटा इनफ टाइम मिलता है सुबह जिम जाके फिर प्रैक्टिस के लिए भी आने के लिए। प्रैक्टिस के लिए अरे ये तेरा और गोपी का 10 दिन का है। नहीं भाई जा रहे लोग अच्छा खासा। अरे नहीं जिम तो डेली जाएंगे। अच्छा सुबह का बोल रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ नहीं मेरे को शाम में नहीं हो रहा है भाविन, समझ रहा है तू? रात को जाना है ना बहुत वो हो जाता है। अच्छा बहुत हेक्टिक हो जाता है क्या? हाँ मतलब प्रैक्टिस अगर ऊपर नीचे हुआ तो जिम का टाइम भी ऊपर नीचे हो जाता है। उससे अच्छा सुबह ही कर लूंगा, एक काम खत्म हो जाएगा। तेरा 4 बजे रहता है ना प्रैक्टिस? हाँ तो फिर 4 से 10-12 बजे तक चलता है, कभी 1 बजे तक। तो हाँ स्क्रीम मिलता है तेरे को हैकर? नहीं वो ठीक है तो तू 12 बजे हो क्या जाना जिम। अरे नहीं वो टाइम पे फिर मतलब समझ रहा है तू, रात को 12 बजे जिम जाना मतलब रात को नहीं दिन में बोल रहा हूँ 12-1 बजे भी वही 1 बजे जाने का प्लान है। अरे तो तू अभी समझना दिन में 1 से कितना 1.5 घंटा करता है जिम? कितना टाइम? 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पकड़ ले। 2 घंटा जिम भाई आना जाना भी तो टाइम है ना घर से। ये खारघर जाता है, पनवेल से खारघर जाता है। अच्छा ओके हाँ तो 1 से 3 12 बजे तक उठ 5 बजे तक सो हो गया ना। नहीं होता है नहीं होता है नहीं होता है। वो 5 बजे सोया ना तो 1 बजे के पहले आँख नहीं खुलते, कुछ भी कर ले। समझा हाँ वो हैकर है। सही है मेरा भी भाई। 4 बजे सो देख 3 बजे सो के 10 बजे उठ जाते हैं अपन, पर 5-6 बजे सोए ना तो नहीं उठ पाते। नहीं होता है वो, फिर 2 बजे ही आंखें खुलती है, फिर लगता है कि अभी नींद हुई खत्म। हाँ भाई पहले तो मम्मी डांटती थी मुझे, अब तो मम्मी भी डांटती नहीं। अभी मेरे को खुद से ही शर्म आ जाता है। मम्मी ने उम्मीद छोड़ दिया ना, अभी उम्मीद ही छोड़ दिया है कि अब ये एकदम ही नालायक हो गया है। भाई मैं तो लास्ट कितना 6 साल से कोविड का टाइम छोड़ के बूट कैंप पे ही था, पर फिर भी इतना खराब शेड्यूल कभी नहीं हुआ था। अबे नहीं वो अपन सिमर था तभी अपन 6 बजे तक भी खेले भाई, 5:30-6 बजे। वही तो 6 क्या है ना सिमर, इसीलिए सब गाली दोस्तों। सिमर ही है बेशरम आदमी। वो खुद मस्त प्यार से 4-5 बजे उठता है शाम में। हाँ सिमर अभी फुल टाइम स्ट्रीम कर रहा है और खेल रहा है ना, तो उसको क्या है 4 बजे भी उठेगा तो आराम है। अभी उसके पास रोस्टर नहीं है ना आज के तारीख में, इसलिए अभी कर रहा है। अभी जो आने वाला है वो मतलब आएगा तो बात अलग, पर अभी के लिए नहीं है ना कप्पा, तो अभी वो आराम से खेलो ना गाइस। 6 बजे 7 बजे तक बोलता है मैं सुबह 7 बजे छोले भटूरे खाऊं कि अभी कुछ मंगाऊं। 5 बजे बोलता है सुबह 7-7:30 बजे जाके टेम्प्ट करता है टाइम टेबल में चल रहा है 4 बजे की भूख लगी है गाइस क्या मंगाओ, और फिर हमको भी भूख लगती है। एक्चुअली भाई सही बोला है कर तूने। फिर इजी भाई ऑर्डर भी कर लेते पट। हाँ भाई मैं तो कर भी लेता हूँ कभी कभी सुन के भी। भाई रैंक वैसे ही जहर मिलता है अगर सोलो अभी खेला विदाउट वॉइस, खत्म। अरे विबोर इन लोग क्यों कर रहे हैं? मुंबई डाल रहा हूँ, गेम मिलेगा कि नहीं पता नहीं। बोल देता हूँ ना वो लोग को भी मुंबई क्यों कर रहे हैं। मुंबई सिंगापुर दोनों डाला है मैंने, सिर्फ मुंबई डालू उनको भी बोल, सिर्फ मुंबई डालने पे वैसे मुंबई डाल बोल रहा हूँ। आ गया उनको एक दिन सेलेक्ट आ गया। हाँ इनको कौन सा 5 मैन मिल गया है? तो मैं मुंबई निकाल देता हूँ अभी, और क्या है फिर। हाँ निकाल दे। लीडर बोर्ड दिखाना।
रोशी 12 पे है गाइस। ये लोग डीसी को लेके खेल रहे हैं। रॉफिल 60 अजीब लग रहा है थोड़ा मेरे को। क्या अजीब लग रहा है आपको? फास्ट लग रहा है सेंसी मेरा। सेम सेंसी है जो पहले ही यूज करता हूं। हाँ तो बहुत दिन से तो नहीं खेला ना, अभी हाथ को ब्रेक दिया रहेगा ना कि खेल रहा था। हाँ गप्पा नहीं खेल रहा था। हाँ तो इसके लिए ऐसा लग रहा है तेरे को। यार वो कैश फाइल कैसे डिलीट कर दे? काय का कैश फाइल कहता है ना वो। अरे कैश बोल रहे थे वो, कैश कैसे क्लीन करते? गूगल कर भाई। बात तो सही है। अभी तो काफी लोग 5 मैन क्यू करते रहेंगे क्योंकि वॉइस कम नहीं है। ये मिल जाना चाहिए 10 मिनट में। क्या वॉइस? अच्छा वॉइस कम बग गया। नहीं मतलब वैसे ही जहर रहता है विदाउट कॉम्स तो मतलब वैसे ही लोग कहाँ माइक यूज करते हैं। हाँ भाई पर अभी तो मतलब जो जितना गया ना अभी तो। हाँ, अभी जितना थोड़ा बहुत यूज करते थे वो भी नहीं। लेट्स गो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। और गाने का नाम है स्काईवर्ड बाउंड। नहीं आफ्टर द स्टॉर्म था वो गाने का नाम। पिक वर्सेस एक्सेट वापस। अपर ब्रैकेट ऑप्टिक वही एक्सेट। और ये साइड पे डीआरएक्स वर्सेस लाउड है। एक भी ईयू टीम अपर ब्रैकेट में नहीं है। काश डीआरएक्स हरा दे लाउड को, मजा आ जाएगा है ना। मेरे को भी वही लग रहा है। पर डीआरएक्स एकदम मतलब ना एकदम उम्मीद देती है, एकदम उम्मीद। और नहीं पर ये बार पहली बार प्लेऑफ में जीती भाई, ऐसा ना जीती है ऐसी। मैं तो खुद चाहता हूँ भाई जीत जाए एशियन टीम। लाउड का परमानेंट क्या है मैं भूल गया। लाउड का परमा बैन। लाउड बैन हेवन बैन करती है बट ये बार हेवन खेला पर्ल बैन कर रहे हैं। पर्ल खेला ना वो लोगों ने। नहीं खेला ऑप्टिक के सामने ग्रुप स्टेज खेला क्या? हाँ भाई बाकी दो टीम के हमने तो उन्होंने पर्ल बैन किया है। हाँ जेटा और लेवाइटन के सामने। हेवन हाँ खेला पर्ल में 13-3 खाए उन लोग रे। हाँ ऑप्टिक के सामने वो नो डुएलिस्ट ड्राफ्ट खेल रहे थे वो लोग। यार मिरर ड्राफ्ट में इतना वन साइड नहीं खा सकते भाई। वैंडल स्किन बदलो। कौन सा लगाए बोलो? गाया वेंजेंस लगाए। क्या बोलते हो गाइस? एक्सेट वर्सेस ऑप्टिक कौन जीतेगा? जो फॉर्म में एक्सेट चल रही है उस हिसाब से तो जीतना तो चाहिए वो लोग को। ट्री वाला हो इन्होंने सब मैप पे स्क्रीम को डुएलिस्ट रखा है। कैसे रे वो लोग ब्रीज जीत रहे तेरे फिनिक्स से ना। कैसे राउंड्स हारे वो लोग। विंग्स का करियर दिखा। हाय असेंडेंट में भी इतना नीचे गिर गया था विंग्स। गे मिल जा बाबा, मिल जा बाबा। तेरे को लग रहा है भाविन आज का ऑप्टिक का जो ड्राफ्ट था ब्रीज का वो प्रिपरेशन ड्राफ्ट था? ऑप्टिक तो मेरे को लगता है सोच के आती है ब्रीज तो वैसे भी जाने वाला है। मतलब लोग का इतना अच्छा नहीं है ना। हाँ तो जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज टीम जो मतलब मैं देखा नहीं फर्स्ट गेम
तो इसके लिए मैं बोल अबे वो लोग फनाटिक का ड्राफ्ट वो कर रहे थे बेसिकली, खेल रहे थे और काइंड ऑफ 2-3 चीजें ही थे जो सेम फनाटिक की छापी क्या? बोल सकता है तूने वो। लाउड बाइंड फ्रैक्चर नहीं खेलती, नहीं लाउड बाइंड खेलती है, फ्रैक्चर भी खेलती है, बट वो स्ट्रॉन्ग टीम जो है उनके सामने फ्रैक्चर बैन करती है। बाइंड और फ्रैक्चर खेलते हैं बट वो लोग का लाउड पिक क्या करेगी इन लोग के सामने? एसेंट पिक लाउड आइस बॉक्स पिक कर सकते हैं, एसेंट आइस बॉक्स। हां आइस बॉक्स भी कर सकती है, पर मुझे लग रहा है एसेंट विजन स्ट्राइकर बैन कर देगा ना खुद ही, क्योंकि बाकी सब मैप खेलेंगे वो लोग। क्यों बैन करेगा विजन स्ट्राइकर? ये इसके पहले भी वो लोग नहीं, पर वीएस ने अभी लास्ट क्या बैन किया इन लोग के सामने? फन प्लस फिनिक्स के सामने हां हेवन बैन किया था, ये हेवन बोलो सॉरी पर्ल बैन किया था। तो अगर विजन स्ट्राइकर पर्ल नहीं खेल रहा है तो वही बैन करेंगे वापस। बट वो लोगों ने ग्रुप स्टेज में बैन किया था वैसे हेवन असेंट सॉरी। तो दूसरी टीम पर्ल बैन करने वाली रहेगी ना? एक भी बार पर्ल खेले नहीं ना उन लोग ग्रुप्स में? पर नहीं, फ्यूरिया बैन पर्ल, डीआरएक्स बैन आइस बॉक्स, 100 थीव्स बैन हेवन, डीआरएक्स बैन पर्ल। तो लाउड के लिए अच्छा हो गया, पर्ल इन लोग बैन अगर कर दिए, या अगर डीआरएक्स भी डीड बन के नहीं बैन किया तो बात अलग है। पर्ल बैन होता है तो ये लोग फ्रैक्चर ही बैन करने वाले विजन स्ट्राइकर्स के सामने। हां अगर तू पहला है जो बैन करता है, बॉल्स ऑफ स्टील रख के दूसरा मैप बैन कर दे। असेंट या आइस बॉक्स में से एक चीज बैन होगा मेरे को। हाँ मेरे को भी लग रहा है कि असेंट बैन नहीं करेंगे लोग। ओवेन क्या हाल है बोन्स? सबसे हां बट भूल नहीं सकते वीएस का वो एक चीज भी है भाई, लोग कर देते ओपोनेंट का स्ट्रॉन्ग मैप बैन। बाइंड पिक हो सकता है एक्चुअली मालूम है वीएस का, मतलब ये लोग का विजन स्ट्राइकर्स वालों का बाइंड भी कर सकते हैं। बाइंड पिक हो सकता है, बैन नहीं। हाँ वही बोल रहा हूँ, बाइंड भी पिक कर सकते हैं। स्लॉट होगा नेक्स्ट तो बता। हाँ ठीक है बोल भाई। आप कब से स्पोर्ट्स में हो? 2012 से। स्पोर्ट्स मतलब क्या कैफेज में से खेल रहा था 11 में, 2011 से। वाह मैच फाउंड, लेट्स गो। क्या खेल रहे हो? मेरा तो वाइट स्क्रीन है। फ्रैक्चर ये शालू आया है क्या? आ गया रहेगा 5 मिनट बोला 10 मिनट। इसको अनम्यूट करना है, वॉशरूम हो क्या है? कोई हावर पे रखो ना। मस्ती है। क्या खेल रहे भीम? क्या खेल रहा हूँ देख इजी और कप्पा तुम लोग डुलिस्ट खेलो, शालू चेंबर खेल लेगा। तो भाई आप क्या रेस खेलोगे? रेस या तो रेस खेलो, रेस फन, बहुत फन है। साइड मार मार के मारूंगा। शालू ले ले, चेंबर ले ले। पिक मत करना है, कर आ रहा हूँ मैं भी। नहीं कर रहा हूँ। भाविन भी एफके है ना। Even if I go out, I'll go out with a bang. Just promise you'll dance at my funeral, okay?
क्लासिक दे भाविन तेरा। I'm out of here. सब सामान लिया है मैंने। Go, go, go. मैं एमिन उधर से स्टन कर रहा हूँ, ये नियॉन आएगा डैश करके। Gotta go. 2 स्मोक मॉली है मेरे पास। Go, go, एमिन go. में ये स्ट्रेट हाँ स्मोक करना, मैं स्ट्रेट लाइन स्टन कर रहा हूँ। इधर क्लियर है। मार्केट भी कोई दिख नहीं रहा। Gotcha. 38. Flash out. ड्रॉप स्मोक कर रहा हूँ। कर जल्दी कर। दरवाजा खुला। 38 है। डोर कोई नहीं है। हां तेरे को पीछे क्या पीछे भाग रहे हैं शायद। ट्रिप है। कोई है क्या एमिन? नहीं अभी तक नहीं था, बट रोब्स भी ले सकते हैं। तो रस्सी लेके भाग के जाना, मैं इधर रुक रहा हूँ डोर पे। भाग के जा, हैकर आवाज कर भाग के जाने का। आर्केड देख रहा हूँ। यार सुनना, जाके ड्रॉप देख जा छोड़। नहीं ड्रॉप मत देख, मैं देख दोनों उधर चलेगा। ए प्लांट कर रहा है। एमेन से वॉक इन किए उन लोग। सैंड आया एक। सिटी आ सकता है। 30 टैग नियॉन। 30 26 30 वो 1 एचपी है नियॉन। 1 एचपी हां। Not your best. Nice. Hey boss, please Mumbai today. अरे साहिल भाई welcome. Did everyone see that? इसी भाई डब्बा डाल दियो क्या? Great. The plan is. मैं उधर 2 लोग को मार रहा हूँ बैठ के, दोनों को मार दिया। हाँ दोनों को मैंने ही डैमेज दिया, मैंने ही मारा। देख रहा हूँ इसी भाई कर क्या रहा है उधर। अरे मैं सोचा स्टन मार के पिक करूँ, स्टन मार के पिक किया, नियॉन छुपा अंदर और फिर मेरे को दे दिया उसने। और खेल रहा हूँ जज। मैंने भी 3 गोली हगा। वो अलग बात है। ठीक है। स्टन कर रहा हूँ मैं। नियॉन आया ही नहीं उन लोग का, मालूम है आगे। हाँ डर गया वो एक्चुअली। या तो वो आके स्टन होके पीछे चला गया। नहीं वो नहीं हुआ। फर्स्ट स्पेल होल्ड किया है मैंने, फ्लैश आया, फर्स्ट स्पेल डाल दूंगा। और मैं स्टन डालूंगा। आके तुम लोग का ड्रॉप बीमेन नहीं है। आगे नहीं आया कोई क्रॉस। पीछे जाने का साउंड आया, इधर है और एक बैठा हुआ है। बीमेन स्मोक कर रहा हूँ। ए वाला पीछे गया नियॉन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ तेरे को अभी के लिए, वॉक करके ही जा रहा हूँ। आया रेना आगे आ रहा है। स्मोक में स्पैम मार दिया। चेंबर 50 टैग। दिया है रे। सीटी पुश किया। पेंचो टावर क्यों नहीं आ रहा है लोग? मोड डाला ना तो चिल कर बीमेन पे 2 बंदे मार। चेंबर 50 टैग था। एक डिफॉल्ट है। रुक जा रिलोड कर रहा हूँ। एक करो डिफ्यूज करो। Like you could stop me. Fight till the end. I'm out of here. अपना इको हारना तो नेसेसरी है ना। अरे इको नहीं हारेंगे तो फिर गेम कैसे जीतेंगे? थोड़ा गेम ही नहीं जीतते हैं उसके बाद। मेरे को हल्का लग रहा है आर्केन। हाँ Kick them out. I don't do visitors. मैं स्टन होल्ड कर रहा हूँ लेफ्ट साइड, अगर आगे आएगा तो स्टन करता हूँ। ये स्मोक आए वाकेड। एमिन से आ रहे हैं क्या? सैंड और दोनों एमिन जाते हैं क्या भाविन भाई? पीछे से ट्रिप तोड़ दिया मैंने। तुम लोग सैंड लेके आओ ना गाइस, तुम लोग सैंड लेके आओ। ट्राई कर रहा हूँ। ट्रिप तोड़ा मैंने फ्लैश का। मैं भी आ रहा हूँ। मेरे पास ये है। सिटी कैर कर। मेरे पास स्टन है। एमिन स्मोक कर रहा हूँ मैं। नहीं हम लोग आ रहे हैं एमिन से। एमिन पर उसने ट्रिप तोड़ा तो बस स्पॉटेड। मैं हाँ ये स्टन करो सीधा लाइन। करो मैं रुका हूँ। किया सिटी कोई नहीं है। मैं भी स्टन किया उसने। नेट है मेरे पास। 2 फ्लैश कर रहा हूँ। 2 है अभी भी 2। एमिन है। 3 एमिन एक साइड।
तीनों एमेन ओह दोनों एमेन दोनों थोड़ा बहुत डिले कर दिया रीटेक कर। Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. शाबी इज वे I'm out of here. ब्रीच चलते आजा ना बीमेन पुश करते हैं ना एक्चुअली नियॉन स्टन आर्केड पुश करते चल कपा के पास भी अल्ट है मैं जज खेल रहा हूँ टावर पे तुम लोग को स्टन देता हूँ मैं बीमेन एक स्मोक डाल रहा हूँ ठीक है भाविन वो नियॉन ग्लाइड करके आ सकता है वो स्टन नहीं होएगा हां ठीक है ये रीटेक पे है भाई लोग हां डिमेन फ्लैश मैं अंडर पास जा रहा हूं राइट घुस गया टावर ऊपर एक डिफॉल्ट टावर सिटी आ गया नियॉन सिटी आ गया ब्रिम मेरे पीछे -50 नियॉन और ब्रिम टावर होता है टावर रुक जा मैं आ रहा हूँ अल्ट मारेगा वो अल्टी है Prepare for hellfire. आर्केड बावन ले सॉरी हैकर ले वो साला टावर से सिटी स्पॉन आ गया रे नियॉन भाई वो नियॉन ने ट्राई हार्ड पिक किया है मेरे को भी शर्म नहीं भाई वो ये रेना इधर से आ गया और वो भी दोनों साथ में आ गए तेरे को पुश करा अल्टी है मैं दूं क्या एक गन I need a drop. लेना है स्मोक गाइस मैं गन दे सकता हूं बट फिर नहीं आएगी मैं भी दे सकता हूँ एक गन मॉली नहीं हो गया ना इसके बाद अल्ट है ना इजी के पास ये स्टन कर दो चाहिए तो क्या हाँ कर रहा है कर रहा हैकर तू नहीं देखो स्मोक नहीं चाहिए ना पुश कर रहा है ना तू हाँ स्मोक मत कर इसको पुश करने दे कप्पा का अल्ट भी है तू एक खेल लो इसके साथ Behind me. हाँ जा रहा हूँ एक मैं साइड से ही लगा रहा हूं रे वो नियॉन स्टन पिन करके आएगा Trevor. एमेन डोर लिया मेरे बॉल कैच दे रहा हूँ सिटी जा रहा है अरे व्हाट द फक मारा मेरे को स्पाइक ड्रॉप है मेरे भाई स्पाइक ड्रॉप है गाइस कप्पा पे स्पाइक ड्रॉप है एक साइड एक मैं आ रहा हूँ कप्पा तेरे पास अल्टी मार सकता हूँ मैं साइड नहीं मैं जा रहा हूँ तेरे पास गन रख हाथ में भाई सिटी दिखा शायद सिटी दिखा एक विमेन नहीं एक एमेन एक बीमेन माइक्रोब्स के इधर था चला गया रे इसको मालूम नहीं तू किधर है Open up the sky. साइड डिफॉल्ट पे स्टन क्या हैकर मेरे को लगा तेरे को समझा मैं इनका एमेन से कौन आया था Pay attention. I learned something. तो ये स्पाइक लेके ऐसे कौन आता है अच्छा रेना नियॉन बाय कर लो बाय कर रहे हैं क्या मेरा हां नेक्स्ट बाय करता हूं बाय करो बाय करो नहीं दो स्मोक का मॉली है मेरे पास एमएन में नियॉन को वापस स्टन करूंगा बता शॉट लेके बैठ जाता हूं आगे That brimstone can't stop me. ऐसा स्टन कर रहा ताकि नियॉन Right there. स्टन हो जाए You want to play? Let's play. दो लोग तेरे सामने जा हैकर लेफ्ट में ये दिखा क्या Blinding. डोर मेरा मॉली से ओपन हुआ था गन किधर है एमएन आगे बहुत Grenade. आ रहे हैं Clearing out. अल्टी है चिल करो पर गया वो कहता है दो लास्ट साइड मेरे को आगे जाने दे मेरे पास स्टन है कपा 3 सेकंड में 2 सेकंड 1 सेकंड कर रहा हूं किया राइट क्या बात है गन ले लो Come on, get me in the line of fire. Go, go. नियॉन स्टन था ना वो हां स्टन था परफेक्ट था
टॉपर ने मार दिया। स्टन कर रहा हूँ मैं, नेरा नॉर्मल वाला कर रहा हूँ। मैं स्टन करके निकल रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ प्रेशर नहीं हुआ तो। कपा सुन ना, मैं टावर ही खेल रहा हूँ, बीमेन स्मोक कर रहा हूँ, ठीक है? Gotta go. बॉक्स खेल रहा हूँ। बीमेन टाइट आया नहीं। एक और निकला मरा। एक एमिन से अभी गया सिर्फ अंडा देख रहा हूँ। फ्लैश कर रहा हूँ, एक स्मोक किया मैंने। एक अंडा क्या गलत टाइम। अंडरपास और एक बीमेन था, लेट आएगा। नहीं देखा इजी। अच्छा हुआ मैं टावर जा रहा हूँ। ले तो फोन कर लेते। पीछे जा रहे हैं लोग। एक मरा। ये भी एमिन वाला था ये। दोनों खाया। भाविन भाई झाड़ दो जल्दी। ओ मैं भाविन भाई का ऐसा देखने चाहता था मेरे से मांग सकता है एक जन ड्रॉप। मैक्स मनी मेरे पास। बोल रहा था। ले कप्पा। लेट्स गो गाइस, हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नाइस राउंड रे भाविन। थैंक यू ब्रो। पैसा कम है उन लोग के पास। एमेन दे रहा हूं मैं। एक ही अल्टी है, रेना अल्टी है, यूजलेस है। टेक हिम। एक बाय कर सकता है ब्रीच वैंडल हीरो बनने के लिए। I'm out of here. करो, किधर बैठा रहता है इधर। रेना बीमेन सुन ना, तीनों आर्केड फाइट करते हैं। आजा हैकर। मैंने आप लगाई है, ये छुपना है तो छुप जा। हां छुपा ही हूं। अंडरपास जा रहा हूं। जा अंडरपास एक। मैं आर्केड पुश कर रहा हूं। हां तू कर दे, मैं बी साइड होल्ड कर रहा हूं। लगाया एमेन। अंडरपास डेड। रेना बीमेन था लेकिन फॉल बैक। एमेन रेना मैं और प्लेयर। रेना एमेन। कप्पा मैं आ रहा हूं तेरे साथ। आजा दोनों एमेन से देखेगा। और मैं क्या बीमेन? अच्छा ले लिया। एम कर रहा है। इजी भाई। हां आप चलाओ। Spike spotted. No one beats my firepower. देखा क्या तूने भी? Go. नहीं उससे ना हो पाए ना, इसलिए। अरे भाई मैंने नहीं हगाया भाई। अच्छा वो एक की 2-3 राउंड से तू ही हगा रहा है ना, तो शक सीधे तेरे पे जाता है। अच्छा भाई क्योंकि जिस हिसाब से मैं इधर खड़ा था ना। इजी एक शॉटी भी ले ले खुद के लिए, आएंगे मुंह पे। ब्रीच अल्टिया। ब्रीच नहीं ब्रीम मत। बीमेन स्मोक कर रहा हूं मैं। एमेन स्मोक किया ठीक है। मैं टावर जा रहा हूँ। जा बहुत लेट अंडरपास आता है। मैं बूमबॉट करूंगा थोड़ी देर में। Bomb buddy out. स्मोक कर रहा हूं। साइड खेल लेना मेरे साथ। इधर खेल। ब्रिम अल्टी है रे। अच्छा ओके। हां एक्चुअली तू भी टावर मत खेल, साइड के अंदर खेल सकता है तो खेल। टावर स्मोक है। घुस गया साइड। ओ भाई ड्रॉप पे वो पता नहीं कुछ कर क्या है। बॉल डाल क्या है? बेंच इधर ट्रिप लगाया चोदू ने। बट रोप पकड़ के उधर आ रहा हूं। सिटी पुश देख रहा हूं मैं। एमेन है। हां एमेन स्टन दे सकता है। हां दे सकता हूं कप्पा कर। जा किया। राइट में भी हो सकता है। हैकर दरवाजा खोलना। आ रहा कप्पा आगे। रुक जा। फ्लैश कर रहे। फ्लैश किया। और एक साइड है नीचे। फक वर्थलेस। नॉट साइड। हमारे भाई कप्पा भाई जो भी आप लोग बुड्ढा बोलते हो वो लड़ लेते। हालांकि ये ले ऑफ कौन करेगा? मैं बीमेन ऑफ लगा रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा है तो लगा किसी को नहीं करना है तो दे। ये ले कप्पा भाई क्या मारा है वो? कौन सा बीमेन लगा दे। और बीमेन अर्ली स्मोक करना बंद कर। फ्री पिक से रे इन लोग आगे आएंगे। ब्रीच अल्ट है ये राउंड। हां ठीक है। ड्रॉप तो नहीं।
तुम लोग दोनों ड्रॉप खेलो ना, मैं एमएन स्टन कर रहा हूँ। हैकर से स्मोक कर दे एमएन पे और ड्रॉप खेल इसके बाद इजी के साथ। इजी ड्रॉप जा। Smoke's down. Trevor. स्टन आ गया वो, स्टन आ गया वो। डबल सैंड। नाइस। अरे एक और नीचे अल्टेड है वो, राइट लेफ्ट में। नाइस, क्या बात है। एक एमएन निकला। यही देख रहा एमएन हूं। से साइड इन होगा। हॉपर को पकड़ा है गप्पा ने। वापस एमएन रीस्मोक करो। नहीं इसके स्मोक कर इधर। स्टैंड स्पेस अखिल को भी कर। Launching smoke. तेरा डोर खुला क्रॉस है मेरे पास। Teleport's ready. मेरे पे लगा के बैठ। लास्ट साइड था। तेरा साइड क्रॉस है मेरे पास। स्मोक में हो सकता है। रुप्स स्पाइक लिया उसने। काउंट ऐसा दिया था। नो टैग है, मैंने कुछ टैग नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया कुछ भी। Teleport's ready. एक मॉली हो सकता है उसके पास मैक्स। साला वहां। अबे वो तेरे को पता है कब हैकर मेरे नीचे से साउंड थी भाई अपन सब राइफल ही करते चलेगा। कप्पा बेचारा रेस पे ऑफ करा रहे उसको। ड्रॉप मांग कप्पा, ड्रॉप मांग। इजी भाई से तो नहीं हो रहा है। इजी भाई अरे मैंने मारा यार, ऐसा मत करो। अरे मजाक कर रहा हूँ। कप्पा देखो स्टन वन चाहिए क्या पुश करने? हां देना, आर्केड दे दे। हां देता। सीधा लाइन नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये आ रहा है ना। हां दे सीधा लाइन दे। नियॉन आएगा ना तू मार दे चेंबर। आ रहा हूं, पिक कर रहा हूं सीधा। रिमेन स्टन किया उसने। Flash out. स्पाइक ड्रॉप आउटसाइड। मत कर Off your feet. राइट आ गया। रीच अल्ट है। एक कैंटीन भी है। लेना रीच अल्ट का भूल गया मैं। Go. No point saving. Spend it all. चलो ये राउंड निकालते। चलो ना डिश और ये पुश करते ना आर्केड पूरा। करो कौन मैं आता हूं डिश। हाँ तू और इजी डिश चले जाओ। बीमेन पे ट्रैप लगा दे तू। आर्केड जाओ। मैं बी साइड होल्ड कर रहा हूँ जज के साथ। Let's have some fun. बीकन देता हूँ मैं शालू। दे दे बाय। Stim beacon forever. ए घुस गया डायरेक्ट। मेरे पास अल्टी है राइट पे घुस गया। अभी एमएन जाते हैं, अभी फटाक से एमएन जाते हैं। हां रस्सी ले लो। कप्पा प्लांट का कॉल कर। अभी बोलता कॉल कर रहा है। लेफ्ट साइड का प्लांट था। मेरे पास एक फ्लैश है, एक फर्स्ट स्पेल है। डिफॉल्ट के लिए मॉली कर रहा हूं। मेरे को इधर फर्स्ट स्पेल मारूंगा। रुक जा चिल कर। अंदर प्लांट है। अंदर प्लांट है। फ्लैश दे रहा हूं। Flash out. Prepare for hellfire. नाइस। रेना साइड, नियॉन साइड। स्टन है मेरे पास, स्टन है। करो ऊपर स्टन किया। राइट साइड 80 प्लांट नहीं है उसका। 80 डैमेज है उसको। All the charges. क्या बात है। ये ड्यूली जात में रहता है, ये खुद ही पिक करने का। इसके लिए मैं आराम से गया। मैं बोला ये खुद ही पिक करेगा। कप्पा सैचल मार के निकल रहा। सैचल का वो लगा मेरे को। मैं 100 डैमेज खा लिया अल्ट के अंदर। These guns we use are okay. देख रहे हो मेरे से डूले I'm out of here. No offense. सपोर्ट का नहीं बोलेगा। I'm out of here.
सब कुछ है मेरे पास। सपोर्ट वो नहीं, भाभी ने किल की बात नहीं कर रहा, मैं 12 डेथ्स की बात कर रहा हूं। अच्छा 12 डेथ्स की। तू बेच नहीं किया ना मैंने किसी को। क्या करना है? क्या आर्केड से स्प्लिट करते कप्पा, तू और नियॉन आ जा, नियॉन बीमेन आ जा कप्पा, तू मेरे साथ आर्केड आ जा, तू और नियॉन और हैकर आ जाएंगे बीमेन। कोई भी ट्रिप लगा के आ रहा हूं। स्पाइक दे के जा, उसको स्पाइक दे दे, उसको स्पाइक दे, विम को स्पाइक दे पहले। ये ले इधर 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 ये करो, आजा स्टन। इज्जत में जाना है, भाग के जाना है। इज्जत में आते हैं। अच्छा तो फिर लो जा रहा हूं मैं। हां तुम लोग खुद का करो। मैं टीपी लगा के आउट हो जाऊंगा। टीपी आगे कर रहा हूं। कूद गया मैं। सिटी स्टन कर रहा हूं, फाइट कर सकते हैं। एमएन पुश राइट में है, राइट में। ओ भाई वो स्टन में मार दिया क्या? मेरे को 4 गोली कैसे मारा वो? भाई अरे उसके पीछे पड़ गई। कप्पा की पेट के मुझे पीछे पहले मैं मारा हूं। सुनना फोर्स करते हैं और इधर रुकते हैं बीमेन पे, वो आएगा उसको मारते हैं और सीधा घुसते हैं। मैं सब सामान ले रहा हूं, तुम लोग ले लो। मेरे पास है सब यूके लास्ट राउंड तक। हां ये वेक्टर ले लो। वो तरफ ट्रैप लगा के आता आएगा। ये ले कप्पा सिंगर ले मेरे को शेरिफ दे दे। आराम से खेलो, पुश करेगा ही करेगा। इधर पुश आता है। एमएन आया, आ जाओ एमएन आ जाओ ना साथ में। पुश कर रहे हो। 3-4 आ जाओ मारेंगे इसको। इसको फ्लैश किया। ओ बात फ्लैश आउट। सब है इधर, पीछे हो जाओ। अरे सब है तो हो जाओ ना पीछे। इसी बड़वे बोलना। मैंने बोला उतना। ठीक है तीनों बोला। ये क्या गेम चल रहा है भाई? 5 मैन। They take 5 man way too seriously. सुनना, आपस फोर्स करते हैं, आपस राउंड निकलेगा, वो लोग ही आएंगे अपने पास, पर अपन करना है। आराम से। अरे वो लोग ही आएंगे भाई मुंह पे, देख अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे भाई। बीमेन स्टन मत करो। आया क्या? या स्टन। आ जाओ फाइट करते हैं। फ्लैश दे रहा हूं। अंदर क्या? एक राइट में। राइट फ्लैश कर रहा हूं। एक और नाइस ट्राई। फैंटम है भाविन इधर। अननोन। दोनों साइड स्मोक किया उसने। तेरा एक और बल्टी है। Clearing out. Spike planted. Let's go. Always got to overprove. अरे लग गया मेरे को लगा वो सिटी में उड़ के जाएगा रे, तो मैं नहीं। My knees are gonna kill after this. Go. नर्स को देख के डर लगा। आ जाओ इमेन, फाइट करते हैं अभी। Gotta go. मैं माँ कसम हर बार ट्रेड अपने अगेंस्ट ही जा रहे हैं वो लोग। हाँ भाई कैसे कर रहा है फाइट? क्या कर रहे हो? ये उसका स्टन आने दे, उसके बाद मैं स्टन करता हूँ और जाते हैं। स्टिम्बिकन रेडी रखो। हाँ रेडी है।
आ जाओ, नहीं आ रहा स्टन, सीधा ये चलते, घुसो घुसो घुसो। Beacon here. क्या है कहीं तो बोल सकते। Bomb buddy out. ओ क्या मार दिया। साइड 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 मरा मरा। मॉली के बाजू से आ सकता है। प्लांटिंग फॉर एक ड्रॉप सैंड एक ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। दरवाजा खोलेगा, मैं डोर पे फर्स्ट कर। एक सैंड एक सिटी एक ड्रॉप। मैंने ये देख रहा हूँ हैकर हाइड रहे। सिटी देख रहा हूँ मैं। एक और एक ब्रीच भी है, ड्रॉप ब्रीच ड्रॉप। एक सैंड सैंड आउट है। बाय बाय। लास्ट है। फ्लैश आउट। ड्रॉप ड्रॉप। राइट में ही है। एक फ्लैश है। वो जब नीचे को देगा तब मैं मारूंगा। नहीं आ रहा। मेरा नहीं है। किसने भेजा? Listen up. I'm out of here. अच्छा ओके, थैंक यू। Go, go, go. भाविन ड्रॉप दे सकता है? कैसे दूं भाई? I'm out of here. नहीं मैं आ जाओ ना, बी जलते हैं सीधा, बी रश। जी तू दे दे मेरे को, अल्टी है तेरे पास। नहीं अगर वो बीमेन पुश किए ना, सीधा ये चलो। अगर बीमेन पे कुछ नहीं आया, अरे उसने स्टन डाला, मैं सीधा नेट डालने वाला हूं। हां ट्रिगन आएगा, उसको मारो। जो मैं इधर फ्लैश होल्ड कर रहा हूं। Shocking. स्मोक लाइन अप कर रहा हूं। दो आर्केड स्टन किया मैं। You want to play? Let's play. चल चार गए। चेंबर अकेला ऑफ करता रहेगा इधर। नहीं, चेंबर उधर दिखा था आर्केड पे। तो ये ब्रीच अकेला रहेगा, ब्रीच अकेला रहेगा। ब्रीच भी था। उधर है ना। तो ने अकेला। मैं टावर ले रहा हूं गाइस। Open up the sky. एक सिटी ब्लाइंडिंग फॉर एम में। कर दे, मैं प्लान कर। सिटी 2-3 लोग हैं। Flash out. मेरा पोजीशन एक्सपेक्टेड नहीं। Clearing out. बॉल क्या है? साइड आ सकता है। फ्लैश तो क्या बात है जंपा भाई। Bringing up body bags. ओ माता रानी भाई, क्या You're not being shot at. You're doing something तेरी wrong. वैंडल देना। Does anyone have funds? Go, go, go. अल्ट तो है उसके पास भी, अल्ट तो है। वो वापस एमएन पुश करेगा मेरे को लग रहा है। थोड़ा रुकते हैं, नहीं किया तो फिर ये जाते। जिधर भी वो पुश किया ऑपोजिट साइड घुसो। सुन ना, मेरे पास स्पाइक मत रख, मैं सीधा पुश देख रहा हूं। जी पूजा मत प्लीज, मेरा एंगल दे। एमएन पे कुछ नहीं आया। सुन ना, बी पे स्टन डाल, नियॉन में फ्लैश देता हूं। आर्केड पुश। आ जाओ। इधर बी जाना है। हां, ए जाते। आर्केड 120 डैमेज। ब्रीच Beacon here. राइट चेक कर ले, राइट चेक। स्टन दे रहा हूं साइड। साइड एक। ओ सॉरी। ब्रीच के बाद अल्ट है। ब्रीच 5 HP 5। फ्लैंक देख रहा हूं। देखता है। स्मोक जाने वाले। मेरा ड्रॉप देख लो जब। ड्रॉप देख रहा हूं। एक नहीं, रोप शायद साउंड आ। Too late. रोप साउंड तो बोल रहा है ना तू? ड्रॉप फ्लैश कर रहा हूं। Flash out. स्टन होल्ड किया है। डैम्पिंग उड़ाना है घर में। अरे छोड़ भाई, गैस। आफ्टर शॉक ऊपर नीचे दोनों पड़ता है। हाँ, मैंने ये बार फेल किया, नहीं तो ऊपर नीचे दोनों पड़ता है। अल्टी है मेरे पे, मैं अल्टी पे खेल रहा हूं ये राउंड। हां, जॉस भी है। तुम लोग डिस से जाओ ना, चारों उधर जाओ। इधर ट्रैप लगा देना मिड में। मैं एमएन पे पूरा प्रेशर कर रहा हूं। डिस से वॉक करके आना है ना। हां, अगर उधर पुश किए तो चारों लोग मार दो। मारो या मरो। हां, मतलब अभी खपा जो हुआ। ये तेरे पे स्टन कह रहा, ब्रीच अल्टी ब्रिम अल्टी गाइस।
ओमेन आगे खेल रहे हैं लोग। जैसे तुम लोग आओगे मैं इधर अल्ट खींचने वाला हूँ। चेंबर ने सिटी टीपी किया। बी जा सकते ना अपन। नहीं आ जाओ, ये आ जाओ, भरोसा रख। ट्रिप रहेगा क्या? नहीं ओमेन क्लोज है उन लोग। अल्ट खींच रहा हूँ मैं, ओमेन क्लोज और सैंड। Prepare for hellfire. कप्पा अपना है। दे रहे हैं। Flush out. एक है पीछे। स्मोक पे जा रही है, स्मोक पे। और एक स्मोक, एक टावर। दोनों आ रहा हूँ। सिटी आ रहा है। क्या मार दिया। सिटी स्मोक आउट कर। क्या? साइड जा सकता है। जाने दे। हाँ साइड जा सकता है बट दरवाजा खोला, मैं स्टन करूंगा उसको। साइड पे टैप किया, दोनों जगह का स्टन है मेरा, रेडी है। ठीक है हाँ ठीक है। जाने दो। ओमेन का माउथ देख रहा हूँ भाविन, ये एंगल। Watching here. ए सिटी भाग रहा है सिटी। ठीक है Concussing. आप हो सकते हो। किसी पे भरोसा नहीं आ रहा था। अरे वो घूम गया ना इतना। हाँ। वो अल्ट खाया क्या नियॉन? नहीं वो नहीं खाया। मतलब मैं ऑलमोस्ट मार दिया जब वो छोड़ दिया। अगर तेरा क्वेश्चन ये रहता था ना कि अल्ट खाया क्या नियॉन, तो बोलता था जाओ ना इधर डायरेक्ट जाओ ना, डैश करके जाना, ग्लाइड करके स्टिम बीकन डाल अपना नियॉन अल्ट। दे रहा हूँ। मैं पहले फ्लैश दे रहा हूँ, फिर स्टन करूंगा। ओमेन दो फ्लैश दे रहा हूँ। पिछले वाला राउंड। I'm out of here. Blinding. Forever. Smoke down. फ्लैश दे रहा हूँ। Flash out. Launching smoke. हमें पता नहीं भाई होगा। और साइड में है ऊपर। Off your feet. मैं खाया नहीं अल्टी, खाया हूँ मैं। मर गए। तो निकलते क्या भाविन? भाग के जा पूरा पीछे, भाग के जा। भागता जा, आवाज कर। और तो जाके इधर मॉली कर दे बैक साइड। हाँ जो कर सकता है कर, उधर थोड़ा प्रेजेंस दिया इसने प्रेजेंस। वो गया, मैं राउंड घुमाता हूँ सिर्फ। पिक मिलने देख वॉक इन करने का देख। Concussing. Dead. रेना रोटेट हुआ। निकला ना निकला रेना। तो यही अभी ओए उधर तीनों आगे। प्लांट है भाई। तेरा ही प्लांट है भाविन। तो अपने लिए खेल ले। क्यों ना आ गया? अभी आ गया। तो साइड दो जन साइड है। तो साइड घुस गया। टैप किया। ब्रिम सिटी है तो साइड। तो मारो भाई। हैकर भाई वो स्मार्ट। हक दिया था मैंने फुटस्टेप। मैंने देखा था। Let's put them in the ground. Gotta go. ड्रॉप दे सकता हूँ। मैक्स मनी है सब पे भाई। They are so dead. क्या है अपने पास? हैकर भाई मेरे से मांग ले। चल बीरस करते हैं। हैकर का अल्ट टावर अल्ट खींच दे, सुकून। अगर ये सुनना मैं पार्केट लगा देगा। रिएक्शन आन दे। हाँ एक वो फैंटम तू स्टन कर दे फिर भी इजी। Right there. Watch out. I'm out of here. Stim beacon down. हाइट स्टन दिया, फ्लैश दे रहा हूँ। Blinding. मार्केट पुश हो सकता है। स्मोक्स भाई किया प्लांट कर दे। अपन अंडरपास देख ले। लोग ने आगे स्मोक किया। साइड आगे रहेंगे। कैंटीन कुछ देख। हां साइड घुस रहे। शॉट भी मार दिया मेरे को। प्लांट ये वाला है ना? तेरा प्लांट है, बॉक्स वाला प्लांट है। स्टन वो आफ्टर शॉक लगता है। अरे हां कसम। Flash out. भाई आफ्टर शॉक ही नहीं जा रहा है, अभी दिख ही नहीं रहा है भाई। अरे जाता है। अरे मेरे को दिख मौज था ना, उधर से एम करना रहता है। कोई नहीं थोड़ा ओवरीज
अरे वो जज वाले को मार देता है कोई। Let's go guys, like subscribe ठोक दो। I'm out of here. Gotta go. भाई मैं तो इधर ऑप का पैसा नहीं है अपने उन लोगों का ऑप नहीं है ना एमएन उसके स्टन के बाद वॉक पिक करते हैं अगर स्टन नहीं आया तो वॉक पिक करते हैं। नियॉन नियॉन है। हाँ नियॉन है मैंने सुना है। रुक क्या स्मोक में बैठ मैं ये देख रहा हूँ। Watching here. अरे मार ये बिना दरवाजा खोले इतना फास्ट कैसे आ रहा है कैंटीन से। मैंने ट्रिप तोड़ा उसका। विम सिटी में सिटी में आ गया। ड्रॉप पे स्मोक किया है। अरे हैकर कॉल सुन रहा है क्या अपना बंदा सिटी आ गया है। हाँ too slow और ड्रिवन One down. 120 हील हो गया 2 सिटी। प्रिम था इधर। I have this. को स्मोक में आके मार दिया रे। तो यू हर्ट टू गाइस तेरा बंदा सिटी है ना। Super easy to pick off. मैं ड्रॉप दे सकता हूँ कपा तू आर्केड से हल्ड लेके आ जा मेरे साथ और तीनों बीमेन से आ जाओ। ड्रॉप मांग कपा। Can I get a drop? खत्म करो गाइस गेम। और बीमेन अगर पुश हो रहा है ना तो हम लोग को पहले आने दो चाहिए तो तुम लोग रस्सी लेके आ जाओ या ए चले जाओ। मेरे को पनिश नहीं कर सकते। मैंने स्टन होल्ड किया कप्पा अगर वो आया ग्लाइड करता हुआ तो मैं स्टन मैं वो लोग का स्टन नहीं खा रहा हूं। You want to play? Let's play. Blinding. ओए ओपन सिटी ठीक है। स्टन किया सिटी में कर रहा हूं मरा। प्रिम इधर है। ब्रिज का एक गैप है। स्मोक में गैप है और ऑपर है उधर। मेरे पास राइट साइड गया इधर ऊपर है। गया। जस्ट कैंटीन एक ब्रिज 120 है चेंबर। सिटी अल्ट खींच रहा हूं। घुस जा नियॉन घुस जा सिटी। Let's go ready. दोनों सिटी 120 डैमेज चेंबर। मेरा 10 HP भाविन। कॉर्नर प्लांट है ना मैं बीमेन से आ रहा हूं मेरे पास फर्स्ट पेल है। हां ठीक है। एक को मार देगा। उसको पता भी नहीं है ये अंदर बैठा है अभी भी। हेल्प के लिए फ्लैश वैश दे सकते हैं। हां एक फ्लैश डाल रहा हूं। फ्लैश लो। जिंदा है बस जिंदा रहने का फिर तो आफ्टर शॉक के लिए खेल। साइड स्लो है साइड पे स्लो है। मार्क करो टैप करेगा तो भाग नहीं पाएगा। क्या बात है जी। The fight is over. भाई I just warmed up. मजा आ गया। बहुत मारामारी हुआ पर इनमें जीत के मजा आता है। मारामारी क्या तूने बहुत ज्यादा मार दी है भाई। हाँ भाई मेरा कवर कर लिया पूरा। जो इजी बोलता है ना वो मेरे को जो डायलॉग वही सेम डायलॉग तेरे लेता है इधर। क्या बाप रे नहीं रे गंदे हैकर वो। भाई ये लोग कौन थे भाई? They were having fun, a lot of fun. भाई भूख लगी थी और कोई तो मेरे रोल आके देके गया अच्छी बात है। पानी लेकर आया मैं एक मिनट। तूने एंट्री तो लिए है भाई। भाई मैं वेट थोड़ी करता हूँ। सिर्फ फर्स्ट किल उसके बाद मौत। इजी ने कितने एंट्री लिया है? 5। ओ भाई और एक राउंड मेरे को नियॉन ने आके स्मोक में मार दिया पता है। मैं हिल ही गया पूरा। मैं और तो रेडी तो बैठे थे पर वो आके धर दिया। अभी क्या करें? वेल प्लेड बट थैंक यू ब्रो। गाइस जो भी नया है लाइक सब्सक्राइब ठोको। आप वेज हो नहीं मैं एग रोल खा रहा हूँ। एक्चुअली मालूम है इजी वो पिस्टल वाला राउंड के बाद वाला जो एंटीक होता ना जो अपन ने फोर्स किया था। हाँ बोल वो राउंड में अपने को वाले चुपचाप स्पेक्टर उठा के ना बी भाग जाना चाहिए था। हाँ फाइट करना। हाँ फाइट करने का गरज ही नहीं था अपने को। हाँ वो तो ऑब्वियस रहेगा। फुल मच जाती है ब्रो। नहीं तेरे को देख के मैं भी घुस गया अंदर।
अभी मेरे को 3 दिख गए थे, मैंने बोला भी 3 और मैं खुद ही चला गया मारने ना फ्लैश। मैंने 2 फ्लैश देखा ना, इसलिए मैं चला गया। आगे भागा ना, वो आगे भागा, मैं तेरे पीछे भाग गया। मैं बोला कि चल अभी भाग ही लेते, इजी आगे गए तो ट्रेड तो करना है। और मेरे को तो पता नहीं क्या मारा उसने। वो लोग फर्स्ट फ्लैश में मेरे को पूरा फ्लैश दिखे तो मैं गया स्लाइड मार के मारने, और तभी भावे ने सेकंड फ्लैश भी कर दिया। और वो लोग फ्लैश होने के बदले वो लोग फ्लैश नहीं हुए, पता नहीं कैसे। परफेक्ट फ्लैश था वो। अनलकी। तो मेरे को वो चेंबर ने मार दिया। फिर से अपने को 15 मिनट लगे ना। हाँ आई गेस 5-10 मिनट में इन लोग कर रहे क्या सर्च? अरे खाते खाते मत बोल रहे। हैकर ब्रो। भाई तेरे चैट में देखिए, बंदे ने एक चीज जो लिखा है ना भाविन, के वाइपर के मॉली के ऊपर खुद का मॉली डाल दिया तो मॉली कैंसिल होता है। ये मैंने भी देखा आज, मालूम है क्या हो रहा है? हाँ, वाइपर मॉली के ऊपर तो खुद का मॉली डालेगा ना तो वाइपर का मॉली से तेरे को बर्न नहीं होता, तेरे मॉली से होता है तेरे को। ओ भाई किसने तो ट्विटर पे डाला था, पता नहीं किसका, तो देखा था मैंने ये। और ब्रिम मॉली पे वाइपर मॉली डाला तो मौत। कैसा सवाल पूछता है रे इजी? पूछ रहा हूँ भाई कुछ। अरे कुछ अबे तूने अभी बताया कुछ तो पूछ रहा था अच्छे से, लेकिन मैं अच्छे से बात ही नहीं करना किसी को। तो किधर आके अच्छे से सवाल पूछ रहा है भाई? क्या करूँ भाई? ब्रिम मॉली पे वाइपर मॉली डाला तो अरे भाई अरेबियन चिलीज अच्छा है कि चारकोल लीड्स? चारकोल लीड्स मत मंगा भाई, अरेबियन चिलीज तो भी ठीक है। तोड़ दिया ना बेचारे को भाई, हैकर भाई फॉर्म में पूरे। भाई इतने दिन के बाद एक गेम जीता हो ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट टूर्नी कब है? द नेशन वांट्स टू नो। भाई हमें ही नहीं पता नेक्स्ट टूर्नी कब है तो नेशन को कैसे बताएं? गाइस जो भी नया है लाइक सब्सक्राइब ठोको यार, अपने आप को मत रोको, सीधा लाइक और सब्सक्राइब। और 50-60 रुपए एक्स्ट्रा है तो मेंबरशिप भी ले लो। देख रहे हो, हैकर भाई की बात सुनो। हैकर भाई इज अ वेरी वाइज मैन। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। भाई मैंने कभी नहीं बोला वाइज नहीं है, गेम के अंदर ओवर वाइज है पर गेम के बाहर वाइज। हाँ वो नशा अलग है गाइस। ब्लीड वाले का क्या हुआ? कैंसिल हो गया आई थिंक इवेंट ही तो। क्रायो सेल आज एनए वाला फॉर्म दिखाया रे, बहुत मारा। वैसे एनए जो ऑनलाइन मारता है वो आज वैसे ही खेला वो। लेट्स गो गाइस, गेम मिल गया। हाँ मतलब मारना भी चाहिए भाई वो एक्चुअली। हाँ मैं एक सेकंड हाथ धो के आएगा, इस चिपचिपा है। मैं क्या खेल रहे हो? मैं क्यों खेलता हूँ? चेक नहीं तपा भाई आप तो सोवाई खेलोगे। अरे वाइट स्क्रीन है भाई इधर। प्लीज बाइंड वाला वाइट स्क्रीन था भाई। तेरे को विम अगर सोवा खेलना है तो मैं ये खेलूं। नहीं खेल लूंगा चेंबर आईफोन चिप।
I dash around a lot, but I promise I'm looking out for y'all. Take them out while they're busy with me. Reloading. बी पे वॉल दे दिया है, इस पे खेल रहा हूँ मैं, स्मोक डाल रहा हूँ इधर माउस पे, ठीक है? चालू वॉल बी पे कुछ आएगा तो मैं चाकू डाल दूंगा, बताओ मेरे को सिर्फ। ठीक है। कौन गंदा होने वाला है? ए पे एक साउंड। बी वॉल। सोवा और केओ सप्रेस गेट डैश। नाइस रे, नाइस रे। हां घुस के बैक साइड ऑलरेडी। वॉल अप कर दो। लास्ट कैन। ये दो पोजीशन लास्ट। चेंबर में था गाइस। गॉड साइड लास्ट प्लांटर। दो जान एक्सेसिटी राइट में -25। ए बीमेन नहीं अपना बंदा। ओ हां बीमेन अपने बंदे ने फेंका। वो अलग चूती है, वो मॉली डाल रहे हैं, 35 सेकंड बचे। ले मैं कर ले हैकर कर ले। हां कप्पा के वॉल अप कर देता हैकर। अरे मैं भाग के आ रहा था ना, मैंने मिस्टेक कर दिया। विम डिगल लेना मेरे को, मैं मार्शल ले रहा हूं। दे रहा हूं वापस, सेम वॉल दे रहा हूं, ठीक है? सरप्राइज भी वो दो लोग हुए जो ऑलरेडी यूटिल डाल चुके थे, मजा नहीं आया। और ये लोग फुल टीम में क्या भाई, पीछे से क्यों का चाकू हवा से उड़ के आ रहा है पूरा। हो सकता है स्मोक नहीं है मेरे पास। जेलसिस खेल रहा हूं मैं। जेलसिस भाई कर रहा हूं। बी वॉल आई। वापस बीरशी है ना। बाय आगे मैं किया वो लोगों ने। भाई किया बाय एल्बो से रीटेक करोगे क्या? बैक साइड एक मिड चेंबर मिड। वॉल बचा के रख। सुन ना, ये वॉल अप करेगा ना, मैं इधर नेड करूंगा, राइट से जाएंगे। वॉल अप रेडी है? वॉल अप कर रहा है। एक इधर एक दोनों साइड ठीक है, लेफ्ट पे एक सामने। फ्लैश करो ना। बैक अप पीछे बैक साइड। ओ मरा नहीं। भाई ये लो बैक तरफ Keep kicking them down. पक्का के पास राइफल आ सकता है, ले लो भाई। Gun here. पीछे ले जा शालू। बी पे ट्रैप लगा रहा हूं मैं। नहीं हां बी पे लगा और रीटेक पे लगा। मैं अर्ली चाकू डाल रहा हूं एल्बो पे अभी। कर दे लोगन चाकू भागा। वाइपर है। मिड डबल डोर क्लोज। यार एक मिड और आ रहा है। एक हॉल्स, दो एमएन। उतरा के है। हैकर भाई बंदे को आने तो दो। स्काउट को देख के क्या लेफ्ट, वो भी लेफ्ट पे शूट कर रहा है। किधर भाई हैकर की टाइट थी। विम ऑफ देना, मैं तेरे को गन देता हूं। फिर तू ऑफ नहीं कर रहा तो अबे मैंने वो सुबह पे बहुत जल्दी मार दिया बुलेट्स। तू अगर राइट में छुपता तो फ्रीक। भाई लगा रहा हूं बी आए ना तो मैं तेरे को हेल्प नहीं कर सकता। हां तो मैं अर्ली चाकू डाल देता हूं। Shutting them down. बी वॉल रिकॉन बी चार सप्रेस सोवा वाइपर का वॉल डाउन होने वाला है उन लोग के। घुस गए वॉल अप किया। वॉल डाउन कर दे मैं बैक स्टेप वाले को। मैं मिड देख रहा हूं बस। एक क्लोज आया टनल्स और एक विंडो अंडर विंडो।
अभी बीमेन जा रहे हैं, वो ऑफ लेने जा रहे हैं बीमेन हैकर। तो ये केयर करना गाइस, अभी ऑफ ले सकते हैं। एक क्लोज है इधर, सिटी क्लोज। यार सेव कर भाई। हो गया वैसे। चालू क्वाड और ये टीपी खेलते जाना, ये और क्वाड। तू ही खेल, तेरी बॉल डाल के। बहुत लौड़ी बॉल है वो, मेरी मां चूत रही है। मैं भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। अबे वो इधर मेरे को हर बार दिख रहा है। हाँ तो वो कैसे खेलेगा उधर? अभी वो तू वॉल अप करता है, मैं इधर रहता हूँ, मेरे को दिखते नहीं है और वो लोग को पेल रहे हैं। छोड़। बी स्टैक करते हैं ना, ए उनके पास क्यों अल्ट है वैसे भी, बी स्टैक कर लेते हैं। डालू उसका रिकॉन किधर आ रहा है? वाले तोड़ देना प्लीज। इधर ही आता है या फिर पाइप्स पे आता है। ठीक है तो फाइट करने वाला। सीधे आ रहे हैं लोग। ए पे चाकू, हवा से चाकू जा रहे हैं। मिड रहता है, मिड पे रहेगा, चेंबर रहेगा। Welcome to my world. डैश विश किया वो लोगों ने। Shutting them down. और नोट कर रहा हूँ। और सामने खड़ा है। येलो क्लियर है। पुशिंग ऑरेंज लेफ्ट साइड गया इधर कप्पा। साइड से भी कर रहा है। Flash. लो क्या बात है? Flashbang. एक आइस में Throwing charge. निकला राइट में कॉर्नर। नहीं होता नाइस ट्राई। ऑफ था इधर। नाइस राउंड बेटा। हमारे भाई Sisova. Impressionnant. This man knows what he's doing. मैं भी खेलता हूँ। बी खेलो, 2 बी खेलो। मैं विम को एपिक, मैं विम का दे डोर खेलता हूँ, तुम लोग 2 बी खेल लो। खेलो। हाँ हैकर सुन हैकर, ये वन वे डाल। मिस के बाद ही डालूंगा। नहीं ये वन वे कर, ये और तू इधर बैठ जा। वन वे कर और उधर बैठ जा और रिकॉन तोड़ना बस। मैं एक मारूंगा और उसी पे अपना लेफ्ट साइड देखो। रिकॉन कर रहा हूँ फिर से मिड। बी पे वॉल आता तो बोलो, मैं इंस्टेंट चाकू डालता हूँ। रिकॉन तोड़ने के लिए खेल रहा हूँ इजी। विम क्यों अल्ट है उसके पास? हाँ मैं टीपी कर लूंगा इंस्टेंट। एल्बो ड्रोन कर रहा हूँ। बी रिकॉन है, बी वॉल है, बी आ रहे भाभी। तोड़ो। बड़ा एक रिकॉन फेल है। एफ देख रहा हूँ और दिया मेरे को। मैं वॉल के थ्रू फ्लैश करे, पता था रे आएगा। हट। लेफ्ट में हैकर, लेफ्ट में ऊपर। लास्ट है। ऑपर रहेगा। नाइफ यूज कर ले। आया मिड -80 नाइस। ओ भाई हैकर भाई चड्डी के ऊपर। ऑफ ले लेना, ऑफ ले ले इजी का। इधर है पिंक ऑफ किधर है? बैक साइड भाई नहीं है इधर, फैंटम है देख। होल्ड डाउन करके देख ले। और भाई उसका रिकॉन देख, एक तो इधर आता है या तो पाइप के ऊपर आता है। तोड़ दो वरना मेरे को एल्बो में मार देंगे वो लोग। फेल रिकॉन था। फेल नहीं था उसको स्कैन करना। Let's not complicate this. तेरी गांड मार रहा हूँ रिकॉन करके। They are so dead. जैसे कूदता हूँ मिड देख के स्कैन होता है रिकॉन से। मैं एल्बो शॉट ले रहा हूँ अभी। अबे मेरे को रिकॉन ऐसा अंदर की तरफ था। नहीं दिखेगा। सोवा अल्ट है, ये आ सकते हैं। तो एल्बो जा रहा है ना? हाँ। You want to play? Let's play. ए पे चाकू आ रहा है, ए आने वाले हैं। वाइपर मिड, वाइपर जेट मिड, डबल डोर आ रहे हैं। डबल डोर घुसे। बस अल्टी और बॉल दोनों हैं। ऊपर। एक साइड, एक ट्रिपल। और एक एमएन रहेगा। ए डोर कौन खेल रहा है?
एक डोर और एक लगाया ना टीपी लगाया उसने कहीं तो हॉल्स में रहेगा डाउन कर रहा हूं चिल कर एफ देख रहा हूं मैं राइट से इधर सामने लगा था ट्रिप नहीं है देखो देख ट्रिप लेफ्ट में वो कब किया इधर राइट में Toxin screen down. ओमेन चला ऑफर लगा है तेरे को का उसका बॉडी भाई 2v2 साथ में खेल लेते रहे मैं बोला भी तेरे को मैं घूम के आ रहा हूं रुक जा करके Watch them run when lit by my sonar. हाफ बाय करते हैं मैं हॉल्स पुश कर रहा हूं पापा हॉल्स का रिकॉन देना तुम लोग तीनों 20 टैग कर लो ना 20 टैग कर लो हाफ बाय कर लो मैं नहीं कर रहा हूं मैं डीगल पे खेल अगर कॉल स्मोक देना कर बैक ले साइड टीपी रश मार कर दूंगा रहे तो स्मोक और ये कर दे मॉली कर दे एटलीस्ट एक Don't worry, I'll keep them quiet. Revealing area. ए नाइफ हेड आ सकता है एक हॉल शॉप है ड्रोन है एक है एल्बो ये भाग रहा है अभी ट्वीट भाई कर सब कुछ करके आ रहे हैं इनके लोग पास क्रॉस है पहले से है उसका अच्छा है क्या -80 आगे आ रहे हैं लो आगे आए दो लोग लेफ्ट एक राइट एक इधर डोर पे है ये डोर था क्लोज आया स्टोर पे आया Okay, which gun to pick this time? चलो अभी निकालते हैं मिड पुश कर सकते रे इन लोग के सामने वर्कर को मार सकते हैं लास्ट टाइम भी पुश करके बैठ गया था मैं बॉल आ गया लोगड़ेगा मिड पुश करो साइड रिटेक पे खेल सकते हैं अपन इधर से जाता हूं ऑफ है मेरे पे हां वैसे हां तू जा बी वॉल आया बी लगा अल्ट यार चूतिया बनाने के लिए जल्दी डाला रहेगा वही होएगा आग रहा है अभी रश मिड पे फाइट डाउन दिखा ड्रोन मेन कोई सप्रेस मिड आया लेट और एक है दिखा एक ए Welcome to my world. सेट था मिड पे हां केयर करना मैं सेव कर रहा हूं सेव कर दे क्या किल मेरा तो हैकर एक सिंपल चीज करेगा सिर्फ ए पे ये वॉल डाल बेसिक और बी में स्मोक बस चलेगा हां मेरे पास आ जा इजी ऐसा मिड शॉट लिया मेरे को ऐसा बीमेन से दिख रहा है ऊपर से नाइफ जा रहा है रिकॉन जा रहा है रिबाउंड वाला दिख गया मेरे को 3 सामने वाले तो फुल ये खेल रहे हैं मिड पक्का टीम ही है केव मिड Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. डोर शॉट लेता हूं मैं तो मिड लगाता हूं मैं ऑफ दूं भी तेरे को तू मैं अल्टी पे खेल सकता हूं दे भाई तू एक जगह लगा दे मैं इधर से अपड्राफ्ट मार के मारता हूं फिर मिड वाले को तो खेलो ए पे भी खेलता हूं मैं डोर क्लोज स्मोक कर नहीं रहा है हूं मेरे पास नेक्स्ट राउंड ए राउंड स्मोक नहीं यूज कर रहा I won't lose you all again. पे वॉल इस पे ड्रोन आया तो सिर्फ तोड़ देना मेरे You का वॉल आया are powerless. Use that. कॉल अप किया मैंने एक और किया है ट्राई कर लेना तो थोड़ा मैं Nowhere to run! एक हॉल Can't use that. के हॉल डिंक 100 डैमेज चेंबर मेरे क्लोज 100 डैमेज है वो नो टैग
There they are. Door care. Everyone's motor functions okay? Actually, Bhavin उल्टा करना चाहिए. तू हैकर अल्ट यूज करना डायरेक्ट. तू अल्ट यूज करना ए पे. ए जा अल्ट यूज कर. वॉल मत डाल. मत डाल. आने दे. मेरे पास अल्ट है, मेरे पास नाइफ है सब. ऊपर बैठू की साइड पे बैठ जाओ. देखो जिधर बैठना है बैठ जा. वाइपर वॉल है. वो जैसे ही ड्रोन चालू करेगा मैं अल्ट. Let's get this done. Suppressor. कोई नहीं है. हिट कोई नहीं है. ड्रोन हमारा भी वाइपर. देख रहा हूं. ड्रोन है. वाइपर मर गया है यार. हिट देख रहा हूं. ये विमेन देख. मैं जा रहा हूं हॉल्स की तरफ. एक साइड आया. जा रहा हूं. बैक साइड है एक. मेरे अल्टी में अंदर है. बैक साइड है ब्रो. उधर प्लांट कर दे. उधर बैठा है. मैं मॉली करूंगा. एक और साइड चेंबर. अरे बोल रहा हूं तेरे को. अरे क्यों भी था. तो क्यों दिखा था. फ्लैश करो इधर. हरा लास्ट साइड है. साइड पे था चेंबर. फ्लैश करो. देख रहा हूं मैं. उसका टीपी टूटा. और देख दिखा. डिफॉल्ट. ऑफ है तो ले लो. हां Sorry for the late notice. तू चेंबर बोला क्या. मैं कॉल ही नहीं दिया एजेंट का. उसने बुलेट चलाया बस. आज मेरे को क्योंकि चेंबर को क्यों नहीं था. इसलिए मेरे को लगा क्यों ही था. ड्रॉप मांगो. हां मैं मांग रहा हूं. जिम का रैकर तू ये खेल ले. और एक दे सकता हूं गप्पा. Thanks. ये राउंड सिर्फ एक जन हॉल्स में इधर जाके बैठ जाओ ना. अगर ये रश हो रहा है ना तो आएगा हॉल्स. उसको मार दो. बाबा चाहिए तो बैठ जाओ उधर ही. दिवा हम लोग 3 हैकर ये आए तो ये रिटेक खेल सकते हैं. डबल से आके पेल लेंगे. सोलो को. हां देख रहा हूं मिड देख रहा हूं. You want to play? Let's play. 4 बी रिकॉन है. बी रिकॉन आ रहे. वाइपर ही नहीं दिखा. रिकॉन तोड़ो. आने दे. टॉक्सिन खत्म हो आएंगे. अल्टी. मिड ड्रोन कर रहा हूं अभी. Enemy spotted. Blocking sight. मॉली होल्ड किया है मैंने. वापस वॉल बॉक्स के पीछे नहीं देख पाया. बॉक्स के पीछे रिकॉन कर रहा हूं अभी. एडीडी कर रहा हूं. ए पे ए पे. नाइस. ये अकेला था. स्पाइक ड्रॉप है. स्पाइक ड्रॉप. डबल डोर एक. जा रहा हूं. है नहीं. हां डबल -40. Shutting them down. विमेन कोई एक है. विमेन इधर. एक मिड. अच्छा डबल पिक करो. स्पाइक है अपने पे. स्पाइक है. तो भाई नहीं. ए भाग गया. लेफ्ट गया वो. एल्बो आ सकता है लेट. हॉल्स लगाया मैंने अभी के लिए जब तक तू पहुंच रहा है. फिर क्या कर हैकर. एक हॉल्स पे इधर फ्लैश कर रहा है. Flash. स्पाइक के पीछे गया. भाग रहे हैं. बी केयर. स्पाइक किधर है. स्पाइक वापस आ रहे थे. मिड केयर करो. ये किधर दिखा गाइस मेरे को. स्पाइक ले लिया उन लोग ने. नहीं शॉट पे स्पाइक ड्रॉप है. आ गया. यही आ सकता है बस. ए में स्पाइक का टाइम है उसके पास. प्लांट का. Follow them. That is cold, friend. लास्ट राउंड था ना आज. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? क्या करना है बोल भाविन. मैं तो बोलता थोड़ा टाइम रुकते हैं. उन लोग ही पुश करेंगे. लेट जा सकते हैं अपन. ए या तो बी. मिड लेते तब तक. हां मिड पे प्रेशर डालो. एक जन एक देख लो. हैकर घुस दे. हां ड्रोन नहीं चाहिए ना. क्या. हां मत ले चलेगा. भाई स्पाइक पहला चाकू में मिड डोर डाल रहा हूं. कब तो रिकॉन डाल दे. सेकंड वेव पे अपन ए या तो बी. उधर ही रख. इजी आके लेता हूं. Charlie Mike. चाकू डाल के ए पुश देख रहा हूं टीवी से. मैं स्पाइक देख लो. का पुश देख रहा हूं बस. Shutting them down. Scanning ahead. डोर कोई सप्रेस नहीं हुआ. Spike retrieved. ए पे खेल रहे सुआ. एल्बो लगाया मैंने. 1 HP एल्बो. जेट 1 HP. ए हिट कर सकते हैं क्या. नो वन पीकिंग. हां
ठीक आ रहा है, जेट आ रहा है। मैं वॉक इन करूँ क्या गाइस? विंडो चले जा। चला जा। चेंबर वो सुन रहा है, चेंबर लैडर सुन रहा है। वो मरा। एक ए पुश किया मैं, एक एचपी हूं और सोवा भी ए पे। फ्लैश मरा भी मरा। नहीं जा जा बीजा बीजा हैकर 2 ए पे। हां जा। दो 60 अकेला भी है। -60 है। मैं 10 एचपी हुआ। साइड गया। वाइपर को भी मत जा भी मत। वाइपर इधर है। डबल डोर है। They're suppressed. डबल डोर से टनल की तरफ आ सकता है। नहीं आया नहीं। डोर की तरफ ही है किधर। उसको मारना पड़ेगा विम तेरे को। अच्छा हम तीनों है। मैं एक एचपी हूं मैं पिक करता हूं। साथ में आओ। आजा। नहीं है मैं घुसता हूं। हैकर तू ट्रेड ले आजा। रुक जा। आ रहे हम लोग, रुक जा। क्लोज ही लग रहा है मेरे को तो वो। हां कर। रेडी? पूरा देखते हुए जा रहा। एमएन स्नेक बाइट किया। इधर का ही प्लांटिंग तो ब्रिक्स हो सकता है। ठीक है चेक करो। कितनी जा रहे हैं साइड 2 में -60 एमएन देख रहा हूं बस। पैसिव एमएन मिड केयर कर। मिड लगा डबल डोर या कॉल एमएन। मैं लो। ओह हैकर ब्रो। How did they sink this late? 44k कर दो भाई। हाँ भाई कर दो। लाइक सब्सक्राइब। Don't give them time to reposition. 2.5k लाइक्स भी कर दो। अब मैंने चेंबर को इतना अच्छा मारा और सोवा पे इतना गंदा हगा। कोई नहीं। सेम किसी ने नहीं देखा। हम सब जिंदा थे। ए जाते हैं ना सिंपल। चाकू आएगा। चाकू के बाद मार्शल आएगा। तो हॉल्स और स्प्लिट कर दो। ये जाते कब कुछ नहीं। फ्लैशेस हां जाएंगे। आराम से जाओ पर घाई मत करो। अरे एक मिड इधर Throwing charge. Flash. मेरा मॉल है ना। हां फ्लैश कर रहा हूं। Flashbang. Suppressing. बैक स्टेप बैक स्टेप है। बैक साइड टनल देख रहा हूं मैं। हां देख डबल डोर देख रहा हूं। Gun here. हाँ One bullet per enemy. That should be enough, yeah? इसको चाहिए स्पेक्टर? हाँ मेरे को चाहिए। कॉल दो। इसी तू मिड डोर भाग के जाना। ये खुद के लिए स्मोक कर। कपा इसको रिकॉन दे। मैं फ्लैश दे रहा हूँ। उसके बाद अपन बी जाते हैं ना। कांटेक्ट करते बी। भाई हैकर ए पे वाइपर वॉल डाल दे। क्या डबल डोर का रिकॉन चाहिए? हाँ वाइपर ए पे खेल रहा हूँ उनका। डबल डोर का रिकॉन डाल। मैं फ्लैश डाल रहा हूँ। बस वैंडल है। ट्राई करता हूँ नेक्स्ट में। हाँ ये वॉकिंग करना था वैसे। फ्लैश हूँ मैं। दोनों हक दे अब। हाँ रे फ्लैश। बी पुश। और एक मिड पुश। और एक डैश मारो कप्पा सामने। चल आजा बी आजा। कपा तेरा स्पाइक है। इधर चेंबर गाइस। चेंबर था। वाइपर उधर रह सकता है। वाइपर ने बॉल की वो भी लेट की नहीं होगा। मेरे को प्लांट दे। अल्टी आएगा। मैं हॉल होल्ड किया है। दे रहा हूं। Spike drop. I have the spike. केयर बैक। अल्ट है। 0 डैमेज है। 80 डैमेज। वाइपर बैक स्टेप केयर। मैं बीमेन देख रहा हूँ तेरा। दोनों मैं बॉक्स के ऊपर एम रखा है। राइट तेरा लेफ्ट देख रहा हूँ मतलब। एक पीछे से आया। बीमेन आया। हैकर बीमेन आया गांडू। कुछ डैमेज नहीं दिया उसको। हैकर साबुन स्लो है क्या? बोल रहा हूँ भेंचो बीमेन तो उधर क्यों दिख रहा है? सब छोड़ो। तू अल्टी में प्लांट करना। बुस्टडी की अपनी अल्ट तेरी तूने प्लांट की अपनी अल्ट। If you're not a good shot today, don't worry. दिया मैंने। There are other ways to be useful. हैकर भाई किसी ने नहीं अल्ट कर रहे थे। मेरा डायलॉग मेरे का ही। क्या बात है। मैं एमएन पे चाकू डाल के और ले रहा हूँ। मेरा अल्ट आ जाएगा। जा सकते हैं सिंपल। विम तेरी वैंडल देना। विम कोई तो अच्छे विम तो ऑल्ट लग कर लेना। लेट आ जा। हाँ करता हूँ। ड्रोन कर रहा हूं सीधा इधर से। रुक ना कपा मेरे को और लेने दे। तो वो तेरे करके ले रहा है। हाँ Bonne chance, mes amis. Net deployed. वो क्लोज है। ऑल अप कर।
रिकॉल कर रहा हूँ। Enemy killed. वाइपर स्कैन। फ्लैश दे रहा हूँ थ्रो। मिड बहुत सारे मिड डोर। इधर बॉक्स पे लेफ्ट पिरामिड मैं लो देख रहा हूँ एक फ्लैश करो तुम लोग के लिए बैक साइड। तीनों लास्ट का उधर ही है। 120 है। ऑफ ले लेना है इनसे। हाँ ले रहा ब्लाइंड था क्या वो? हाँ ब्लाइंड थे बट पीछे चले गए एकदम फटाक से चुप गए। नहीं लास्ट वाला बंदा ब्लाइंड था क्या? नहीं मैंने स्मोक में मारा है, नो आइडिया। हाँ ब्लाइंड था इसलिए स्मोक किया उसने। ऑल चॉकअप कर। बी पे वाइपर वॉल डाल, बी पे वाइपर वॉल डाल, जल्दी डाल दे इंस्टेंट। और ऑल वाइंडर देना तेरी। मैं एक फ्लैश पिक भी करूंगा अभी डाल दे वाइपर वॉल और तू चला जाएगा मेरे को छोड़ के इधर। मैं जब बोलूंगा तभी हॉल वॉक इन करना ना वो। You want to play? Let's play. बोला हाँ वाइपर ये चेम्बर बी पे। दो और बी केओ और चेम्बर बी। ए जाओ अभी यही टाइम है। मैं अकेला इधर से आता हूँ। कुछ किया उसने भी। आगे चल मिड डोर्स देख रहा हूँ। लास्ट एक और केओ बी पे स्पॉट था। मैं सोवा डोर जा रहा शायद। मिड है मेरे पास। केओ दिखेगा तो बोलना ना मेरे को। हाँ भी पुश करके मार सकता है मेरे को। भाविन देख किधर है। एग्जैक्ट लास्ट केओ बी था, मैं पुश कर दिया। 𝐍𝐊𝐼𝐍𝐊𝐿 क्या राइट में मेरे को A bow and arrow is old-fashioned. Sometimes all ड्रॉप मांगो ना वैसे मैक्स है मेरे पास। भाविन मांग ले। Need a drop. उन लोग का क्या अल्ट है? केओ अल्ट है, सोवा अल्ट है, वेट अल्ट है। स्टिक करके तो जा नहीं सकते। सुन ना बी पे तू वाइपर वॉल डाल और तू इधर ही बैठ पुश देख। बी पे बोल रहा हूँ ए पे कपा तू पहले ड्रोन यूज कर। अगर होता है तो उसका केओ अल्ट बेट आउट कराते हैं, अगर नहीं होता है ना तो इसका वॉल अप लेके बी पे वॉल डाल दिया है। Get out of my way. अभी बी जाते हैं और क्या ही कर सकते। बेट आउट करा वाइपर ए पे सप्रेस है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ उसके मारते हैं। टिम्बर उधर मतलब टिम्बर के बाद ऑफ हो गया। वाइपर सोवा ए और एक और कौन था तीसरा? जेट चेंबर लैडर की तरफ से। हां मिड आया। एक ही हो सकता है बी अभी। बी से मारा चेंबर ने, बी एल्बो से मतलब उधर। विंडो के नीचे। अरे एंट्री देखो। नाइस ट्राई। तेरे को पता है कि ऑल टैब हो गया था मैं। हां इसको नो स्कोप लगा। Activating kill mode. वो नाइफ मार रहा है। नाइफ का कोई नहीं दिखता तो वॉक करके आके बैठ जाता है। हाँ तो अभी चलते वापस। ये अर्ली वॉल डाली मत तू पापा। ये पे हॉल्स पे शॉक डार्ट मार के उसका ट्रैप तोड़ देना तब तक। जी भाई मिड पे चाकू डाल रहा हूँ, एक इधर स्मोक कर दो सिर्फ डोर पे और ऐसे प्रेजेंस बताओ। Who will I spot first? एल्बो चाकू डाल रहा हूँ, डोर पे स्मोक कर दो। Shutting them down. Flashbang. Nowhere to run. सर ऑल टू दिया भाई मां कितना नहीं कर लिया भाई। All set up. नाइस। बी पे साथ में चले जाओ ना अभी। होल्ड कर लो। Scanning. टाइमिंग है मास्टर शूट। अरे डैश क्या है? एक टनल प्लांट करते। नहीं मारना पड़ेगा पहले थोड़ा। कर रहा है। किया मैंने केआर भाई एक फ्लैंक। I have them.
इट इज ओवर डिफॉल्ट साइट आ गया माय बैड रे केयर भी है रे हैकर तू तो हां इन हाउस केयर भी Win. आके So we डेरेस ready करते go? आ जाओ मेरा अल्ट आ लेता जा, हूं आ जा। चाकू डाल के कब ये है? हां मेरे पास भी अल्टी है कमिट करने के लिए भाई इतना गंदा अल्ट मारा है ना गप्पा वो सोवा ने भाई वो अल्ट कर रहा था तभी Kill all your opponents. अजीब गेम है भाई कुछ तो हां ना Knife deployed. डेढ़ आया उसका नाइफ भाई गलत किया ना दूसरा वाला Walks away. चैम्बर टीपी कर दिया Right, right, गोवा साइड पे आ रुक जा इसके दोनों इधर ही आ दोनों इधर ही है टीपी मारा एक दोनों स्टेयर्स की दोनों तरफ दोनों 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 क्या गेम है भाई टीपी मारा ये अभी भी इधर है मॉली डाला है मैंने पे हां कब मैं इधर एंट्रेंस में निकलते हुए एक फ्लैश करूंगा चुटकी नेक्स्ट वाले के लिए जा रहा तू चाहिए तो इधर ही रुक कप्पा आ जा Flash. इसका डीप एंगल कितना कप्पा ये वाला अपने लिए खेल कप्पा जो ये पे बीबी Spike planted. सेफ है तू हां हां सिर्फ मेरे को फ्लैंक दिख रहा है ना तू बस हां हां ये आया टनल देख लिया चैम्बर टनल बीमेन मतलब चैम्बर बीमेन हां और एक साइड आ रहा है साइड घुसा हुआ राइट में I can do this all day. क्या बात है ग्लोबल पावर I'll survive adventure too. Can't say the same for you, fragile. मैं दे सकता हूं एक क्या है अपने पास 4 अल्ट है ये रिकॉन से टैग कैसे हो गया बे मैं कैसे वो मैं रिकॉन किधर था उसका तेरे ऊपर था There. ऊपर था पैर दिखेंगे अपने ऐसा हॉल्स क्या और कर रहे हो? स्प्लिट कर सकते हैं कप्पा अल्ट खींच सकता है जब इमेन से अकेला दो लोग हॉल्स जाओ और मैं और इजी हॉल्स जाते हैं विम तू मिड से आजा लेट मिड से लर्ट कर लेते हैं हॉल जाओ शॉट डॉट मार रहा हूं हां Welcome to my इधर world. अल्टी देखो भाई रिकॉन आया रिकॉन मैं सप्रेस्ड हूं केओ ने मिड सप्रेस किया है हां नाइस क्यों वो सामने ही है साइड ऑफर टीपी पे था वो Suppressing. मारा मिड एक बी है दो ए पे वाइपर ओनली ए वाइपर ओनली बी ऊपर है हां क्रॉस पे बैठा हुआ है मेरे को लग रहा है ये कप्पा हॉल्स पुश करने वाला मैं थोड़ा टाइम रुको मैं मर गया हूं रुकना मैं आ रहा हूं भाविन मैं बी साइड वॉक इन करने का देख रहा हूं अल्ट में नहीं Spikes down. एल्बो टाइमिंग है यार एक अल्ट में एक एल्बो है और एक ए पे ऑप है Flash. Cancel. Knife deployed. There's a grenade out. जेट एल्बो Spike retrieved. Spike planted. साथ में आएंगे एफ आया पूरा पुश कर ये एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने नाइस ट्राई अरे कमीनो रिकॉन तो तोड़ दो अबे मैं वाइपर वॉल होल्ड करके बैठा था नेक्स्ट टाइम रिकॉन पकड़ता हूं सेम कर सकते हो वापस सिर्फ रिकॉन तोड़ो ए स्प्लिट कर सकते कप्पा का अल्ट यूज करके ए साइड इजीली मिल जाएगा रे अरे वापस कॉल दो ना मैं नहीं था वापस कॉल दो इससे नहीं है लेकिन बस
भाई कर सकते हैं। विम अल्ट पे खेल ले, इजी अल्ट पे खेल ले। विम इजी 2 और मैं हॉल्ट जाएंगे, एक एक्स्ट्रा स्पेक्टर लेना। हां एक कप्पा को बुलडॉग दे सकता है इजी। हैकर इधर पहले रिकॉल तोड़ आता है तो वॉल अप करके तू पूरा टाइम पीछे रहे। केओ अगर एक खेल रहे तो स्पाइक कप्पा को दे दे। कप्पा लेट क्या है? अरे इजी तेरे पास नाइफ है। अरे हाँ केओ अल्टी है चुकी है। ये नहीं दिया उसको ना दे दे। मिड रिकॉन है। चल फास्ट करते हैं। अब ड्राफ्ट डाउन कर रहा हूं। फ्लैश कर रहा हूं एक टप्पा। साइड पे ऊपर एक हॉल्स और एक साइड एक हॉल्स। Get out of my way. जेट अल्ट मारा। केओ अल्ट होल्ड डाउन है मेरा। हो गया। नाइस रे कप्पा। एक ट्रिपल और एक डोर वॉल क्या है? Spike carrier ऑल killed. सर 10 एचपी है वो। तेरा राउंड है। Don't get in my way, Roxanne Street. I have the spike. आ सकता है ना हैकर। 24 नहीं मारा था। I will fulfill my purpose. मैं ए पे और लेता हूँ फिर बी चलते हैं मेरे अल्ट के साथ। निकल जाएगा राउंड। मैं इधर ही रुक रहा हूँ। ए पे और ले रहा हूँ। इस पे स्पॉट मत हो जाओ चाकू या नहीं कर रहा। You want to play? Let's play. मिड रिकॉन टेक फ्लाइट। नहीं डेटे पे है। इजी अंडर विंडो चेक करना। तेरा देख रहा है एल्बो। हॉल्स में नाइफ मारा। मिड पे अल्ट चेंबर। मेरे पास गन था क्या? नहीं कुछ नहीं था। विंडो क्लियर है। और केओ ने टनल से नाइफ मारा था इधर। वॉल कर जल्दी कर रहा हूं। राइट से गई तो वाला। राइट चेक मैं जा रहा हूं। स्मोक डेट में क्या? ब्रोकन बॉल रिबाउंड टप्पा फ्लैश डाला है। फ्लैश हुआ फ्लैश। Spike retreat. Flash. Enemy spotted B. एक साइड डिफॉल्ट है। दो लोग एक फ्लैंक आ गया। अरे फ्लैश कॉल करके दे रहा हूँ फिर भी पिक कर रहा है। करके लेट हो रहे भाई। लेट हो गया मेरे को। क्या उन लोग टॉक्सिक हो रहे हैं क्या? हां अपने वॉल से पॉकेट बन गया ना वाइपर को। मेरे को वो उसने वॉल पुश करके मारा है। हाँ वो पॉकेट में बैठा था राइट ये में। लोग तो ऐसे खेल रहे थे जैसे टूर्नामेंट की टीम है। चलो भाई गुड नाइट बॉयज। एक और खेलते रहे हैकर। खेलते एक और को बुला लेना। बोन्स बैठा है ना बेचारा। आ रहा है क्या? बुला ले बोन्स को। बोन्स अनरेटेड में इनवाइट किया है देखते हैं। आजा रे हैकर अब ये खेल ही लेते हैं। अरे ट्रिकी भी है रे। चल आ गया। बुला लेना एक जन। बोन्स को इधर पीएस पे ड्रैग कर दे। रुक कर रहा हूं। पीएस पे इसको बुला तो सही बोन्स को। बोन्स देख रहे हैं। टीसी आने बोलो उसको बस। मैं ट्रैक कर देता हूं। गाइस 2.5 के लाइक्स पूरे कर दो और 44 के सब्स तो आज देखना ही है गाइस। करो ना यार भाई 44 तो कर ही सकते हो। इतना सा रिक्वेस्ट नहीं मान रहे गाइस। कैसा चलेगा ऐसा? हैकर भाई द डेडली इवेंट टीएस आया था फिर उसको दिखा नहीं और वो चला गया। अजरे यही तो चाहिए। भाविन भाई आपकी स्ट्रीम अभी तक चालू है? हाँ बस लास्ट गेम स्ट्रीम कर रहा हूँ। अनलेस इसके बाद मोनोपोली खेलनी है क्या? नहीं मैं नहीं। क्यों? तो फिर मैं चुप जाऊंगा। अरे मेरे को 8 बजे जाना है मूवी देखने। फिर बाद जाना है। तो जा बिना सोए।
अरे मेरा 1-on-1 में गन आउट रहना चाहिए था रे मेरे को। मेरे को लगा तू अभी तेरे को उसने जब तू स्पाइक ले लिया नहीं मारा ना, तो मेरे को लगा तू एक्सपेक्ट करेगा उसको किधर भी हो सकता है। तो जब गन मेरे को आउट करा स्टेप्स तो पे नीचे जाते दिखा ना, तो मेरे को लगा पुसी खेलेगा। उसने बिग बॉल्स वाले प्ले कर दिए। ऑप्शन ही नहीं था ना पुसी खेलने का। अबे हेडशॉट था ना उसको, इसलिए तो मेरे को लगा कि पुसी खेलेगा। User was moved to your पुश तो channel. करना पड़ेगा ना उसको। वही तो टाइम था जब वो ये सब प्ले करे, सामने से फाइट नहीं कर सकता तो वैंडल ले लेना चाहिए था। वैंडल फैंटम का क्या है उसमें, ठीक है। अरे वो नया तो फैंटम से टेम्प्ट होता है, समझ रहा है? वैंडल रहता हेडशॉट खत्म मारने था। के बाद भी तेरे को बहुत मौका था इसे, पर फिर बाद में वो देखा ना ऐसा हाथ जो शेक हुआ, हाँ उस हिसाब वही से मैं तेरे को समझ जाना समझ चाहिए गया, था मैं ना। तभी समझ गया तो कि वैंडल इसलिए काम आता है ना। अंदर तरतर हो गया है करके। नहीं भाई, अपना एम ही वैसा है। चलो बॉयज, गुड नाइट। गुड नाइट हैकर। User disconnected from your channel. प्राइम फैंटम 2.0 जीते तो +16 मिला। और 4-0 पे ये क्या कर दिया विक्टर ने स्क्रीम के साथ? क्या कर दिया? काट वाट दिया भाई। अरे हाँ वो उसका अल्टी पे चला गया। हाँ मेरा कैम किधर गया? ओ भाई पैर लग गए मेरे को। रीस लेके 31-12 कौन मारता है कुछ? अरे भाई इतनी लाली छाई हुई है करियर, वायर किधर है? इतनी लाली छाई हुई है करियर में, एक गेम जीता हूँ अभी, उसमें भी तेरे को स्कैम वापस आया क्या? नहीं आया रे, किधर गया? OBS अभी भी नहीं, OBS में तो डला हुआ है। रुको एनवीडिया ब्रॉडकास्ट में चेक करता हूँ। अरे मृदुल भाई पैर लग गया कैमरा के वायर को, मैं पीसी पे पैर रख के बैठा था। इजी अभी आया क्या? ओ इजी अभी भी नहीं आया तो पता नहीं गाइस क्या हो गया। हो गया क्या इजी? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हुआ छोकरा चुपारे। खत्म हो गई। अरे तुम लॉजिकली सोचो, मेरे को बूट कैंप के मेरे पापा का घर है इधर, एसी रूम में बैठ के मुझे क्या, मैं तो बतख हूँ है? इसका मतलब क्या है? रात के 3:15 बजे चेस देखने का मजा ही अलग है भाई। कौन चेस? चेस चेस
कौन खेल रहा है चेस? हिकारू। अच्छा, हिकारू नाकामुरा। जापानीज है ना वो जो? हाँ मतलब एशियन अमेरिकन है। अच्छा, सुपर जीएम है बेसिकली वो। हाँ इंसेन खेलते हैं वे लोग, कुछ भी 15-15 प्री मूव करके खेलते हैं। खेल भी वो नेपो के सामने रहा है, वो रशियन इंसेन प्लेयर है नेपो करके। अच्छा, मैं कभी चेस ही नहीं देखता हूँ, पता नहीं क्यों, दिखता ही नहीं है, आती नहीं है अच्छे से। अरे वो एक बार तू हुक हो गया चेस से तो फिर बहुत मतलब हाँ, बहुत ज्यादा एडिक्टिंग है वो। समझा, जैसे हम लोग बिजनेस टूर से हो गए। भाई बिजनेस टूर तो नशा है ना, रैंडम गेम है ना वो। मजा आता है पर मैं सिर्फ पैसे भरने आता हूँ वो गेम में, तो मेरे को तो मजा नहीं आता है भाई। खेलते हैं आज इसके बाद। तू कितने बजे स्ट्रीम कर रहा है? शाम से कर रहा है ना? नहीं नहीं, रात को चालू किया, 10 साढ़े 10 11 पहले गेम के बाद किया मतलब? हाँ, सेकंड गेम से किया आज। F1 देखता है क्या कोई इधर? फॉलो करता हूँ, रेसेस नहीं देखता, मैं बीच बीच में थोड़ा देखता हूँ, हाइलाइट्स देखता हूँ, पूरा रेस देखने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है। क्या वर्स्टैपेन पर जीत गया है ना? हाँ जीत गया है, मतलब कुछ है नहीं, पर कल का रेस मस्त होने वाला है क्योंकि स्टार्टिंग ग्रिड पूरा ये हो गया है। 11 लोग को पेनल्टी मिला है तो 11 वो उसकी हाँ मतलब वो पावर यूनिट ये सब ले लेके 11 लोग का सीन हो गया टोटल। फर्स्ट कौन है? 9 या 11, हाँ लेक्लर्क फर्स्ट है, उसके बाद फिर कोई भी टॉप कंटेंडर्स में से है ही नहीं। मैक्स 7th है, सेकंड रसल है, फिर ये है आई थिंक नॉरिस, हाँ नॉरिस थर्ड। हाँ रिकार्डो कब आया, कब सेकंड रो में कितने दिनों बाद आया है, सालों बाद ऐसा लग रहा है। उसको नेक्स्ट ईयर ड्राइव नहीं है ना कोई? क्या कह रहा है? नेक्स्ट ईयर उसका कोई ड्राइव नहीं है ना? नहीं उसका टीम नहीं है नेक्स्ट ईयर, वो मोस्टली बोल रहा है ब्रेक लेगा। स्पेकुलेशन है कि वो मर्सिडीज के साथ कमबैक करेगा 2024 में जब हैमिल्टन रिटायर हो जाएगा, पर वो पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे को तो। अच्छा, मर्सिडीज ज्वाइन करेगा? नहीं होगा, पर वो मुश्किल है बहुत, मर्सिडीज नहीं लेगा उसको। हास को उसमें इंटरेस्ट है। हास को उसमें इंटरेस्ट है, हास को ज्वाइन करेगा वो। हाँ पर हास कुछ नहीं से अच्छा लोग कर लेते रहे पैसा, और कोई टीम जस्ट टू रिमेन रेलेवेंट। हाँ वही मोर और लेस। मिक शूमाकर तो किक होने के इस पे, तो फिर एक जगह बन रहा है हास में। क्यों मिक शूमाकर क्यों किक हो रहा है? अच्छा नहीं कर रहा है क्या वो? हाँ मतलब जितना उनको एक्सपेक्टेड है उतना तो नहीं कर रहा है वो शाइन, ऐसा उनका कहना है। तो हाँ उनका कार भी तो शिट है ना, क्या ही कर सकता है वो। हाँ मैंने मिनिमाइज किया गया, टाइमर अटका नहीं है। क्या हास फिर भी 7th तो है लीडर बोर्ड पे, उससे अच्छा थोड़ी उन लोग करते हैं कभी। एक बार आए थे ना 6th या 5th, वहाँ 4th आए थे भाई 2017 सीजन आई थिंक, नहीं सॉरी 18 में, इसके साथ केविन मैग्नसन और ग्रोजॉन के साथ। पता ना था वो सीजन उनके लिए। एक बार उन लोगों का कुछ तो हुआ था ना, पिट स्टॉप में नट बोल्ट भूल गए थे, चौथा वाला। हाँ अरे वो तो क्या कुछ भी भाई, कैसे कर सकते हो तुम ये सब मिस्टेक वो लेवल पे। शी तो परसों इसका वो यूकी सुनोडा का वो उसका गाड़ी वो बोलता है टायर फिटेड नहीं अच्छे से, उसको टीम बोलता है फिटेड है, फिर वो वापस आया पिट स्टॉप के लिए, उनका बंदा उसका सीट बेल्ट फिक्स कर रहा है, उसके वो हेलो के अंदर से हाथ डाल के वो सीट बेल्ट फिक्स कर रहा है। 20 सेकंड तक सीट बेल्ट फिक्स किया, फिर वापस आया रास्ते पर, वापस रुक गया वो, उससे फिर ये आया सेफ्टी कार आया और वर्स्टैपेन जीत गया। अलग ही है भाई।
यूके अच्छा है क्या ड्राइवर? नहीं मतलब डिसेंट है बट वो चैंपियनशिप मटेरियल नहीं लगता है। एस्टेबान ओकॉन कैसा है? उसका स्टोरी मेरे को पसंद आया था पर ओकॉन वही एवरेज है वैसा, मतलब शाइन होगा एक दिन ऐसा वाला ड्राइवर है। उसको एकदम अच्छा कार भी दिया ना तो भी वो ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा, लगता तो नहीं है। मतलब अभी तो फिलहाल ग्रिड पे चैंपियनशिप डिजर्विंग ड्राइवर्स में रसेल आता है एक, जिसको नहीं हुआ है अभी तक, मतलब जिसने नहीं किया है, और एक नॉरिस आता है टू एन एक्सटेंट। बस यही है, आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई है जो नहीं जीते बेसिकली इसमें से। हाँ जो नहीं जीते उनमें, बाकी तो जो जीत ये भी है एक्चुअली, लेक्लेर्क भी है पर हाँ। ये कार में अगर लेक्लेर्क नहीं जीत रहा है तो फिर थोड़ा मुश्किल है भाई। वो तो फरारी की भी गलती है उसमें, बट फिर भी बहुत गलती थी भाई। फरारी तो क्लाउन हो गया भाई टीम पूरा। कैसे भाई पिछले 10 रेस में एक पोडियम है उसका, 8 रेस में सॉरी, कैसे हो सकता है 8 रेस में एक पोडियम वो कार के साथ, कैसे? पर इसका भी नहीं आया ना, साइंस का भी तो नहीं आया ना। साइंस का एक पोडियम है, शायद 2 पोडियम है सॉरी, साइंस के 2 है और लेक्लेर्क का 1 है पिछले 8 रेस में। साइंस भी बहुत सारे मिस्टेक्स, ड्राइवर अच्छा है बट प्रेशर के अंडर क्रम्बल करता है थोड़ा। मेरे को तो देख के मतलब नहीं है रे, रेडबुल जीत गए तो क्या ही देखेंगे। हाँ। दोनों जीत गए, कंस्ट्रक्टर भी जीत गए और ड्राइवर्स भी जीत गए। आएगा कि नहीं भाई गेम? आएगा 5-10 मिनट और लगेगा। ये टाइम पे थोड़ा टाइम लग जाता है। मॉडल 3 हमारा हीलो हिडन हीलो अच्छा खासा रहेगा ना तुम तीनों का? स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं। तो स्ट्रीम कर रहा है क्या? अज्यूम कर रहा हूँ। अज्यूम कर रहा है। हाँ हिडन हीलो तो अच्छा है तुम्हारा, 13-10 पे देखो 16 मिलता है, 13-10 हारा तो तेरा 11 जाता है। हीलो तो अच्छा है तेरा। वॉइस काउंट वापस डाल दिया उन लोगों ने। यो 𝐋𝐈𝐍𝐊𝐒 मस्त ब्लेड है नहीं रे अपने ये सब नाइफ इतना है। अभी क्या बताओ तुम लोग, रिवर करम्बिट है, सेलेस्टियल फैन है, चैंपियंस करम्बिट है, चैंपियंस बटरफ्लाई है, एल्डर फ्लेम डैगर है, अभी यूज ही नहीं करता हूँ, प्राइम एक्स है, RGX प्रो ब्लेड है। इतना नाइफ यूज किधर करूँ? बस हो गया, अभी और नाइफ नहीं लेने का है। ऐसा हर बार मैं सोचता हूँ। तू क्यों लिया यार रिवर करम्बिट? तेरे पास चैंपियन है। मस्त लग रहा था, ले लिया। पैसा ऐसा होना चाहिए भाई। नहीं रूबी वाला अच्छा लग रहा था। मैं तो तरस गया था, इतना पछतावा रहा था मेरे को चैंपियंस करम्बिट नहीं लिया। रिवर आया तो अच्छा लगा जरा, एनिमेशन मस्त है वो। हाँ ये भी ले लिया तू, बाप रे। हाँ ये तो अच्छा है। देखना रूबी हो जाता है एकदम। वो बात अलग है, मारने का मौका बहुत कम बार मिलता है। और ये तो मैं चैंपियंस कलेक्शन लेता ही हूँ प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए, बाकी हाँ मोर और लेस। अरे ये जो है ना नाइफ तेरे स्टोर में है, ये भी इनसेन है बोल रहे हैं मेरे को 1-2 जन। ब्लेड ऑफ सर्किट, ये डबल। भाई नाइफ तो सारी इनसेन है, पैसा भी तो है इनसेन। तो है ना तेरे पास इनसेन पैसा, वही तो बोल रहा हूँ। नहीं है ना, वो होता तो फिर मैं सोचता भी क्यों कुछ खरीदने से पहले। बराबर। अरे
सही है भाई। एल्डर फ्लेम डैगर भी इंसेन नाइफ है भाई, एवरग्रीन नाइफ है वो भी। हाँ उसको तो बहुत टाइम से यूज नहीं किया मैंने, वो तो बहुत मस्त है। वो अभी भी मेरे हिसाब से गेम का वन ऑफ द बेस्ट नाइफ है। हाँ गार्डियन का भी स्किन चाहिए रे। अरे फ्लफी ने वो गार्डियन लिया है मेजपंक, क्या चलता है वो भाई, खतरनाक आइटम है वो। एनए सर्वर में मिलेगा मैच सुबह बरोबर। आरजेक्स गार्डियन आरजेक्स भी अच्छा है ना। आरजेक्स तो सब अच्छा है, फैंटम लोगों को पसंद नहीं आया, मेरे को तो पसंद है उसका फैंटम। बात वही है ना गाइस, सब अच्छा तो है पर पैसा भी देखो ना थोड़ा। पैसा हो तो बोन जितना, बात तो सुने एक पत्ते की है। गाइस 2500 लाइक पूरे करो जल्दी यार, मतलब इतना टाइम बोलना पड़ता है। बराबर है। बोन से ना गाइस ऐसा पैसे में नहाता है डेली। करेंसी चेंज करता हूँ हर दिन में, अलग अलग करेंसी में नहाता हूँ। आज ही वो पाउंड्स में ना क्या है। हाँ बराबर, गलत वो कल था भाई ना, आज नहीं। अच्छा ठीक है, तो कल ना क्या है पाउंड। हाँ आज तो दिरहम था भाई। देखो निक डेवरी मालूम है क्या भाविन? कौन? निक डेवरी, वो जो मर्सिडीज का ये रिजर्व ड्राइवर। नहीं, फॉर्मूला ई चैंपियन है मर्सिडीज का। वो एल्बन के लिए स्टेप इन किया है आज, और उसने भी लतीफी को आउट ये कर दिया, क्या आउट क्वालिफाई। हाँ सब हंस रहे लतीफी पे भाई, तो जाने ही वाला है वो, तो उधर एक जगह बनने वाला है। कौन सी टीम में खेलता है लतीफी? विलियम्स। अबे कैसे रे, पर रैंडमली आके कोई भी कैसे स्पॉन्सरशिप लाता रहेगा रे। पैसा तो बहुत रास है उसके पास, कनाडा का आधा पैसा उसके पास ही रहेगा मेरे हिसाब से तो। फेवरेट रंडल घूम फिर के प्राइम, उस पे ही आता हूँ मैं। विलियम्स तो पॉइंट्स ही नहीं लाए ना ये बार, लाए हैं। लाया ना, एल्बन लाया है। एक पॉइंट 3 बार लेके आया वो, 10 आके।
4 पॉइंट लाए। क्या रहेगा फिर तो एक इसका भी रहेगा लतीफी का, क्या मालूम। लतीफी 0 रहेगा नहीं। देखते ना ड्राइवर्स। हाँ लतीफी 0, एल्बॉन 4। हाँ तो 4 बार आया वो। अभी अकेला 0 पे मालूम है। हल्केनबर्ग भी है पर वो एक ही रेस किया था। वो तो उसको कोविड हो गया था ना वेटल को, हाँ। इसके लिए। सबसे कम है लतीफी 0 अकेला। सिंह एक अभी बग हो गई है क्या गाइस? सब होता तो नहीं है। ठीक हो करते? हाँ इजी के लेवल के प्लेयर नहीं मिल रहे भाई। अरे बॉस पहले इधर सब लोग मेरी मार रहे हैं। क्या बोलता है, कैसा है? क्या प्रेडिक्शन है कल के रेस के लिए? क्या वर्स्टैपन ही जीतेगा भाई, किधर से भी अरे चालू करे वही हाँ जीतता है। वही तो भाई, क्या है वो ऐसा देख 5-6 लैप के बाद 50 सेकंड आगे रहेगा वो। इतना एग्जैजरेटेड है पर क्या है भाई, वही है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अभी ये करते हैं भाई कल के ऐसा रियोस फाइट दो। ये दोनों को बुक करता भाई। नहीं खेल रहे क्या? फिर से लॉबी में खेल आना रहे फिर से। वापस लो, बग हो गया रहेगा। पांचवा कौन था अपना? विम को इनवाइटेड है। तो करो। मुझे लग रहा है कल की तरह नहीं मिलेगा भाई, हो चुका है कल मिला था ना अपने को बाद में। हाँ मिला था। नहीं ऐसे चले गए हम लोग 6 बजे तक रुक के। पर इतने ये टाइम पे तो मिल गया था 3 साढ़े 3 बजे भाई। 10 मिनट देखते हैं और नहीं मिला तो जी। तब तक साइड बाय साइड बिजनेस खेलते हैं क्या? आओ चलो खेलो मैं बहुत घटिया हूँ, खेल लो। कप्पा नहीं खेलेगा, कप्पा क्या है नहीं क्योंकि बिजनेस। आजा बोन्स गाइस, तब तक बिजनेस खेलते हैं। चैट देखोगे ना? बिजनेस इतना प्रोसेस है मेरा पीसी। 20 मिनट वाला गेम खेलते सबसे बेस्ट। हाँ विम। अरे नहीं, पूरा ही चालू करते ना। अगर वैलोरेंट नहीं मिला तो बिजनेस खेल लेंगे, अगर बिजनेस वैलोरेंट मिल गया नो वरीज, बिजनेस बंद। आपके पास ही मेरे पे तो। आ जाओ लॉबी दे रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ। मैं वैलोरेंट का स्क्रीन हाइड कर रहा हूँ गाइस, ताकि तुम लोग को बिजनेस दिखे। ये क्या है? बिजनेस से कपा क्या? बिजनेस गेम। जब तक वैलोरेंट का गेम नहीं मिल रहा है बिजनेस खेल रहे। नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ। हाँ वो पता है हम लोग को, वो पहले अज्यूम म्यूट किया हो गया, था, म्यूट हो बोला गया। भी। 4 ही लोग खेल सकते कप्पा। चला गया पहले। अच्छा मैं नहीं खेल रहा हूँ बोल के चले गए। आ जाओ, बाकी दो आ जाओ। विम्प है कि नहीं? आ रहा हूँ। आजा बोन्स। आ रहा। बोर्ड गेम में क्या मजा आता है देखो तो। इसमें भी नशा बकचोदियाँ होती है, टाइम पास होता है। हैमिल्टन कब जीतेगा? मैं एंड रोसी बोथ साइड। मैं भी हैमिल्टन फैन ही हूँ गाइस। Nothing matches Mercedes, guys. Remember that. How old are you, mate? 24. 24 साल के है रे बाबा। गाइस लाइक सब्सक्राइब ठोको रे। वैलोरेंट डन? नो वी आर सर्चिंग फॉर गेम। तब तक साइड बाय साइड ये खेल रहे हैं। आ रे विम्प। रेडी कर बोन्स।
80 रुपए देख के खरीदने का फायदेमंद है गाइस। कई लोग स्मार्ट है यार, गेम फ्री रखा है, पर तुम लोग अगर खेलने का है तो खरीदना पड़ेगा टोकन्स और जो भी है। वाह रीपरचेज ब्रो। कर लो आओ आओ, तू करना अभी तू कर ले, इजी आ जा, ले ले, बता रहा हूँ। मेरी चड्डी नहीं है। अरे हांगकांग बेस्ट है भाई। अगर बोन्स भी आता ना हांगकांग पे, मैं ट्रिप हो जाता हूँ। क्या करूँगा? विम का तो पैसा रिकवर हो गया भाई हांगकांग का ऑलमोस्ट। आवाज कैसे कम करते भाई? वो ऑप्शन है ना बॉटम में। हाँ नाइस सिटी। देखना या तो मैं वेनिस। ओहो भाई प्लीज भगवान रोम पे मत भेज, वरना रोम हो जाएगा। आओ इजी भाई 600 के भरो। कितना है? बच गया, ये हुई ना बात। ये चलेगा। बराबर। ओ नो डबल। अबे तूने बराबर बोला था रे। हाँ तो आया सीधा 650। देखना बराबर एक गिरा हुआ, देखना नसीब देख मेरा, तेरे को बोल रहा हूँ बगड है मेरा गेम। वाह भाई विक्रांत तो भाई सारी अच्छी प्रॉपर्टी ले रहा है। आई मीन का बाप इजी भाई के डैडी एक्सपीरियंस है ना। 2 बार तो मैं अब तक डोनेट कर चुका हूँ विम्स को। भाविन भाई मैं आपको श्राप देता हूँ, आप ग्रेनाडा गिरोगे सीधा। शराब क्यों दे रहे भाई? भाग रहा है भाई विम, भाग रहा है सिर्फ। तो कहीं पहला नहीं हुआ खत्म। हाँ कसम रे पहली बार हुआ रहेगा। अभी मैं वेगास जाना चाहिए। अरे सही जगह आया है, सही जगह आया है। भाई का पैसा ही रिकवर हो गया भाई। टैक्स ले लो भाई, सब ले लो भाई। भाई विम भाई ये गेम जीत रहे। हाँ विम भाई ये गेम जीत रहे भाई। वन साइड वो भी सारी अच्छी प्रॉपर्टियां ले ली है विम ने। लियोन, बर्लिन और शंघाई पे उसका मोनोपोली होगा, ले लिया तो। थैंक यू भगवान, क्या बात है। चुन के जाता हुआ तुम लोग। मैं बराबर अभी इधर मेरा नहीं है, उधर ही जाऊंगा। ठीक भाई तू कहीं भी जा, बट हैम्बर्ग और सिडनी के दर्शन करते हुए जाना। हाँ बराबर। ये परचेस करूँ कि नहीं करूँ? कर लो ऐसे ही बोला था सच में। बस मन किया तो कर लिया। होटल भी बांध देंगे अभी। अरे बाप रे। पर मेरे को नहीं जाना दर इतनी, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा नसीब ऐसा है ना, मैं टोक्यो का ओसाका पे तो लैंड ही नहीं करने वाला हूँ अभी। आजा थोड़ा तो देखे जा। You don't भाई गेम बोल रहा है लाइक ही नहीं खरीदने का। भगवान प्लीज मिलान भेज दे, मिलान। अरे यार बेचना पड़ेगा। कोई नहीं अभी बन जाएगी। हाँ अभी कैसा जरा ऋषि हो गया ना वॉच पार्टी? अभी वॉच पार्टी खत्म हो गया अभी। ये चलेगा मेरे को। ग्रिड के में इसका से होटल बनता है भाई। आए नहीं थैंक यू, कुछ तो पैसा आया।
फक मैंने हक दिया। देखो रीपरचेज करना चाहिए था, मोनोपोली होती है। हक दिया। झंडा गाड़ दिया गया है इस पेरिस पे भी। हेलो यार, सबसे महंगा प्रॉपर्टी कैश अर्थक्वेक आता रे, हार्ले को पैसा नहीं मिलता। बोल्स भाई 500 के दे दिया रे। क्या बात है बोल्स, वैसे ही बहुत पैसा तेरे पे, खरीद ले विम, बहुत पैसा। क्यों सोच रहा है इतना? ओ भाई ना लकी रे, वापस चला जाएगा न्यूयॉर्क पे, जो पैसे मिले वापस से उधर। 1 2 3 दे दे मेरे को, 1 2 3। क्या नसीब है डन डन डन। भाई आप सिंधी हो क्या? यस प्रथम। पैसे नहीं अभी लेने को, अपग्रेड करने को। उसका न्यूयॉर्क लिया, वो वापस न्यूयॉर्क लेगा, बड़ा कर बांधेगा एक बार। घर भी बड़ा कर देगा, बस पैसा है भाई। होटल क्यों नहीं बना पा रहा हो यार? एक और करना पड़ेगा। ये देखो भाई, बोन्स भाई गेटिंग रिच। अब बोन्स भाई फ्यूचर देख के बोला। अबे आगे का भरने के लिए मिल रहा है अभी मेरे को। देख 28,000 झंडे के भी पैसे देने पड़ रहे भाई। के भाई तू थोड़ा सा बाजू में आता ना, एक वापस एक जाता था, वही तो बेचना ही पड़ता था कुछ। 25,000 बराबर। ये मेकिंग द रिच रिचर। जय झूलेलाल प्रथम। अरे भाई लाइक सब्सक्राइब ठोको कहीं। टोक्यो दे देता। पर थोड़ी बढ़ता है भाई। सही प्रॉपर्टी पे मैं गिरा हूँ भाई। बच गए जी। मेरे को कहीं भी जाना चलेगा बिना बात। अरे यार साला जितना दिया नहीं उससे डबल ले लिया। क्या कर दूंगा मैं तो। तूने 550 के का लिया? हाँ है ना वो। तो अगर मुझे खरीदना तो 1 मिलियन लगेंगे। परचेस यार क्या बात है बोन भाई, पैसे ही नहीं थे और आपने दे दिए। थैंक यू भाई, यू आर अ गुड मैन। बोन जरा बर्लिन पे भी दर्शन लगाते जाओ थोड़े। हाँ सारे सबको बांटने ही खेलता हूँ मैं ये। भाई साले पे इतना वैसे ही प्रॉपर्टी है। ये देखो नसीब। क्या बात है। नसीब देखो भाई बंदे का। अभी जरा बर्लिन पे भी आजा भाई। ए भाई मोनोपोली होने वाली है भाई। नाइस से उसको ऐसे नहीं हारना है भाई। ऐसे नहीं पैसे लिए पर मेरे पास भाई भाई 1 2 3 4 5। ये देख कुछ भाई जस्ट बोन्स पहुंच जाए 9। यार पे पहुंच नहीं है भाई, लूंगा कैसे? दे दिए आ गए भाई। नहीं इतने में भी नहीं आएंगे, इतने में भी नहीं होगा। हाँ ये देखो जल्दी बेचो भाई।
वेनिस और एक बीच बेचना ही पड़ेगा। नहीं हाँ और कुछ हे भगवान, पेरिस 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 पेरिस। कचरा हो जाएगा यार तुम लोग का अगर मैं गलती से नाइस पे आ गया तो। इतना सब बांध रहे, इतना सब कर रहे। क्या बात है पे ना किधर रखेगा? हैमबर्ग मेरे क्लिक हुआ ना। हाँ हाँ कपड़े ही उतरेंगे, उधर जाएंगे। आ जाओ प्लीज आ जाओ। पैसे खरीदा नहीं? नहीं नहीं क्या करूँ लेके। कंगाली के कगार पे था अभी थोड़ा। अरे -50 क्या साले में एक तो वैसे इतना पैसा है। वाला $0.5 मिलियन आएगा अभी। चलो ठीक है, पैसे को ना नहीं बोलते कभी। आए नहीं कर गया चिट्ठी। आए बर्लिन 2 मिलियन 2.5 मिलियन 2.4। मैड्रिड आओ रे मैड्रिड। जाओ जल्दी जल्दी 2 लेके आ भाई बोल। क्या बात है भाई, चलेगा 2 से बेटर है ये। मैं तो चंदा मांग रहा था। अभी 2 लेके आ। अभी 2 लेके आ। अभी 2 लेके आ। अभी 2 लेगा तो चड्डी उतर है जाएगी। सब देके जा। ओ भाई लंदन नहीं खरीद सकता। पैसे नहीं है इधर। मैं अगर मिलान पहुंचना चाहिए तो हैम्बर्ग। नहीं जबरदस्ती का भाई, पैसे नहीं है भाई। ओ बच गए भाई कचरा भाई। आले देख रहा मैं बोल रहा हूँ ना भाई, बग्ड है मेरा गेम ही बग्ड है। ले लेना। अच्छा ले लिया ना, वो लेगा ना भाई। अच्छा मेरे को लगा कि कर भाई। मेरे को लगा कि नहीं पूरा बाय करते तब आता है ऐसा। डालते आता है नहीं पता। अबे कितना टैक्स भरूं भाई? भाई वो मेरे गेम कुछ भी नहीं। हाँ मैं खरीद लो पट। चलो बोन्स भाई आपका गेम वापस रिस्टार्ट होता है। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये सारी गरीब जगह क्यों लेके रखी है इसी ने? ऐसा पैसा छाप रहा है बैठ के। क्या करूं भाई, अच्छी प्रॉपर्टीज में मैं पहुंच ही नहीं पाता हूँ पहले कभी। टैक्स भरने को पैसा नहीं है अभी। अभी तो बेचना ही पड़ेगा। ए भाई ये क्या है? माइंड फक है। शिकागो तो मत बेच। सोच रहा हूँ क्या करूँ। बीच बेच दे कोई। बीच बेच। तो अभी क्या मोनोपोली तो वैसे नहीं होनी है। क्या सारे बीचेस तीनों क्यों बेचा? तीनों थोड़ी बेचा भाई। वैसा बग हुआ ऐसा। वो बग हुआ हमको दिखा। अरे बग नहीं हुआ, वैसे ही होता है जब अच्छा बेचते हो ना। रिसोर्ट कितना मिलता है? अच्छा हाँ अभी सो पावरफुल मैन। आई नहीं थैंक यू बेबी। अरे भाई थैंक यू। ओहो 2.4 था ना गया मैं। पैसा जल्दी खाली कर रहे जगह, खरीदनी है बहुत कुछ। हाँ वही तो। ओ नो क्या बात यार, है, क्या बात भाई है, इजी क्या का बात है। नसीब भाई, इजी क्या नसीब लेके पैदा हुआ है भाई। भाई कौन सा वहाँ पे? इजी बेच तो बेच। इजी में देखूं मेरे को क्या क्या आ रहा था। बेच आई तो गावत सब पूरा मैप खाली हो गया था। चलो कौन क्या ले रहा है? हेवन पे जेट लूं क्या? मैं ले रहा हूँ स्काई। नहीं एक्चुअली मैं ले रहा हूँ चेम्बर। बाकी लोग वापस बाली पे आ गया था मैं वापस। कुछ भी खेल रहा हूँ मैं, फिल कर लूंगा। मैं किलजॉय खेल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। मैं आया 2 मिनट। आई प्लेस काइस हुआ। फेड ले लो। ये ऊपर है। मैं किलजॉय क्या पता किलजॉय ले रहा है बोल के
पिक करना शायद भूल गया। शॉपिंग यूटिल नहीं हो लोग के पास कुछ चढ़ के मरते। Their Reina prepares on the other side. Kill her before she becomes monstrous. जल्दी 2.4 के लाइक पूरे करो, ऐसा मजा नहीं आ रहा ऑड नंबर देखने में। Gun here. आ जाना है। Reloading. Reloading. That works. मैं लॉक कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ट्राई कर ले। फिर आगे था। वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। 3 है, सी चलता है फुल स्पीड ट्रेड पे। लॉन्ग जा रहा हूँ, सी लॉन्ग जा रहा हूँ मैं। हाँ आ रहा हूँ मैं। इधर स्मोक करना, ग्रास पे ट्रैप, इधर स्मोक करना। हाँ कर रहा हूँ। और ले तो आ रहा। प्लांट दे रहा हूँ। लॉन्ग प्लांट कर। हाँ। और किधर खाया? दो भी ओमन ने टिप मारा था। पूरा रिटेक खेलना है क्या? ट्रैप तोड़ू नहीं तोड़ू? डबल शॉक से। ट्रैप तोड़ा मेरा उसने। एक विंडो है, विंडो फ्लैश कर सकता हो। कर किया 78 चेंबर। रिकॉन है ना कप्पा? रिकॉन क्या है? नहीं रिकॉन नहीं है। राइट वाला Die. Shock dart. Defeated. Nice. क्या बात है। प्लेटफॉर्म ही है। No more. नाइस राउंड। वाह भाई, नाइस राउंड। बने। We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. डैमेज कितना दिया स्मोक में? तुम लोग दिया था, बहुत कुछ डैमेज दिया था। हाफ मैंने चेंबर को 78 दिया था। हाँ ओमन और जेट हाफ एचपी थे। मैंने 75 दिया फेड को। अरे शॉट मार्शल से दिख रहा Find the हूँ। weak ड्रॉप कर point दे। and break it. लॉन्ग रिकॉन करके शॉट मार्शल से दिख रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ। Hawk out. Blocking sighted. स्मोक कर रहा है हेवन। डॉक कर रही जी। बंदा स्मोक हो सकता है। फ्लैश कर रहा हूँ, कभी फ्लैश कर सकता हूँ। शॉट पे स्मोक किया है, शॉट रहने वाला है। Enemy spotted there. Blinded. शॉट पे स्मोक में मत जाना। बैक साइड। एक शॉट। ए शॉट अभी भी जिंदा। लेफ्ट साइड 150 एचपी। I have the spike. गंदा है सिटी का। हाँ। Down. सिटी Reloading. श्योर नहीं हुआ, कुछ तो आवाज आ रहा है। Flag planted. Scanning ahead. टिकल सी शॉट पे। Stay on their trail. मेरे को एक छोड़ दो ये राउंड। तुम लोग चाहिए तो मिड करा ले लो। नहीं पे देखो स्पेक्टर दे रहा। स्पेक्टर दे रहा एक। चल टिकल ले लो। भागता हूँ। क्या करना है हम लोग को? मिड करा ले लो ना, स्पाइक ले लो। मैं बी के बाहर बी रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंट्रेंस। विंडो स्मोक देके ये फ्लैश कर सकता हूँ इजी। Ready. क्या मतलब रुक जा पहले विम को ही कर। ठीक है। एक सी पे सीलोंग फ्लैश करके आ रहा हूँ। ठीक है। Revealing area. विंडो स्मोक किया। आजा विम फ्लैश करना है। आ रहा रुक जा भी देख रहा हूँ तुम्हारा। शॉट देख रहा हूँ। भाविन मैं शॉट ड्रोन कर रहा हूँ। कर लॉन्ग राइट। Deploying drone. फ्लैश किया।
मेरे पास डॉग है शॉट क्लोज कोई नहीं है, ले ले शॉट। ले रहा हूं लौड़े लॉन्ग दिख रहा हूं मैं। विंडो एक स्मोक किया उसने। आ जाओ ना, ए आ जाओ। 14 सेकंड में रिकॉन आएगा, ए आ जाओ। पिक कर रहा है। मेरा वो स्मोक दे रहा हूं सिटी इधर गन पड़ी है, इधर गन पड़ी है। हेवन भी दिया। ले लो गन। एक सिटी स्मोक में है। Teleport's ready. फ्लैश यूज हो गया, बैक स्टेप केयर करना। देख रहा हूं, डॉग कर रहा हूं तुझे। टैप देख रहा हूं। Scout destroyed. थोड़ा उसने। Reloading. तेरे कांटेक्ट में डैश करूं। That's 3. राइट नाइस राउंड। They're supposed to be fighting back, right? मेरे भी You want to copy teammates cross? मैं ड्रॉप दे सकता हूं कप्पा। मैं नहीं खेलना, ये कोई है वो लोग। 2 सेकंड रख, एक मिड फ्लैश डाल देना। मेरे को लग रहा है मिड पुश करेगा वो और पिक करेगा। पिक कर दो फिर फ्लैश करूं ना। हां कर ना। नेरोन में ट्रैप किधर में डाल रहा हूं अर्ली। टॉप से स्मोक दे रहा हूं मैं। 2 सेकंड रुक के डालूंगा फ्लैश, रुक जा। Scanning ahead. गराज एक। लॉन्ग कोई नहीं है। Enemy spotted me. On. किया। एक लॉन्ग एक शॉट पप्पा के साथ चला। शॉट डेड। ए शॉट चलते हैं तो बोल रहा हूं डॉग कर दे। साइड क्या वो? शॉट गराज की तरफ से निकल सकते हैं क्या? हां ए आ जाओ। Blinded. अरे पिक किया उसने भी। नहीं, उसने राइट से मारा। पता था इधर ही आ रहा है। एक ए शॉट है, पीछे क्या हो क्या सकता है। Shadows. एक भी था और एक काट करके वो दोनों ओमेन ने टिपी किया था ऊपर साइड पे। Spike planted. Shadows traveling. फ्लैंक है दोनों। फ्लैंक दोनों गन लेके आ रहे दोनों। Stealing sight. नाइस ट्राई। अरे तब भी गराज पुश किया क्या? नहीं सीने से कि इसने इधर से पिक करके उसको इधर मार दिया, मैं देख भी नहीं पाया। गराज भी पुश किया उसने नंबर ने। मैं देख रहा था रे तेरा गराज, सीलों का भी सीन था और एक तरफ जा रहा था। हां आ रहा हूं। अल्ट से पिक ले रहा हूं। They are ये पे so क्रॉसिंग dead. स्मोक डालना, उनको लगने दे तू। यही जा रहा है। शॉट लॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा हूं। वेट जंप करोगे तेरे लिए? हां करना। टीपी कर तो डबल पिक कर देंगे। ठीक है 3 2 1 टीपी क्या उसने बैक साइड लगा के रखा है। हां मैं ट्राई कर रहा हूं लॉग्स मारने का। मार कोई दिख नहीं रहा है। सी आ सकते हो गाइस। लेफ्ट क्लियर। सी मेरे पे माउथ तक कंट्रोल है। टैप है उसका। बैक साइड क्लियर। एक सिटी स्पॉन। मैं सिटी स्मोक किया। I have some सिटी मारा। ये वाला मारा। सिटी ले रहा हूं मैं। फेड रहेगा तो हम लोग के सामने ही रहेगा। Cover going out. Spike planted. ठीक है दिखा मेरे को। Watch them run when lit by my soul. Need a drop. भाविन हां मांग। Thanks. स्प्लिट कर सकते हैं चाहिए तो चेंबर अपर देखते हैं, नहीं तो उसी स्प्लिट कर सकते हैं। सीधा अल्ट यूज करके अपना स्काई का जाते हैं। ए लॉन्ग पे क्रॉसिंग स्मोक डाल, ए लॉन्ग रिकॉन डाल दे कप्पा और अल्ट यूज करके ए शॉट से Time to mobilize my ठीक है मैं टीपी क्रॉस कर रहा हूं। बम रखो ना। You want to play? Let's play. पर पिक कर सकता है। देख रहा हूं। रेडी करो ब्रो। दो लोग एक राइट साइड एक राइट साइड। ऐड करो इजी। दो लोग लॉन्ग की तरफ है। एक बैक साइड है।
बैक साइड फ्लैश किया मैंने। आ गया जेट भी है। गया मेरा बैक साइड। और बैक साइड। और साइड गया। Face your fear. लेफ्ट में डिफॉल्ट। ग्राफिटी था। दूसरा नहीं है स्पॉटेड। नहीं एक्चुअली ये भी हीलिंग था। दोनों थे। हीलिंग से फ्लैश ज्यादा इसका। ये इधर का जो स्मोक था जेट का तेरा था क्या जी? नहीं उसका के सामने सेटअप ही खेलते हैं ये लोग सीधा रोटेट करके सीधा से डाल दिया। अच्छा और मेरा फेड मेरे को दिखा नहीं, वो बैक साइड तक गया फिर वहां से अल्ट किया सब राउंड को मैं उसका अल्ट है राउंड बोन्स तो हेवन अल्ट खींच देना और शॉट घुसे क्या करता हूं। हां शॉट जाते ये राउंड ठीक है। लर्क करके आ रहा हूं लेट उसका ट्रैप गैराज में था ना। पीटी स्मोक करके जा रहा हूं मैं। क्या रे शॉट नाइस वन। पीटी स्मोक क्या अल्ट कर रहा है हेवन। ये लॉन्ग मारा एक बी साइड सिटी डीप सिटी स्मोक किया है। Away with you. डैश करो इसे कर जेट सिटी लास्ट पीछे टी बेस मारो उसको मतलब फिर से जाते हैं दूसरी साइड। हां पर डॉग भी है क्या बात है। सी बॉल गया राइट। 1 HP नाइस राउंड गाइस। That's not ready. भाविन भाई सीधा राउंड कंफर्म करने पहुंच गए। मैं बोला भाई कोई दोनों Please do not mistake my smile. I take this song very seriously. Thanks. मेरे को ये पे छोड़ दो ना तुम लोग मिड गैराज को ड्रॉप दे। That works. Of the one. Thank you. तरह फ्लैश कर ऑन कर रहा हूं। क्या वन वे डाल के जा। Let's go. पे डालूंगा लेट हो जाएगा। जैसे मेरी गांड इजी दो ए लॉन्ग के लिए वन वे डालते। दो ए लॉन्ग सिटी कम जरूर है क्या You lose. दो लोग हैं ओमन भी है। एक है सिटी स्मोक में ही है वो। दोनों आ जाओ। 80 डैमेज है जेट को। जेट लो है विंडो में आया गन लेने। पीछे हो दोनों सिटी वन वे डाल के खेल सकते हैं। उसका स्मोक आएगा। मैं गैराज विंडो आ रहा हूं। दो है आराम से 4 सेकंड फ्लैश। हां उसका स्मोक आया तो क्लोज चला। हां जा रहा हूं मैं आ रहा हूं सिटी से। वो टैप पे फ्लैश करूंगा ठीक है। हां ठीक है मैं मार दूंगा। हम लोग दिखाए नहीं ना कुछ क्योंकि If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. भाई का फ्लैश हुआ है भाई कुछ तो। हाँ वो पॉप नहीं हुआ था। हाँ यप हुआ है। इवन मैं सी लर्क कर रहा हूं के लिए ए पे ट्रैप लगा रहा हूं। लॉन्ग पे रिकॉन कर रहा हूं शॉट डॉग करके जाते हैं। Eyes off me. चलेगा। ए मिड पुश आगे जा रहा हूं मैं। ये दो इधर ए आ सकते हो सी आ सकते हो। आ रहा हूं सी। बैक गया सी जाते चल। गैराज पुश मिल गया गाइस हम लोग को। सिटी स्मोक दे रहा हूं। गैराज केयर कर ला अभी। गैराज स्मोक दिया। मैं गैराज जा रहा हूं। अल्ट खींचता प्लांट पे आएगी। अच्छा प्लान They found my trap. फ्लैंक हां रेना इंस्टेंट अल्ट मरा रेना। सिलोंग आ रहा हूं मैं। ठीक नो स्मोक सिलोंग हूं। हां फोटो लगा वापस -70 है लास्ट अनलूजेबल राउंड -65 है। डॉग कर रहा हूं। हां कर ले। Scout destroyed. टैप पे स्विंग करते हैं। हां टैप पे स्विंग करूंगा। क्लोज आ सकता है। दिख नहीं रहा है वो। पीछे है साइट है।
क्या करेगा बेचारा, मैं वो सोच रहा हूँ। टाइम पास कर रहा है भाई। अभी हुआ रे बरो, तभी क्यों नहीं आया आवाज? नहीं अभी भी नहीं आया, कुछ यहाँ पर है। ऐसा 2 बार आवाज आ रहा है। हाँ वो बढ़ गया पैच का। Need a drop. भाई बहुत 9k है तुम्हारे पास। मिड स्विंग करना। फ्लैश करके क्या ऐसी? मेरे लिए क्रॉसिंग स्मोक डाल देना एक ए पे और फिर ज्वाइन कर लेना मिड। फ्लैश करके करना है, ऐसे ही करना है। भाई ये स्मोक दे सकता भाई। फ्लैश नहीं इजी। ठीक है वो स्मोक दे चलेगा बोल। हां दे रहा हूं। ट्रैप नहीं है सी पे। ही देख रहा हूं मैं, मार्क कर रहा हूं सी। गराज क्लोज नहीं है कोई। लिंक कोई स्मोक चाहिए तो मांग ले यार इजी। मैं गराज ड्रोन कर रहा हूं। करो। वो क्या अंदर बाहर कर सकता है वो। आया नहीं कोई स्मोक में। ए सिलोंग पे पुश कर रहा शायद चेंबर। इधर टीपी रहा उसका। स्मोक नहीं है मेरे पे, स्मोक नहीं है। रुक जा इजी, रुक डॉक कर रहा हूं। लेफ्ट ही देख बस, लेफ्ट ही देख। हां ओमन एक शॉट 2 ए पे। ए शॉट वाला पीछे हुआ और चेंबर ने गराज पुश मरा। क्या रहेगा? हां देख रहा हूं। सिलोंग पुश देख रहा हूं। हां सिलोंग पुश 80 हिट है गराज। गन लेगा अरे रेंज लोड। लास्ट ए साइड नाइस राउंड। I'm amped. Let's go. I got things to do. अब मेरे लिए सिलोंग ये करेगा, ड्रोन करेगा, मैं ऑप ला के रखता हूं, उसको पिक करता हूं। ऐसा है मेरे पास। Reloading. ए पे ट्रैप लगा के छोड़ रहा हूं मैं। That works. मैं अल्ट एलिमेंट नहीं कर रहा हूं, जानबूझ के ऑफ। इधर स्मोक करना बोल। एक्स्ट्रा तुम लोग ऑफ लेके लगा सकते हो, वो लोग पुश करेंगे। ए शॉट फ्लैश कर रहा है। Track them down. Shadows travel. Take flight. कोई पिक नहीं कर रहा है। प्लेटफॉर्म चेक करना है। मिड देख रहा हूं मैं तुम्हारा। मिड पुश नहीं हुआ। राइट में ट्रिप पे छोड़ दिया है। मैं भी स्मोक कर दिया इधर स्मोक कर सकता है इधर। Right here. मैं वॉक इन करने वाला हूं। कर रहा हूं। मैं कब तेरे लिए बैक साइड लगाया है। लगा कर। लेफ्ट साइड है वो स्मोक में खेल सकता है। हां बैक साइड तो साइड क्लियर है भाई। सी आ जाओ। आ रहा हूं। है उधर ही था। एक बी से आया। बी क्लियर रहेगा या फिर रोटेशन करेगा। पीटी स्मोक किया है। आउट है बैक साइड। दो बैक साइड। Buy the best guns you can. They are so dead. ए पे कुछ मत करो ना यार। सी पे चाहिए तो उसको पीछे पका ऑपर रहेगा तो अगर कपा सी ड्रोन करना आपस सी ऑपर रहेगा तो ए पे मैं ड्राई शॉट लेता हूं। इधर रिकॉन आने वाला है उसका। A gift. हां ठीक है ऑन तोड़ देना है जी। ठीक है इधर आता है ऊपर। हां पता है। Hawk out. सिलोंग पुश कर रहे थे। दो लोग सिलोंग पुश कर रहे थे। देख रहा हूं। वो ए लॉन्ग राइट में रहता है हमेशा साला। फ्लैश लॉन्ग राइट। ए राइट में अभी आ रहा। ओ बी पे ऑपर। You want to play? Let's play. डैश करके जाता है। फ्लैश कर सकते हो। No more. चेक किया था मुझे फिर भी बट डैश जाता ही था ना तेरा। तो डैश कर लेना, मैं ट्रेड कर लेता। Out of charges. एक खेल रहा हूं। Out of charges. गैराज पे ट्रैप लगा। This should do. Out of charges. That's a good spot. ओके एक ही है, बचा के रख रहा हूं। कमिट का टाइम लग जाएगा। Teleport's ready. इधर ही आजा सी खेल ले। अगर सी रश किया तो मैं ऊपर टीपी कर लूंगा। आ जाओ फाइट करने रेडी रहो तुम लोग सी पे। ठीक है पिगल कर रहा हूं मैं। रिकॉन अच्छा रिकॉन फेड है। अरे स्मोक कर। कर दिया।
भाग रहे थे पीछे भाग रहे थे पीछे। मैं हेवन जा रहा हूँ। Reloading. रिटेक करेंगे। अंडर विंडो जाके बैठ रहा हूँ मैं। टाइम कर रहा हूँ मिड पुश। एक ही तरफ ए शॉट हेवन स्मोक। ए शॉट हैवी ए शॉट। दो तो एटलीस्ट। लॉन्ग फेड। फ्लैंक कर रहा हूँ मैं। डिफॉल्ट चॉकलेट मारने वाला हूँ। ये फ्लैंक कर रहा है। ठीक है शॉट स्मोक क्या है? ये फ्लैंक कर रहा है। मैं स्मोक में आके बैठा हूँ। Reloading. एक लॉन्ग फ्लैश। हट जा। एक शॉट गया। चलो फ्लैश। एक शॉट अभी। एक लॉन्ग एक शॉट एक शॉट एक हाँ। शॉट राइट साइड उधर। मरा। लॉन्ग था। शॉट देखो एक बंदा। देख रहा हूँ शॉट। ठीक करेगा। नहीं है शॉट नहीं है। लेफ्ट क्लियर कर। लेफ्ट लॉन्ग लेफ्ट साइड। नाइस राउंड विन। ले नाइस राउंड। Nice try, mate. क्या शॉट मार रहे बोल सुने उसको। Don't even ये इसको ना टिम्बर को बोल रहा है Reloading. ना। हाँ। I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? भाई तुम में से कौन पिस्टल पे खेल रहा है? मैं खेल रहा हूँ। हाँ ये लो डीगल दो फिर। नहीं मेरे पास है घोस्ट चलेगी। मैं स्पेक्टर बाय करने वाला था क्योंकि वो बाय करेंगे ही। ए छोड़ दे मैं पे शॉट ले रहा हूँ। All set up. हाँ मिड है अलॉट। लॉन्ग दिख नहीं रहा है कोई मेरे को। छोड़ दे मेरे को। छोड़ रहा हूँ। गैराज स्मोक किया। हाँ। गैराज डोर स्मोक किया मैंने। मैं बी के बाहर ड्रोन कर रहा हूँ। Take flight. बाय गाया। बी केयर। Enemy marked. बी के बाहर स्मोक किया। चार स्मोक किया बी के बाहर। कभी फ्लैश कर सकता हूँ। क्लोज खेल रहा हूँ। केयर गैराज केयर। देख रहा हूँ गैराज। भाग रहे पीछे। गैराज देख मेरा सीलोंग देख रहा हूँ ओके। देख रहा हूँ। गैराज है। देख रहा हूँ। गेट भी था। विंडो। दो है वो। लेफ्ट साइड राइट साइड। और भाई क्या लोग हैं? डीगल पीछे ले ले। Anyone from chat wants to play? सही है। We know the drill. है क्या chat? Secure Attendance roles and we'll देखें crush it. कितने लोग हैं। मैं अकेला एक खेलता हूँ। मेरे को डीगल दे बोन्स। हाँ ले। मेरे पास तुम लोग मिड ग्रास खेलो ना मैं अकेला एक खेलता हूँ। डीगल है। रिटेक कर लेंगे आएंगे तो। अब तो बी से रिकॉन डाल देना वही। बी खेल ले। मेरे को अकेला ही छोड़। A gift. और के लिए आ रहा हूँ मैं साले। अच्छा। सुन ना इजी में फास्टी को कॉल दो ना खाली बैक साइड आके उसका रिवील तोड़ देना मैं घुमा दूंगा यहाँ से। साउंड नहीं है। ये आ रहे बाकी। अलॉट ये शॉट स्मोक कर दे। मैं जा रहा हूँ अंदर। लॉन्ग स्मोक दे रहा हूँ। शॉट देख रहा हूँ मैं। लॉन्ग स्मोक दिया। चिल कोई गुस्सा नहीं है अभी तक शॉट से। शॉट देख रहा हूँ मैं। लॉन्ग पोजी लेके बैठ रहा हूँ मैं। हेड शॉट स्टन है मारी थी। आने जाने दे कपा मेरे पास है शॉट। लॉन्ग देखो ना उसके साथ। कमिट नहीं हुआ ना? मेरा ये एंगल है। नहीं। बी वॉक इन कर रहा है हीलिंग कर। कपा हीलिंग देखना जाके। Teleport's ready. स्मोक दिख सकता। बी प्लांटिंग। Revealing area. प्लान कर रहा हूँ मैं। Found them. Reloading. फ्लैश है क्या? एक कर। लेफ्ट राइट एक। वो ऐसे आ रहे हैं। भाई वो भूल गया फ्लैश से कैसे? It seems these strangers want me dead. हाँ सी स्टैक करो चाहिए तो फेड अल्ट पे शायद सी आएंगे।
मैं ये लॉबी का ये स्मोक कर रहा हूँ प्रेजेंस दिखाने, बाकी एक स्मोक बचा रहा हूँ, मिड साइड डाल दूंगा अगर आ रहे तो। मत डालना कुछ, मतलब जब तक वो लोग पूरा घुसते नहीं है। ठीक है, मैं भी शॉट नहीं दे रहा हूँ डायरेक्ट। कुछ आवाज है? Cover going out. क्या ये? घुस गए शायद ये लोग। Face your fear. हाँ एक है। अच्छा और ले लो गप्पा। लेट हो गया है, प्लांट हो जाएगा। कर ले 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 ले। अभी हुआ प्लांट। ओ ट्रैप है इधर, मिड गियर। नहीं उधर ही डालता है वो ट्रैप। एक पोस्ट प्लांट कर रहा है, शॉट वगैरह का है। एक फ्लैश है मेरे पास। हाँ तो रिकॉर्ड रेडी है। 2 स्मोक्स है क्या तेरे पास? हाँ है, दोनों स्मोक है। रिकॉर्ड है उसका। एक शॉट हाँ कर रहा हूँ। रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लॉन्ग किया, साइड फ्लैश कर सकता होगा। कर ब्लाइंड किया। डिफॉल्ट मारा। एक शॉट एक लॉन्ग एक अंडर है। एक अंडर। They demand a fight. Who are we to disobey? जॉब कर रहा हूँ। किधर कर रहा है? ये पे। Reloading. सुना, सीलोंग इधर स्मोक कर। काउंट भी करता हूँ। मैं कभी पे ट्रैप लगाता हूँ और सी छोड़ देते हैं, अपन गराज खेल सकते हैं। ठीक है चलेगा। डॉलर से ये ले रहा शायद। Shadows traveling. आया वो। गैराज के बाहर है। निकल रहा हूँ मैं भाविन। प्रोबेबली चेंबर है। हाँ गराज के बाहर स्मोक किया। एक फेड गया शॉट। विंडो आ रहा भाविन। पता नहीं, दिखा नहीं। ये जा रहा हूँ। 3 देख रहा हूँ भाविन में। करो ढूंढ। शॉट कोई आया नहीं, मैं लॉन्ग ही जा रहा हूँ। लॉन्ग लेफ्ट साइड स्टोन पे लगा, इजी। स्टोन पे है जेट। मैं क्रॉस देख रहा हूँ। आ गया। एक सीलोंग स्मोक किया मैंने। शॉट पे स्मोक डाला क्या? तो स्मोक डाला। ओ मैंने डाला। सी से पीछे हुआ वो। ठीक है, बीन देख। ओमेन टीपी राइट में। एक मारा। इन क्या है? 2 हो सकते हैं। के बाहर तो नहीं है। गराज फ्लैंक कर भाविन, मैंने टाइमिंग किया। हाँ एक उसके बेटा रहेगा। ए पे घुस के बैठा है मोस्टली। गराज तो क्लियर है, मैं गराज देख रहा हूँ और मेरे शॉट भी देख लूंगा। हाँ मैं उधर। Teleport's ready. सिटी आ सकता है क्या वो? हाँ देख रहा है लेकिन। नहीं मैं देख रहा हूँ। ठीक है करूँगा। हाँ तू गराज देख, मैं भी हाँ देख रहा हूँ, गराज देख रहा हूँ। भी एलिंग आ सकता है वो टाइमिंग पे। हाँ एलिंग देख रहा है। हाँ चलेगा। 108 लॉन्ग। गन से मार देना साले। बेचारा। We got a pick. We move in. Got it? पर उसने मेरे को गलती से ही मार देता ना कप्पा, पैसे नहीं होते आपके लिए। ड्रॉप देता हूँ कप्पा मांगो। हाँ भी ट्रैप लगा के छोड़ रहा हूँ मैं भी ए नहीं खेल रहा हूँ ये राउंड। That works. मन के पास इतने गंदे पैसे क्यों हैं? भाग गया। मैं गराज शॉट ले रहा हूँ। गराज शॉट ले, मैं इधर से खेल रहा हूँ। सीलोंग 1 वे कर रहा हूँ मैं। कैन हो तो मैं आल्ट खींच रहा हूँ। सीलोंग एक और दोनों के बीच में Multiple enemies mid. गराज क्लोज वन मोर। टिम्बर सीलोंग था। मैं बी ड्रोन करूँगा। करो। ग्रास। अरे फेड भी ग्रास था। इधर क्लोज है। हाँ फेड तो तीनों फिर। आ गया, महमूद तक आ गया हो। वो कर रहा हूँ। घुसे क्या? हाँ घुस रहे शायद। डेड था ग्रास। घुसे। Found one. लोग एलिंग की तरफ। बैच किया मैंने। पिक किया उसने। बम। स्पाइक ड्रॉप है, ले सकता है लेकिन। एक और सीलिंग के क्लोज। देखा तेरे को। Race into the They are so dead. गराज में। अरे सब बाय करो बाय है अपने पे। बंद दे सकता है। मैं दे सकता हूँ, मांग बोल।
बी का शॉट ले रहा हूँ। अल्ट यार अल्ट का शॉट क्या बोल रहा हूँ? ऑन नहीं किया। A gift. ऑन किया ना आपा? मैं लेफ्ट जाके बैठता हूँ। अरे गांडू उनका। अच्छा Get out of my way! मैं ऊपर देख रहा हूँ। Hawk out! ये नहीं गिरा। आया वो 2 शॉट गए। ठीक है गेम लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है बार स्मोक कर रहा हूँ मैं। Time to hunt. राइट बी छोड़ साइड रहा हूँ मैं बी निकल रहा हूँ। Hawk out! दोनों को कैसे मारा? मैं लॉन्ग देख रहा हूँ लॉन्ग देख रहा हूँ। नहीं हुआ वो। Face your fear! इधर इसका ठीक है ओमन टीपी कहीं तो अंडर अंडर नाइस और एक और शॉट था। टेम्पर 80 है। शॉट स्मोक शॉट दिया देख रहा हूँ, सॉरी शॉट देख रहा हूँ। स्मोक दिया मैंने। चलेगा Teleport's ready. टेम्पर लो है। तो उसे टीपी लगाई। दोनों है क्या? कहां मार दे रहा हूं और उधर उसके ऊपर नहीं है। आई जल्दी साला भाग गया छोड़ के। Gotta play that whistle. हां भाई Help a girl out, would ya? यार तो अकेला मार देगा रे। Cheers, mate. मैं दे सकता हूं आपको। दिला दे ये आएंगे क्या अभी? मेरे को नहीं लगा। ठीक है ऊपर से लगा लो एक ऑफ नहीं तो एम कुछ एक लगा ले भाविन टीपी लगा के बैठ जा सी के ऊपर। ठीक है ऊपर हाँ मोस्टली सी आएंगे। You want to play? Let's play. गराज में निकला वो। मेरी गांड एक क्लियर है। गराज में प्रॉब्लम है तो उसका गराज आ रहे हैं। स्पाइक ड्रॉप है। बी ओमन टीपी गया है। ज्यादा चलो वापस बाहर टीपी गया, बाहर गया। बी के बाहर। हां सुना आवाज आया। Take flight. बाय साउंड दिया मैंने। क्या बात? फिर को लगा जोन किया वो फिर भी नहीं देख रहा। उसको लग रहा है इधर से ये बड़ा हुआ है। क्या बड़वा है? उसने कितना फास्ट मारा चेंबर की ओपे रे। उसके बाद नोस्कोप मार रहा है स्मोक के अंदर खड़े रह के। अरे लोग सेम लोग तो नहीं थे क्या? खेलने का एक और? नहीं मैं जा रहा हूँ 4:30 हो गया। लास्ट नहीं अरे लास्ट रे जी लास्ट चल भाई 2 घंटे। चलो भाई बेशरम की तरह वापस से खेलता हूँ। हाँ बिजनेस गो करते आ जा तब तक। 12 इलो मिला भाई। हाँ भाई बहुत कम इलो मिला है। आ जाओ भाई इसीलिए बोल रहा हूँ हेल 20 मिनट वाला खेलते हैं। ओके गाइस मैं अभी के लिए स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। थैंक यू गाइस। एक सेकंड रुको मैं Sound muted. दोस्तों होपफुली आप लोगों को मज़ा आया। अभी के लिए मैं थक चुका हूँ, थोड़ा स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ, थोड़ा चिल करूँगा। जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू गाइस।